In the heart of thought, where questions rise, where dreams take shape and ideas fly, we gather today with minds so bright to chase the truth, to seek the light. Science our guide and tech our tool. Together, we learn, discover, and rule. The future is not something we enter, the future is something we create, and science and technology are the tools with which we build it. Jai Hind to all, a very good morning to one and all present here. We begin this beautiful day by extending our warmest welcome to the torch bearers of this great institution, Honorable Vice Chancellor, Major General Dr. G.K. Thapliyal sir, Honorable CEO, Professor Dr. Shala Raj ma'am, our respected Dean, Professor Dr. Ravindra Kumar Jain sir, our distinguished guest speakers, our Vice Principal, all the respected HODs, respected faculty members, and our ever enthusiastic students. I am Gauri Tyagi from Keral Verma Subharti College of Science, and I am more than intrigued to welcome you all to this academic gathering of our one day national conference on recent advancements in the field of science and technology, organized by the Department of Chemistry, Keral Verma Subharti College of Sciences, Swami Vivekanand Subharti University. We are privileged to have among us esteemed dignitaries, renowned researchers, respected faculty members, and enthusiastic students, all united together by a shared passion for discovery and progress. Your presence here adds immense value to this event and strengthens our commitment to fostering meaningful dialogue and collaboration. As we embark on a day filled with insightful discussions, thought provoking presentations, and exchange of knowledge, let us remind ourselves that every advancement we make today becomes the foundation of the world we build for tomorrow. Let us start with our first session of our national conference. Now, as we all have come together to explore the ever evolving frontiers of science and technology, let us first seek the divine grace of Goddess Saraswati, the embodiment of knowledge and enlightenment. I request all the dignitaries, Dean Sir, Vice Principal, esteemed resource person, Dr. Renu Mavi ma'am, to please come forward for the lamp lighting ceremony. Kindly rise as we begin with the Saraswati Vandana. या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डवन्दितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदाम्
जाड्यान्धकारापहा Now we come to one of the most awaited moments of this event, the felicitation ceremony. It is both an honor and a privilege to recognize the distinguished individuals whose contributions have enriched this feat and inspired many. Their dedication, innovation, and relentless pursuit of excellence truly deserve our heartfelt appreciation. Now, I would like to call Dr. Shashira Tevatia sir to felicitate our respected Dean, Professor Dr. Ravindra Kumar Jain sir. A warm round of applause, everyone. Thank you so much, sir and ma'am. Now, I would like to call Professor Dr. Renu Mavi ma'am to felicitate our keynote speaker, Dr. Rashmi ma'am, on stage. A warm round of applause, everyone. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to call Miss Esther Lalvinzo, ma'am, to felicitate Dr. Vinnie Sharma, ma'am, upon stage. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to call Ankita Agarwal, ma'am, and Dr. Ankit Goyal, sir, to felicitate Dr. Vishnu Chaudhary, sir, on stage.
Thank you so much, sir and ma'am. Now, I would like to call Sangeeta ma'am to felicitate Dr. Upasana Devi ma'am on stage. Dr. Sangeeta Dayal ma'am. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to call Dr. Abida ma'am and Mr. Lalit Pawar sir to felicitate Rohit Kanodia sir. With that, we conclude the felicitation ceremony. We once again extend our heartfelt appreciation and sincere thanks to our esteemed resource persons. Now, let us move ahead with the next segment of our program. The conference is more than just an academic gathering. It is a celebration of curiosity and relentless human spirit that drives innovation. Today, we stand at the crossroads of disciplines where new ideas take shape, where technology pushes boundaries, and where science paves the way for a better tomorrow. The objectives for organizing this conference is to provide a platform for researchers, academicians, and industry professionals to share their latest findings and technological innovations across various scientific disciplines to foster interdisciplinary collaboration and knowledge exchange among participants, to encourage innovative approaches to scientific and technological challenges, to highlight the role of emerging technologies in addressing current global issues related to sustainability, healthcare, environment, and digital transformation. Also, to inspire young scientists and students by exposing them to cutting edge research and career opportunities in science and technology. Now, we are privileged to hear from the esteemed dignitaries whose vision and leadership have been instrumental in the success of this conference. Their words will not only reflect the spirit of today's gathering, but will also inspire us as we continue our journey in the world of science and innovation. To begin with, I would like to invite our dynamic organizing secretary, Professor Dr. Renumavi ma'am, whose tireless efforts and dedication have laid the foundation of this event. May I request Dr. Renumavi ma'am to kindly address the gathering. A warm round of applause, everyone, for her. Jai Hind to all. As an organizing secretary, it's my honor to welcome you all to this national conference on recent advancements in science and technology. Our world is being reshaped by incredible breakthroughs, and your presence here reflects our shared commitment to progress. This conference serves as a vital platform for sharing cutting edge research, fostering collaboration, and inspiring bold new ideas. It aims to be a point of perspectives and a catalyst for future partnerships. I encourage each of you to actively participate, connect, and contribute to the meaningful discussions that will unfold today. Let us embrace this opportunity to learn from one another, to explore new avenues of inquiry, and to shape a future where science and technology uplift humanity and solve its most pressing challenges. Once again, a heartfelt welcome to all. Let's learn, network, and shape a better future together. I now declare this national conference officially open. Thank you all. Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for your words. Next, we are honored to have with us our respected Dean, Professor Dr. Ravindra Kumar Jain, sir,
whose guidance and academic vision continue to shape the path for excellence in our institution. Sir, we warmly invite you to share a few words. A huge round of applause for him, please. Thank you, Gauri, and जय हिंद टू ऑल। सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस मैं बाहर से आए हुए सभी श्रोताओं का और जो हमारे साथ प्रोफेसर्स आए हैं उनका स्वागत करता हूं, और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में जिस लगन और मेहनत से इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया वो एक हम सब के लिए एक उदाहरण है। मैं ये टॉपिक भी अप्रिशिएट करता हूँ, रिसेंट एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और सभी विद्यार्थियों से ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से जब से एआई हम लोगों की लाइफ में आया है तब से जो एडवांसमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी में आए हैं वो बहुत तेज़ी से आगे ग्रो कर रहे हैं। एआई ने हमारी लाइफ को बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से चेंज किया है। एआई को आए हुए कुछ महीने हुए हैं, लेकिन हमारे पास एआई कंट्रोल्ड रोबोट्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है। हमारे पास ऐसे रोबोट्स साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं या कर रहे हैं या अभी लैब में हैं, विच कैन कंट्रोल द ब्रेन सर्जरी ऑल्सो। ब्रेन सर्जरी करना जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं वो जानते होंगे कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन एंड दे कंट्रोल द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ। सो टू मेक द सर्जरी ऑफ द ब्रेन इज नॉट ए वेरी इजी टास्क, और यदि एआई कंट्रोल रोबोट ऐसा कर सकते हैं तो निश्चय ही एक एडवांसमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विद्यार्थी जो नए एडवांसमेंट हैं, जो चर्चाएं यहाँ पे होंगी, उनसे अपने आप को लाभान्वित करेंगे और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई कीर्तिमान स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, for your insightful words. It is our immense privilege that our Vice Chancellor, Sir General Major Dr. G.K. Thapliyal, serves as a torch of beacon for us. Since he cannot join us now, I would like you all to introduce to him. Major General Dr. G.K. Thapliyal, sir, has over 40 years of experience in the armed force and experience in the higher education. He has been conferred with various prestigious awards such as the Sena Medal by the President of India, Commendation Award by GUCIN in Southern and Western Command, and Lifetime Achievement Award by the Association of Oral and Maxillofacial Surgeons of India. Sir has been the head of maxillofacial team at UN Peacekeeping Mission Hospital in Cambodia, head of biomedical research DRDO Delhi, professor and head maxillofacial wing at Armed Forces Medical College, Pune, Army Dental Center, Research and Referral, Delhi Cant, and many private institutions. And I finally take the pleasure to introduce you all to our CEO, Professor Dr. Shala Raj ma'am. Ma'am did her graduation from SDM College of Dental Sciences, Dharwad, and completed her master's in conservative dentistry and endodontics from Subharti Dental College. Ma'am's keen interest in academics was reflected in the fact that she has published numerous research papers, articles, and books early in her career. Ma'am is a popular teacher, academician, a good clinician, and above all, a dedicated human being. Ma'am is a trained Kathak dancer and a Hindi classical singer, and her efforts have won her various accolades in the field of painting, craft, and drama. Ma'am has received over 27 awards for her work in the social academic field, the Empower Women Prosperous India Award by the Globe Media under her guidance. The Trust received the award Global Peace Ambassador conferred by IBID, and the Trust also received appreciation for donations to the Army Welfare Fund and the CM Relief Fund Uttarakhand. We are immensely pleasured to have us with them.
Now, I finally take the pleasure of inviting our respected Vice Principal, Professor Dr. Shashirat Vidya sir, whose support and involvement have been a constant source of strength. Sir, we request you to please address the audience. A huge round of applause for him. Jai Hind everyone, respected Dean Sir, Head of Department, faculty members and the students. आज इस ऑडिटोरियम में आप सभी का हार्दिक स्वागत इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में। देखिए अभी हमारे डीन सर ने बात बताई थी एआई का एक बहुत बड़ा रोल है। आज कहीं पे भी आप चले जाएं, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, और बेसिकली आई एम एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो मैं एआई को बहुत डिटेल में पढ़ता हूँ, बहुत डिटेल में समझता हूँ, और उसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिस पे हम लोग काम भी करते हैं। शायद आप लोग भी काम करते होंगे, आप चैट जीपीटी, गामा, इन सब का यूज़ भी करते होंगे, नहीं करते हैं तो करिए। एआई का कुछ लोग कहते हैं कि आपने डेटा चैट जीपीटी से उठा लिया तो ये चोरी है ना। इट इज़ नॉट द चोरी, कोई चोरी नहीं है। अगर कोई सर्विस आप लोगों को मिली हुई है तो आप उसको यूज़ करें, हाँ उसे अपने लेवल से उसके अंदर कुछ चेंजेस कर लें। फिर ऐसा नहीं है बिल्कुल प्योर आपने चैट जीपीटी से उठाया उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। इट इज़ योर सपोर्टिंग हैंड, बट आप इसे यूज़ करें, सपोर्टिंग हैंड को आपको यूज़ करते रहना चाहिए। और दूसरा, कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आए और अटेंडेंस की और आप बैठे रहें। यहाँ जितने भी हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनके पॉइंट्स को समझें, लिखें, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और फिर ये देखें कि आपके अंदर जो कल चीज़ें आपको पता थी और आज आपने जो सीखा और कल आने वाले दिन में आपने क्या चेंजेस हुए, तो एक कंपैरिजन चार्ट जरूर बनाइएगा यहाँ से जाने के बाद कि आपने आज इस कॉन्फ्रेंस में एक दिन बिजी रहे, एक दिन व्यतीत किया, तो आपके अंदर क्या बदलाव आया। सिर्फ इसी सजेशन के साथ मैं फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you so much, sir, for your words. Thank you to all our esteemed dignitaries for your inspiring and thoughtful words. Your presence and insights have truly enriched this conference and reminded us of the purpose behind our pursuit of knowledge. With your blessings and encouragement, now we move forward with the renewed energy and enthusiasm as we continue with the next segment of our event. With the inspiring addresses from our dignitaries setting the tone for the day, we now move on to one of the most awaited segments of this conference, the lecture sessions by our esteemed resource persons. These sessions promise to offer deep insights, current research, and practical perspectives in the field of science and technology. Let us now welcome our first speaker, who will now enlighten us with their expertise and knowledge. Now, I would like you all to be introduced to our keynote speaker of the day, Dr. Rashmi Ma'am. We are honored to introduce Dr. Rashmi Ma'am as Professor of Chemistry in the Department of Basic Sciences at Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Meerut. Before this, Ma'am served as a senior scientist in the Chemistry and Bioprospecting Division at the Forest Research Institute, Dehradun, India. Ma'am also earned her doctorate in chemistry from the Forest Research Institute, Dehradun, and completed her postdoctoral fellowship from Nagoya, Japan. Dr. Rashmi Ma'am brings herself 25 years of impressive research experience in the field of chemistry. Her research interests primarily focus on the value addition of aromatic biomass and wood for forest products. Ma'am has published over 65 research papers in national and international journals, reflecting her expertise across diverse areas in chemistry. Dr. Rashmi Ma'am has received numerous honors and awards, including Young Scientist Award, Young Woman Scientist Award, Innovator of the Year Award, and Scientist Assistant Program SAP Award, awarded 3 times in 2016, 2017 by the International Union of Forestry Research Organizations, Vienna, Austria. Ma'am also got awarded by the fellowship in 2023 by the Philippines government.
Now, I would like to call ma'am for an insightful session on the topic aromatic chemicals from plants and their health benefits. Ma'am, we will be honored to listen from you. Thank you very much, Gauri, for giving introduction. Such a beautiful introduction you gave today. Thank you so much. And respected Dean of College, Organizing Secretary, and the whole team. Thank you very much for inviting me to deliver a lecture in this one-day national conference. And today, I am here just to motivate the students because as Government of India is running the program on Skill India. So my presentation will focus on that only because we can talk about the research the whole day. That is not an issue at all because I have already carried out 13 research products that was funded by international organizations as well as national organizations. So on if I will talk on research part and the basic research or applied research, I can talk the whole day. But today's presentation will focus on the students for the purpose of students so that they can learn ki after doing MSc chemistry what they can do and why they are studying MSc chemistry. What is the purpose? When I did my MSc chemistry, truly speaking, I was not knowing this, that the research career will be like this. So this is for them only. And बच्चों, I would like to say कि कुछ भी कहीं पूछना है तो please feel free because आज की talk आपके लिए है, ठीक है? So basically, aromatic chemicals, my talk will be on aromatic chemical from plants. As we all know, plants हमारी आज भी अगर आपने देखा है तो as a token of respect, the plants has been given to all the experts. So it means plants has immense importance in our life, daily to daily life. If you will sit under any tree, you can feel the importance. If someone has those senses, what I can say. In the surrounding areas, we have a program that is World Environment Day. That will come on 5th June. Means we have to plant the more trees because development is going on everywhere and lots of trees are being cutting down. So for replacement of those, we have to plant more trees. But what is the purpose? Why the government is focusing on these kinds of schemes? Why this has been made a campaign कि एक पेड़ माँ के नाम. What is the purpose? Being chemistry student, what is the purpose of this? I just want to focus on that because plants gives us what we don't know. That it is not only oxygen, it is something else. खाली ऑक्सीजन तो हम इनहेल करके काम खत्म हो गया बट जो कुछ भी कर रहे हैं फ्रॉम द मॉर्निंग सिंस इवनिंग दैट इज बेस्ड ऑन प्लांट द क्लोथ्स वी आर वियरिंग इट इज मेड अप ऑफ एनीवन स्टूडेंट कैन टेल it is made up of cellulose and cellulose is 99% cotton is pure cellulose. Okay, it is 99% cellulose. जो कॉटन किसी ने अगर वो ट्री देखा है सॉरी प्लांट देखा है जो एमपी में होता है जिसमें से कॉटन निकलती है नेचुरली ग्रोइंग है दैट इज 99.98% प्योर सेलुलोज 0.02% इज impurities are what dust and many microbes as well. So that is the purity which we are getting from our natural resources. And that cellulose, when it will come to the factories, then that will be reed. उसके बाद आपके कपड़े बनते हैं और इसमें इतना एडवांसमेंट है कि आज की डेट में पहले अगर आप देखें एंशिएंट टाइम में खाली कॉटन होता था खादी कॉटन क्यों बढ़ावा दे रहे हैं खादी कॉटन को व्हाट इज द रीजन अगर हम खादी कॉटन पहनेंगे तो वो हमारी स्किन को हार्म नहीं करता है बिकॉज दैट इज द प्योर सेलुलोज एंड द सेकेंडरी थिंग it will
motivate us to grow that cotton crop. आज की डेट में हमारे पास सब सिंथेटिक है, whatever we are wearing, सिंथेटिक पहन रहे हैं, इसीलिए लोगों को स्किन एलर्जी बहुत है. तो प्लांट्स खाली ऑक्सीजन नहीं देते. नाउ आई विल टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड दैट इज एरोमेटिक प्लांट्स, जिनसे हमें खुशबू आए. और वो खुशबू क्या क्या कर सकती है, क्या क्या होता है उस खुशबू से, वो हम आपको बताएंगे. सो आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, प्लीज गो बैक, आई विल ओपन इट माई सेल्फ. थैंक यू. पिक्चर में देख रहे हैं, ये कौन सा फूल है, कोई बता पाएगा? किसी ने देखा है ये फूल मार्केट में? एनीवन? है मार्केट में अवेलेबल? किसी ने नहीं देखा? खूब बुके मिलते हैं, खूब फ्लावर्स की शॉप पे भी हम जाते हैं. देखा है? हाँ देखा है. क्या नाम है बताएं बेटा? नो, इट इज नॉट रजनीगंधा. एनीवन एल्स? दिस इज ट्यूबरोसा. आप लोग गूगल कर सकते हैं. दिस इज ट्यूबरोसा एंड इट इज अ प्लांट ऑफ जैस्मिन फैमिली. जैस्मिन में 7 आते हैं, 7 प्लांट्स आते हैं. चंपा, चमेली, मोगरा, रजनीगंधा, ट्यूबरोसा, ये सब जैस्मिन के स्पीशीज हैं, जिनको हम कॉमनली जैस्मिन कहते हैं, बट ये डिफरेंट हैं. सबकी खुशबू अलग है, सबके केमिकल्स अलग हैं. तो दिस इज ट्यूबरोसा, और ये ट्यूबरोसा हमने अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ग्रो किया हुआ है. इस पर अभी हम काम भी कर रहे हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी इसमें. सो बेसिकली ट्यूबरोसा से ऑयल एक्सट्रैक्शन है, एंड ऑयल इज वॉलेटाइल ऑयल, नॉट फैटी ऑयल. जो मस्टर्ड ऑयल है, व्हाट इज दैट? दैट इज अ फैटी ऑयल. सोयाबीन ऑयल इज फैटी ऑयल. बट जो प्लांट से, एरोमेटिक प्लांट से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वॉलेटाइल ऑयल और एसेंशियल ऑयल. सो बेसिकली it is a phytochemical intervention. Means phyto means plants, chemical means chemically intervene. So we intervene chemically into the plants and we take most of the advantage from the plants. So basically plants produce many things and it has its own synthetic pathway as well. Primary and secondary metabolism, as we all know. For primary metabolism, plants take, it is a very simple process, very basic process. We used to study it in class 3rd, 2nd or 3rd, like how we are getting, how the plants are getting the energy, how the plants are getting their food. It is very basic concept. But when you start doing research, then actually this basic concepts understands you. It tells you what is going on in the plant and what you can do with this plant. So basically, plants has 2 metabolism, primary and secondary. Primary metabolism is just for making the growth of plant only. It does for itself only. Okay, but secondary metabolism. In secondary metabolism, it creates or it accumulates or it synthesizes those chemicals which are there for protection of the plant. That is called self defense. आप लोगों ने देखा होगा गुलाब में कांटे क्यों हैं? What is the reason? This is a nature rule. आज कोई हमें हिट करे, we will reply. How plants can reply? They can reply only by developing something into them so that they can be protected by the human activities, by the insect, pest and the grazing animals as well. So just look or just thought of it कि plants अपने self defense mechanism में क्या क्या कर सकते हैं. जब sunflower sun की direction में move कर सकता है, तो वो अपने लिए क्या नहीं कर सकता. तो नेचर हमें जो मिला है गॉड की तरफ से, ये अपने आप सेंसेस डिसेमिनेट करता है. We have to understand that only. कि what senses the plants are giving to us. और chemistry
अगर हम ये मान के चलें कि नहीं भाई बॉटनी वाले पढ़ेंगे प्लांट्स, हम नहीं पढ़ेंगे प्लांट्स, तो दैट इज आवर बिगेस्ट मिस्टेक। अगर केमिस्ट्री वाले प्लांट्स की केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा? और सब कुछ प्लांट की केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। बॉटनी वालों ने प्लांट पढ़ा और बस बता दिया कि ये प्लांट ये है, उसकी टेक्सोनॉमी दे कैन टेल, बट दे कैन नॉट टेल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल ऑफ अस life. So it is very important. So secondary metabolism is only for the defense mechanism, where it accumulates the secondary metabolites, because it never participates in the biosynthesis of plants, never ever. It only gives the defense mechanism, and the human activities are exploring, researchers are exploring those secondary metabolites. In secondary metabolites, we have phenolic compounds. जो हम पढ़ते हैं ना, उसका यूज कहाँ है वो अभी आपको समझ में आ रहा है। Phenolic compounds we have, then phenolic compounds are generally water soluble. Ischemic acid pathway में important precursor होते हैं। Then examples are हमारे पास phenols, phenolic acids, phenylpropanoids, flavonoids, terpenoids and quinones. फ्लेवोनॉइड्स का कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि क्या हम डेली यूज में फ्लेवोनॉइड यूज करते हैं स्टूडेंट्स में से? डेली मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टी, इवनिंग टी, एनीबडी कैन टेल? ग्रीन टी, फ्लेवोनॉइड्स, कौन सा फ्लेवोनॉइड? चलिए अभी आगे बताते हैं जब टी की बारी आएगी। So these are the some compounds. ये इसीलिए है स्लाइड कि आप लोगों ने अपने कोर्स क्यूरिकुलम में पढ़ते हैं तो यू कैन कोरिलेट, क्योंकि वहां पर आपको फिनॉल्स पढ़ा दिया बट ये नहीं पता कि फिनॉल्स कहाँ पर हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कर सकते हैं फिनॉल से। देन सेकेंडरी टर्पिनॉइड्स, दे आर लिपिड सॉल्युबल. लिपिड सॉल्युबल मीन्स दे आर फैट सॉल्युबल and isopentyl pyrophosphate pathway. They work in that, they contribute into this pathway. So these are the some examples of the terpenoids. Then organic acids and lipids. Acetate pathway, they work in acetate pathway, and the examples are where we found these organic acids. That is citrus fruits, we got citric acid. Then ascorbic acid, it is universally present, and then cunic acid, it is present in woody plants. Then acetic acid, it is present in volatile oils. Then oxalic acid, we have it in spinach. Some people have acidity after eating the spinach. The reason behind this, the level of oxalic acid is very high. That is the reason. That's why the people feel acidity. Then tartaric acid, it is in grapes. Then fatty acids and lipids, you will find it in all the mustard oil, soybean oil, tilka tel, moongfali, all. It is in fatty acids. And then alkanes and related hydrocarbons, you will find it in cuticle waxes. Then polyacetylines, it is hydrocarbons and their oxygenated derivatives. Then stearoic acid, it is in santalum. Then sulfur compounds, we all found these in mustard oil, glycosides, glucosinolates, disulfides, and allium and garlic. So sometimes even where they used to tell you should take the garlic, one leaf of garlic daily for the pain, arthritis pain and muscular pain. The reason behind this, because it has sulfur compounds. So that cures that pain. That will definitely reduce down that inflammation in your body. Then nitrogen compounds, all these are secondary metabolites. Glutamine synthetase, it works in glutamine synthetase, and examples are amino acids, amines, then alkaloids. They are physiologically active substance. अभी last
5 to 6 years back, everybody used to talk about Taxol. I don't know, have you heard about this or not? But Taxol is an alkaloid and it has been isolated from Taxus baccata. And from that Taxol, because it was naturally isolated and then further it was synthesized on a large level and then cancer medicines was developed from that Taxol. So this is the beauty of plants. Then cyanogenic glycosides, indoles, purines, pyrimidines, cytokinins, and then chlorophylls. All these comes under nitrogen compounds. Then cinchona alkaloid, we got it from poppy. Everybody has seen this plant. Poppy is a white growing plant and you can find it on the roadside as well. When you will going start to the villages, you can find out this poppy. So it has an important alkaloid that is cinchona alkaloid. And the another one is opium alkaloid. So these are considered as very important alkaloid in the formation of drugs. Drugs means medicines, not that kind of drugs. So it is medicine. Then we have macromolecules with us. Lot of things are present in the plants. We have macromolecules like carbohydrates, proteins, lipids, fats, and then further polysaccharides, lignin, and condensed tannins, then melanins. Condensed tannins, they are derived from the flavonoid units. Means when two or more flavonoids units combine together, then they form the tannins. And tannins are important antioxidants. They work as important antioxidants. And in tannins, we have catechins and epicatechins. Catechins and epicatechins, both are comes under categories of tannins. And recently, during last 3-4 years, corona was here in the world itself, I can say. So people used to say that you should take the food or the citrus fruits and food that contains the tannins. And the morning tea we used to take, generally what process we used to opt, that we will boil the tea granules and then we will add the milk into that and then sugar. And that is a very wrong process. Because what we are doing, as a chemist I can tell, what we are doing, we are making the complex. We are making the chelated complex. And that will create a problem. Sometimes people used to say after taking tea, we are feeling acidity. The reason behind this, only that we are taking the chelated mixture, chelated compound. Because when we boil the tea, we will get the tannins. Because tea granules or tea has tannins, or we can say catechins. And when milk will be added and it will be boiled, then milk has a protein. Then that protein will combine with that tannin, with catechin, and then it will make a complex compound. And it is very tough to digest. So that's why people used to complain about acidity after taking that milk tea. This was not the concept of taking the tea, of making the tea, in fact, I can tell. The concept of tea came from Japan, and they never take this milk tea. They used to take the green tea, or if will they take the black tea, they will not add any milk. So the exact process, what is the exact process of making the tea? The exact process is this. First you boil the tea granules or tea leaves, whatever you are having with you. Then separately boil the milk and then add together, then don't boil it. This is the best practice of making the tea. Then surely you will not be having the acidity, because now you didn't allow to make it a complex. So that is the basic thing. And even of making the coffee also, the same thing applies. Because coffee has highest level of antioxidants, highest level, I can say. So better always take the black coffee, not the milk coffee. It is always avoidable. So these are the macromolecules. Then we have gums. We have mucilaces also. And gums, what gums have? Gond, local language or layman language, I can say. कभी भी
गम्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली जितनी आज की डेट में है। गम्स के होलसेलर होते हैं। सबसे ज़्यादा जो गम रिलीज फ्री है, कोई बता पाएगा? कीकर एंड बबूल। वाई दिस इज सो? कीकर एंड बबूल को कोई भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दे कैन ग्रो ऑन द बैरन लैंड. इफ यू विल मूव टू द राजस्थान, यू विल फाइंड कीकर एंड बबूल बिकॉज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. दे कैन ग्रो देमसेल्व्स एंड दे कैन सर्वाइव. बट what they used to do, they ooze out that sap, and that is sticky sap. Some pine trees also do that. So that sticky sap is called as gum. So gum collector used to do this. उसको collection करते रहते हैं, free of cost है. Forest से जाके collection करते रहते हैं, and then they will come to the industry. After that, they will process it. First, they will purify it because it will be having many impurities after collection of plant material, after collection of that gum. And it is usually called as exudate gums. Exudate gums means it is coming out naturally. And that gum used to purify into at the industry level or the laboratory level, and then you will see a wide application. A number of applications are being performed at the industrial level from that gum. And that gum is like no cost, I can say. But people are making cost of it. So plants are giving lot of things to us. So basically, how many types of gums we are having? Gum karaya, gum ghati, gum arabic, and these are the species from which we can get. Then gum jingan, gum sabul, gum tragon, and then TKP is Tamarindus indica. TKP is tamarind kernel powder. जो हमने इमली खा ली, जो उसका सीड बचा, what about that? उसका क्या करना है? फेंकना थोड़ी है. That must be utilized. So we called it in terms of scientific language TKP, that is tamarind kernel powder, and that is has importance of industry. I'll tell what it can do, TKP. Cassia, Crotalaria, and Indoviferous species, all these are having the gums. Then we have developed at FRI a very simple cost-effective technology, that is the dry milling to isolate the gum. It is used as wet and additive in the paper making to increase the paper strength. हम समझते हैं कि पेपर ऐसे ही बन जाता है. पेपर में स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? भाई बहन की लड़ाई हुई, पेपर खींचा फट गया. क्यों? अखबार खींचा फट गया, उसमें स्ट्रेंथ चाहिए. तो पेपर में स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? पेपर में स्ट्रेंथ भी प्लांट मटेरियल से ही आएगी. पेपर भी प्लांट मटेरियल से बनेगा और उसकी स्ट्रेंथ भी वहीं से ही आएगी. तो इट इज बीइंग यूज्ड as at wet and additives and used as a thickener in the textile printing. जो प्रिंटिंग होती है, जो हम लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े पहनते हैं, कहाँ से क्या यूज होता है? This is being used in that. Used as flocculant in the paper industry and mud settling aid in sugar industry. You name the industry, you name the area, everywhere plants are being used in one or another form. Gum ghati. I talked about this gum ghati. What is this gum ghati? If you will see, we will get the gum ghati in this form at the right hand. And at FRI, we change it into this form. So develop the simple process for the purification of the gum. अगर आप costly process देंगे तो कोई भी इंडस्ट्री वाला नहीं लेगा, क्योंकि इंडस्ट्री को अपनी इकोनॉमिक्स भी देखनी है. कुछ भी कॉस्टली इंडस्ट्री में नहीं जाता है. इंडस्ट्री में वो चीज़ जाती है, आई कैन से, जो कोडियों के भाव मिलती है. इंडस्ट्री वाला उसको टेकअप करता है और उससे मनी बनाता है. अगर आप में से कोई स्टार्टअप आगे शुरू करेंगे तब आपको भी यही लगेगा कि जो मेरा रॉ मटेरियल है दैट शुड बी ऑफ नो कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में मिल जाए तो आई विल मेक मनी फ्रॉम दैट. बिकॉज वट एवर ह्यूमन रिसोर्सेज, वट एवर मशीनरीज, वट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर you are putting into that for making the marketable product, that will cost. So you just want the raw material zero पर, ठीक है.
So made the gum acceptable for the food applications. This gum ghati is being used in the food applications. And we have shaped the gum into the noodle form. सब कुछ अच्छा अच्छा ही बिकता है, कुछ भी रॉ में नहीं बिकता. अगर कोई इसको बेचने चलेगा जो आप राइट हैंड में देख रहे हैं तो वो नहीं बिकेगा, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड वाले को बेचने चलेगा तो इसकी मार्केट वैल्यू है. Nowadays people are talking about this marketable product. In earlier days, ladies usually stitch, usually do the embroidery, but that is not marketable. Now it has become marketable. Government of India, even DST, is running a program Shri. Under that program, they are just motivating the people to ensure our heritage, to deserve that heritage, and in that heritage, everything will come. So that is the situation nowadays. So chemistry का student ये सब कर सकता है, सब कुछ कर सकता है. जो chemistry आप अभी पढ़ रहे हैं उसी के बेस पर आप सब कुछ कर सकते हैं. The only simple thing is this कि हमें वो skill develop करना है कि हम उस chemistry को कहाँ apply कर पाएंगे और कैसे apply कर पाएंगे. This is the tamarind kernel powder. ये आप देख सकते हैं कि इमली से सीड को भी हमने dehusk कर दिया. We call it seed coat and kernel. Then it is TKP, tamarind kernel powder. It is established as a good sieging material for the cotton and jute industry. Technology transfer hai already. People are using it. Develop the process to isolate a pectin-like substance that is called gellose, and found useful in the manufacture of jellies free from any gelatin. If you will go to the Western world, you will find the jellies, many jellies, different kind of jellies. They are using just gelatin. Even in India also, people are using gelatin in the formation of cake. We are getting different shapes. We are getting different colors. That is the food color they are adding. But it can replace that gelatin. And we have formulated its ISI specification as well. Because whatever you are going to transfer, that must have a specification. Because one industry can use it in one way, another can use it in another way. If there will not be a government approved specification, then it will be very tough to make a check on that. तो क्वालिटी कंट्रोल तभी मेंटेन होगा जब उसकी स्पेसिफिकेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होके आप साथ में देंगे. सो डेवलप द प्रोसेस टू prepare the chemically modified TKP for its specific uses. The next thing, from plants, we are getting mucilages. आग का ट्री किस किसने देखा है? Calotropis procera, सभी ने देखा होगा. उससे लेटेक्स निकलता है. That is called white milk, or we called it milky weed also. And it is very important plant, very important, I can tell you. Because its leaves are very important. That latex have mucilage, it is very important. It is being used in pharmaceutical industries. And from the leaves, we have developed a biopesticide. And I have transferred that technology also. And people are making it, industry making it a biopesticide that is named Rakshak. Because the plant is protected by the plant. That is the beauty, what I can say. The concept is this, plant can protect plant itself. So that Rakshak is protecting the defoliator of popular. It is 100% useful in that defoliator. So mucilages, they are the polysaccharide complexes. We all know they are sugar plus uronic acid. जब आपको polysaccharide class में पढ़ाया जाए तो याद कर लीजिएगा कि ये mucilages हैं और इस mucilages से what we can do. They are insoluble in alcohol but forming a viscous non-adhesive colloidal solution with water. And water is called as universal solvent. That is almost free, I can say. We have natural resources of water. तो जो कुछ पानी में डिसॉल्व हो जाए वो बहुत बढ़िया काम करता है इंडस्ट्री पर्पस से भी और रिसर्च पर्पस से भी, क्योंकि अल्कोहल आपको खरीदना पड़ेगा एंड इट विल कॉस्ट. वाटर को यू कैन हैव अ डिस्टिल्ड वाटर और यू कैन हैव अ डबल डिस्टिल्ड वाटर or ionized water. Different kind of waters are available, or you can prepare it into your laboratory itself. So it is dissolvable in that water, and further you can proceed for further reactions. Now pectin, every fruits have pectin, maximum time.
You have to identify which one has maximum percentage. So it is formed of partially methoxylated polygalactouronic acids. And it is a coarse fine powder, yellowish white in color and almost odorless, and has a mucilaginous taste. जो हम fruits खाने के बाद एक हल्का सा taste आता है mucilaginous का, that is due to the presence of pectin. So pectin is a polysaccharide. We can change, we can make permutation combination in this polysaccharide, and we can make a number of products from that. This is starch, this is SAM basically. स्टार्च ऐसा दिखता है उसमें, जो हम चावल में कहते हैं ना स्टार्च ले रहे हैं स्टार्च ले रहे हैं, ये वो ऐसा दिखता है उसमें. अगर आप सैम एनालिसिस कर लेंगे, सैम स्कैनिंग करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस. नाउ if you will do any modification into starch, then you can identify through the SAM. आराम से इसमें पता चल जाएगा क्या changes हुए हैं. Then after cellulose, it is the principal carbohydrate photosynthesized by the plants. Sources हमारे पास grains हैं, pulses हैं and tubers as well. हमारे यहाँ शकरकंदी उतनी नहीं खाई जाती, but Western world में बहुत ज़्यादा यूज में है, बहुत ज़्यादा. ट्यूबर है वो, and the richest source of carbohydrates. हम लोग नहीं खाते, बहुत चॉइस बहुत कम है हमारे यहाँ पर, but a number of products can be made that. So these are the plants. Then these are the some naturally occurring anti-cancerous phytochemicals. One is turmeric. We got curcumin from turmeric. Then blueberries, we got delphinidin. Then strawberries, we got ellagic acid. Then from green tea, epigallocatechin 3-gallate. Means अगर आपने कैटेचिन में चेंज कर दिया, उसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया, then we will get a different compound and it will be having a different chemical properties. Then soyabeans, genicin, tomatoes, everybody knows we got lycopene. Then grapes, this is resveratrol, citrus, limonene, garlic, diallyl sulfide. These are the marker compounds, or we can say the main constituents. Marker compound means if we are talking about the lycopene, then the first thought will come into the mind, tomato. It means it has the highest percentage. Tomato has the highest percentage of lycopene. So it is called as its marker compound. Then I'll directly come. This is all the phytochemical family, how it works. The green tea. Some student told me about this green tea. It contains high level of flavonoids and shuts off the formation of cancer cells. बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है हमारे ग्रीन टी मेनली. जो अभी दालचीनी कही जाती है ना कि दालचीनी का पाउडर लीजिए, व्हाट इज दैट? दैट इज कैटेचिन्स, दैट इज फ्लेवोनॉइड्स. बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत हाई वो है. और वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री. आप बार्क को ले सकते हैं ट्री से, तो नेचुरली अकरिंग है ना, सिंथेसाइज तो नहीं करना पड़ रहा है. Then coming to the aromatic plants, जो मैंने अभी बताया aromatic plants को हम आज से यूज़ नहीं कर रहे हैं. अगर आप लोग कभी जैसे कुछ सीरियल्स आते हैं, कुछ मूवीज़ आती हैं, उसमें राजा महाराजा दिखाई देते थे कि गर्म पानी का भरा हुआ है उनका पॉन्ड पूरा और रोज़ की पेटल्स हैं. What is that? Why they put it into that? Just to have aroma from that. Because when it will come into the lukewarm water, something will come out, some aroma will come out from that, and that relaxes your nerves, that elevates your mood. So that is the aromatic plant. That was the reason जो हम आज उसे साइंटिफिक टर्म्स में देख रहे हैं, जो बहुत पहले यूज होता था. पहले कोई ये डीओ वीओ थोड़ी चलते थे, कुछ नहीं था, नथिंग. सब नेचुरली था, नेचुरल प्लांट्स थे, नेचुरल उन्हीं से अरोमा आता था. आज के डेट में हमारे पास तो वाइड रेंज. एंड व्हाट इज डीओ? कोई बता पाएगा डीओ क्या है? सब लोग डीओ यूज करते हैं, सारे बच्चे डीओ यूज करते हैं, इवन बड़े लोग भी यूज करते हैं. व्हाट इज केमिकली डीओ?
हाँ, है क्या? डियो तो फुस 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 लगा के चल दिए. Do you know that is harming to you and others as well? Deo is aerosol. It is not a perfume. It is not an aroma. It is only a synthetic compound has been pressed with air into the bottle. When you will start pushing your bottle, then something will come out and it will be in the form of droplets on your skin as well as on your clothes. And you feel ki like, yes, we have put the aroma and now fantastic. No, people are having the skin allergies and bronchitis allergy. The main reason behind this is this deo. I'm telling you. ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए. ये अगर यूज़ लगातार आप यूज़ करते रहेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है. And secondary thing, it will not giving you the smoothness and even to the others who are coming into your contact. In fact, it is giving you that restlessness that many people might be feeling after putting the deo. It is not a calmness. It is not giving you the calmness. It is giving you something different. When you entered into this room, if somebody has put the deo or some room freshener here, those molecules will hit your nose here and there, here and there. Then only you will feel the aroma. Then you will feel the fragrance. But that is not the fragrance at all. That is the synthetic compound, what we are taking. अब वो सिंथेटिक कंपाउंड कितना हम इनहेल कर रहे हैं, कितना दूसरे लोग इनहेल कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट. कितना उसमें छिड़काव किया गया है. जितने भी ये आपके मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने मॉस्किटो रेपेलेंट लगाया और रात में हमें सांस नहीं आ रही थी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बीइंग अ केमिस्ट वी कैन अंडरस्टैंड. रीजन कुछ भी नहीं है. जो सिंथेटिक कंपाउंड यूज हुआ है, जब वो डिसोशिएट होता है एनवायरनमेंट में, that will create problem in your bronchitis system. That is the main reason behind this. तो इसीलिए जो मॉस्किटो कॉइल्स, पहले अगर किसी को याद होगा, जो मेरे फेलो कलीग्स हैं उनको याद होगा, पहले लोग बल्ब के ऊपर रख लेते थे. छोटे वाला पैकेट आता था ब्लू कलर का. किसी ने रखा है? रखा होगा बहुत लोगों ने. कोई हाँ नहीं कर रहा है. बहुत लोगों ने रखा होगा, है ना? क्यों सर, आपने रखा होगा, है ना? गुड नाइट का छोटा आता था पैक, उसको रख लेते थे. तब पता नहीं था. ऑल्दो एमएससी केमिस्ट्री तब कर लिया था, पर पता नहीं था. इसीलिए आज ये स्टूडेंट्स आपके लिए है बेसिकली ये लेक्चर, क्योंकि हमें उस चीज़ का पता ही नहीं चलता है. हम तो खाली यहाँ से पढ़ के चले गए कि हमने टर्पिनॉइड्स पढ़ लिए, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ ली और हम घर चले गए. अब घर जो वहाँ पे बवाल मच रहा है उसका तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या हो रहा है. सब केमिस्ट्री तो है, वो सब केमिस्ट्री की वजह से ही हो रहा है. जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर आप देखो, उससे मच्छर तो बहुत मरते थे. अब आप सोचो, जब वो लाइव मटेरियल पर इतना रिएक्शन दे सकता है तो वो आपके अंदर क्या कर रहा होगा. वो लाइव मटेरियल है ना. मॉस्किटो इज लाइफ, है ना? ठीक है, हम उसे मारना चाहते हैं क्योंकि वो हमें हार्म करता है, बट दैट इज अ लाइफ. तो अब उसको मार दिया उसने. बेहोश नहीं होते थे उससे, मर जाते थे. तो कितना स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक कंपाउंड था उसके अंदर कि उसने उसको मार दिया. नाउअडेज वी हैव एरोमास, जो ये मॉस्किटो रेपेलेंट में काम में आती है. एंड वो लेमन ग्रास से आइसोलेटेड है. लेमन ग्रास के जो ऑयल है, वॉलेटाइल ऑयल, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है. टॉयलेटरीज में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अभी. ये धीरे धीरे हमारी नॉलेज आई. पहले भी था. ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास ये अभी आया है, पिछले 8-10 सालों से थोड़ी आया है. ये हमारे पास बहुत सालों से है सारी चीज़ें, बट वी नेवर थॉट ऑफ दिस कि हम इससे ये भी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं. सो वो आइडियाज़ कहाँ से आए? रिसर्चर के पास पहले से, साइंटिस्ट पहले से जानते हैं. मैंने 2003 में ही लेमन ग्रास का ऑयल आइसोलेट करके और उसके प्रोडक्ट्स बनाए थे, बट ये नहीं पता था कि इतना बूम आ जाएगा इसमें. सो अभी आई विल शो यू फर्दर. बेसिकली एरोमा सेक्टर में हमारे फ्रेग्रेंसेस, वॉलेटाइल ऑयल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंड दे even we are exploring day by day more compounds. What are the applications? You will find everywhere. In any sector
You just open up, you will find these oils everywhere. Then what is the production and what is the latest data of this? Essential oils or volatile oils. Why it is volatile? Students, because they evaporate at room temperature. If you will open the bottle of your perfume, it will evaporate at room temperature. That is called volatile or essential oils. So for fragrance, अगर world का हम production देखते हैं in terms of tons, it is 4,394. But in India, we are lagging behind. Then for processing, availability of raw material is 80,660 tons, but we have 17. Although we have 17% stake, that is handsome percentage we can say, but still lagging behind in this sector. So world trade of essential oil and FFF is flavor and fragrance industry. It is estimated to be the order of US dollar 11 billion. If you will go to any airport, you will find aromas are coming, fragrances. It will cost more than 2,000 something, 3,000. It depends how much amount you want to take. So that is, sometimes you will find natural, sometimes it is synthetic. What are the sources basically? Natural sources, lavender, eucalyptus, lemongrass, rose, khaskhas, and many more, tulsi, we can take up. And from the herbs or spices category, we can have cinnamon and cloves. Cloves is long, cinnamon is dalchini. Then flowers and fruits. And synthetic fragrances, pharmaceuticals, industrial chemicals. They have different kind of mechanism on olfactory system also. So this is the latest advances in this aroma sector. Artificial intelligence has come into this sector also. Then biotechnology and biosynthesis, people are making different kind of products by using different pathways. And E-nose, now we have E-nose. E-nose is GCMS coupled with E-nose. Means एक को smell कुछ और आ रही है, दूसरे को कुछ और आ रही है. But what is authentic smell? That will be detected only by the E-nose. E-nose means electronic nose. Then sustainable extraction technique. We don't want to use any solvent. We just want green technologies. Then metabolics and aroma profiling is being done nowadays. Therapeutic applications, we all know aromatherapy. So these are very useful in that. We are even in relaxing our mind as well as body. So nowadays, what we are doing at SVBP University, I have done a lot of work in the field of essential oils at FRA Dehradun and even in natural product chemistry on different aspects, fatty oils, isolation of pure compounds, their characterization, and further activities, and then making a number of products there. But nowadays at Sardar Vallabhbhai Patel University, I am having one project that is funded by Department of Science and Technology, DST, New Delhi. Basically, it is a part of aroma mission of Government of India that is being conducted at UP and Himachal Pradesh and in Uttarakhand as well. In UP, CMAP, CSIR lab is taking lead of this aroma mission, and in Himachal, IHBT Palampur is taking the lead. So this project was given under that aroma mission to me here at SVP University. Under this project, basically, I have taken it as a societal challenge because I just want to do, because I have done a lot of research, number of publications, patents, awards, everything I have with me. Now I just want to do something for the society. So I have taken up this project for the women, rural and peri-urban women. I am giving them training on these simple processes to isolate the oil and then further making the value addition of that oil. And what we are taking the waste flowers, waste materials, and the material that is surrounding to their neighborhood. So in this case, I have taken the rose first, and then lemongrass also. And during my survey to the nearby areas of Western UP,
then I found that one farmer is making the oil by putting this steam distillation plant at his own field. He is growing lemongrass and isolating the oil, and he is selling this at the rate of 1200 per liter. And nowadays, what he is doing, even he is collecting from their neighborhood farmers, neighborhood villages farmers, and he is collecting from them and bringing them at one place, and he is buying from them at 1000 rupees per kg and selling at 1200 rupees per kg. Just imagine, he is making 200 rupees per liter. So this is the idea. This is the startup also. So we are making at our lab gulab jal and even oil, volatile oil, and even attar also. Attar. So this was the part of training program. I have given training to the girls and the females of the surrounding villages how to isolate. And this is the gulab jal we are making in our laboratory itself. This is the lemongrass oil isolation. And by virtue of interest, I thought during the Holi that we should make herbal gulal also. You are getting herbal gulal in the market. What is that? Basically, they are using the food colors into that. That's why this is so bright yellow, so bright green, blue, because naturally these colors are not available with us. So we have developed these two colors. One was from the beetroot and one was from the marigold. And these are the natural colors. Nothing has been added into it. So this gulal was prepared during this Holi only. So this is the chemistry. Bina chemistry ke nahi kar payenge. First we have to extract, then only we can make the gulal. So this was done in my laboratory. My student Varnika is here. She will present her poster on the eucalyptus oil, and she is a part of the project. So this was done in my laboratory. So basically, we have to connect the modern ancient knowledge with the modern science. Then only our students can understand what is the use of studying MSc chemistry. That is the basic conclusion, what I want to tell at this platform. Because हम लोग जितने लोग job में हैं, they have done their PhDs from different places. They have their different research areas. They want to move on in that research area because at this age, it is very tough for them to move into separate field. But the students who are now studying the MSc chemistry, they can have a choice where to move, what marketable products we can develop, what research we can take up, where we can go by taking this kind of research. So, जिसको प्लांट से प्यार है वही आए इसमें, नहीं है तो मत आए, ये सच्चाई है. With this, I want to conclude. Thank you. Any queries or any questions, I would be very happy to take up. हाँ बताएं. जोर से बोल दीजिए, मुझे सुनाई पड़ जाएगा. बता दीजिए. जय हिंद. बेटा लॉन्ग टर्म आप इनको किस फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट. अति हर एक चीज की बुरी है, ये ध्यान रखना हमेशा. आप ज्यादा हंसोगे तो दर्द होने लग जाएगा यहाँ पर. ठीक है. कॉफी, हर एक चीज आपकी बॉडी की एक लिमिट है टेकअप करने की. अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे, उस थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करोगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट, एंड दैट इज एडिक्शन. पार्ट ऑफ एडिक्शन इज दैट नेगेटिव इम्पैक्ट. सो यू शुड ऑलवेज नो
कि what is the limit of your body to take up anything else, whatever it is. So यही है, आप अगर लेवेंडर है, रोज ऑयल है, ये नहीं है कि आप उसमें नहा लीजिए. It is not admissible and permissible as well. तो हर एक चीज़ का, और वैसे भी जो प्योर ऑयल्स होते हैं, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, दे आर बीइंग यूज्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी. आई कैन से इन ml. अगर आप रोज ऑयल की, रोज इत्र की एक 5 ml की बॉटल प्योर की लेने चले जाएंगे तो इट विल कॉस्ट अराउंड 4,000 रुपीज. अब उस 4,000 में 5 ml में आपने एक ही दिन 5 ml लगा लिया तो आप समझ लीजिए हो गया बढ़िया काम. फिर तो आप आज में ऊपर और आसमान नीचे. ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ये याद रखिए कि लिमिट क्या है, उसी लिमिट के हिसाब से चलना है, कुछ भी है ना. एनीथिंग एल्स? आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? थैंक यू. हाँ बिल्कुल आ रही है. कहाँ से आप बोल रहे हैं? अच्छा सर मुझे एक्चुअली आई वाज लुकिंग एट द स्टूडेंट्स ओनली, सॉरी. हाँ जी बताएं. जी सर. तो ये बता दीजिए कि जो आपने बताया कि दूध बात के बाद डालो तो क्या ऑर्डर तो वहाँ पैसे मिलती है, दूध अलग मिलता है और ये सब चीजें अलग मिलती है. यस. घर में उसका एक वो है कि आप पहले दूध को उबाल के साइड में ढक के रख लीजिए और फिर उसी फ्राई पैन में चाय को उबाल लीजिए. तो मेड भी हल्ला नहीं करेंगी कि ज़्यादा बर्तन कर दिए, मैडम भी हल्ला नहीं करेंगी कि देखो क्या चल रहा है ना. तो दैट इज़ द बेसिक प्रोसेस दैट शुड बी ऑप्टेड. क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में वी आर यूज टू ऑफ टेकिंग द मिल्क टी. वी कैन नॉट टेक विदाउट मिल्क. आपने 2 बार पी लिया स्टाइल में, 3 बार पी लिया ग्रीन टी, बट द 4th टाइम यू विल से व्हेन यू विल गो बैक टू योर होम, यू विल आस्क मैडम कि अभी तो बहुत हो गया, आज ग्रीन टी, अब जरा एक बढ़िया दूध वाली चाय पिला दीजिए. इट इज़ वेरी ट्रू बिकॉज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यूज टू कम इन एवरी हाउस होल्ड, बट दैट इज नॉट द गुड थिंग. इफ इवन अ सिंगल टी कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो बेटर है कि आप उसी प्रोसेस को ऑप्ट करिए. आप देखिए लॉन्ग टर्म में क्या, इवन डेली आपको कितना रिलीफ फील होगा. इवन बाई यूनिवर्सिटी आई यूज टू गो टू सम अदर ऑफिसेज, तो दे सेड कि मैडम चाय पी के जाइएगा, हमने कैंटीन से मंगवाई है. मैंने कहा माफ़ कर दीजिए, वो नहीं पी पाऊंगी मैं कभी भी. दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आई नो कि वो क्या होने वाला है, शाम तक ही वोमिट स्टार्ट हो जाएगी. हर एक का एक अपना बॉडी टेम्परामेंट है, वो उसी तरह से रिएक्ट करता है. और अगर आपने नहीं इस तरह से का कोगुलेशन को टेकअप करा है तो फिर वो और फास्ट रिएक्शन आता है उसका. इवन जो तेल सर जो समोसे खाते हैं ना बड़े मजे में, दैट इज ऑल रेंसिड. रेंसिडिटी हो जाती है उसमें. आप देखना इतना ब्लैक ऑयल मिलता है वो कढ़ाई में. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? खतरनाक रेंसिडिटी है उस ऑयल में, और उसी के हम समोसे खा रहे हैं. और समोसे खाने के बाद रिसेंट बस एक खा लिया, यार बहुत है, और नहीं हो जाएगा. एंड व्हेन यू विल रीच टू द एज ऑफ 50 तब तो वो एक को भी कहते छोड़ दो यार, इसको रहने दो, नहीं खा पाएंगे ना. बिकॉज अभी क्या हो गया है ना सर, इतना अडल्ट्रेशन है सिस्टम में कि आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे. आपको एग्जैक्टली सेम नजर आएगा वो, बट इट इज़ नॉट सेम एट ऑल. इवन हल्दी, मिर्च, यू जस्ट नेम द प्रोडक्ट, आई कैन टेल कि उसमें क्या है, क्या समस्या है. बिकॉज बीइंग इन FRI आई यूज टू विजिट सो मैनी प्लेसेस, सो मैनी इंडस्ट्रीज, सब देखा है अपनी आंखों से. तो अब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है. इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चों को जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ें. प्रैक्टिकल में ये नहीं कि कंपाउंड आइसोलेशन, कंपाउंड बनाना है. कंपाउंड बनाना ठीक है, वो सीखना ही है, आपको फॉर्मेशन सीखनी है. लेकिन ये भी जरूर देखना है कि हम उसको टेस्ट कैसे कर पाएंगे. क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हायर कर रहे हैं ना आजकल इंडस्ट्रीज, वो क्वालिटी कंट्रोल में हायर कर रही है. बाबा रामदेव के जो क्वालिटी कंट्रोल सेक्टर है, कभी किसी का जाना हुआ वहाँ पे? उनके पास लेबोरेटरी है पदार्थ, उसका नाम है पदार्थ. जो बाबा रामदेव का पतंजलि पीठ है उसके साइड से रास्ता गया है और काफ़ी अंदर जाके पदार्थ उनकी लेबोरेटरी है, जहाँ पर उनके सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है. कभी किसी को विजिट करने का मौका मिला उसमें पदार्थ में? कोई जा पाया? मेरी स्टूडेंट वहाँ क्वालिटी कंट्रोल में रिसर्च एनालिस्ट थी. एट दैट टाइम आई वेंट देयर, आई विजिटेड दैट पदार्थ. तो देख के होश उड़ गए. हम साइंटिस्ट पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना, और लोग बना के बेच रहे हैं, और हम सिर्फ एजुकेट ही कर रहे हैं.
स्टूडेंट्स को कि भाई ऐसा मत करिए, पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए. बट वट एवर वी आर कंज्यूमिंग, वट एवर कमिंग इन टू द मार्केट, दैट इज क्रिएटिंग हैवॉक, नो डाउट. पहले फिर भी कुछ शुद्ध आ जाता था, अभी नहीं आता. आपको मस्टर्ड ऑयल का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. मस्टर्ड ऑयल हम सब यूज़ करते हैं. इनफैक्ट इस वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में सब यूज़ करते हैं. इफ़ यू विल गो टू साउथ, दे विल यूज़ द कोकोनट ऑयल. इफ़ यू विल गो टू एमपी, दे विल यूज़ दिस मूंगफली का तेल. बट इन गुजरात ऑल्सो मूंगफली का तेल, बिकॉज जो ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो सस्ता होगा और उसी को लोग यूज़ करेंगे. हमारे यहाँ क्या है, मस्टर्ड ज़्यादा होती है वेस्टर्न यूपी में, हम उसी को यूज़ करते हैं. तो मस्टर्ड ऑयल का मैं आपको बताती हूँ कि एक वेंडर मेरे पास आए. दे सेड कि मैडम ये मस्टर्ड ऑयल है, आप इसको चेक कर दीजिए. तो मैंने कहा दिखाइए क्या है मस्टर्ड ऑयल. कहते हम इसको, मतलब जो हम होलसेलर को बेचते हैं वो 110 रुपये किलो में बेचते हैं, और लीटर यू कैन सी. और हमें जो मार्केट में मिलता है एज ए कंज्यूमर, हम 200 रुपये का ले रहे हैं. कोई 180 बेच रहा है, कोई 190 बेच रहा है. 180 जो है वो ब्लैक मस्टर्ड का है, और 200 एंड 210 की रेंज में येलो मस्टर्ड का है. येलो मस्टर्ड is having more potential, it has more medicinal importance in comparison to black one, because yellow mustard के पास unsaturated fatty acids ज़्यादा है, and that is very good for our health. तो वो बंदा मेरे पास 2 ऑयल लेकर आया, एक प्योर था और एक इम्प्योर था. अब इम्प्योर में कैसी इम्प्योरिटी, अगर आप सुनेंगे तो मैंने कहा आप दोनों रख जाओ, क्योंकि मैं तो पहले से ही दोनों को जानती हूँ कि 2 ऑयल तरह के मार्केट में बन रहे हैं और बिक रहे हैं. तो जो इम्प्योर ऑयल था उसमें किस तरह की इम्प्योरिटी थी, उसमें पाम ऑयल था मैक्सिमम, और एक केमिकल आता है जिसको अगर आप उसमें ऐड ऑन कर देंगे, 3 लीटर के अराउंड आपको 100 लीटर में ऐड ऑन करना है. येलो कलर, कंसिस्टेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल. इफ यू विल पुट ऑन योर हैंड, ऑन योर पाम, देन यू विल फाइंड कि यस सेम ग्रीसी है, सेम टच है, ऑयली टच है. तो दैट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. लोग ले रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, पहचान नहीं पाएंगे. आप पहचान नहीं पाएंगे, मैं बता रही हूँ. आप उस ऑयल को दोनों को रख दीजिए, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये ऑयल मस्टर्ड ऑयल है या ये ऑयल सिंथेटिक ऑयल है. एंड दैट पाम ऑयल इज क्रिएटिंग कैंसर. दैट इज द रीजन. जो हमारा खाना पीना है वही तो है सबसे बड़ी समस्या. अब बच्चे ने पूछा कि अगर हम ज़्यादा ले लें कॉफ़ी, जो अभी लौकी में लग रहा है ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लग रहा है. ऑक्सीटॉक्सिन इज एन हार्मोन, इट इज़ नॉट प्रॉब्लमेटिक. बट जब रोज लग रहा है और इतना ज़्यादा लग रहा है, उसकी नेचुरल ग्रोथ हो ही नहीं दी. जो प्लांट के प्राइमरी मेटाबॉलिज्म और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से फ्रूट, फ्लावर और सीड डेवलप होता है, वो होने नहीं दिया आपने. उस प्रोसेस को रोक दिया, एंड देन यू इंजेक्टेड दैट हार्मोन इनटू दैट. Now what it will create? It will block that pathway. It will stop to make formation of secondary metabolites and primary metabolites as well. And that we are taking, so it will create a problem. So वही है, अति हर एक चीज़ की बुरी है. और ये पाम ऑयल बहुत सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है. वो 100 रुपये भी ज़्यादा ही बेच रहा है. ये तो 20-30 रुपये बिक जाना चाहिए था, नॉट मोर देन दैट ना. तो आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बता सकते हैं, और ऐसी ही केमिस्ट्री पढ़नी है बच्चों को. ठीक है, ये केमिस्ट्री, बुकिश केमिस्ट्री तो हम पढ़ लेते हैं, नंबर भी आ जाते हैं, पर जब हम रिसर्च में जाते हैं ना, फिर हमारे जीरो खड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता. हम तो बुक का पढ़ के आ गए, नंबर गेन करके आ गए. सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच. यस सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू पुट माई व्यूज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. थैंक यू ऑल. थैंक यू. Thank you so much, ma'am, to grace the stage with your words. And now I would like to call Ms. Esther Larenzo, ma'am, and Ankita Agarwal, ma'am, to present Dr. Rashmi, ma'am, Certificate of Appreciation and Token of Honor. A warm round of applause, please, everyone. फोटो में नहीं समझ में आ रहा, आप
Thank you so much, ma'am. Now, introducing our next resource person to the audience, Dr. Vinny Sharma ma'am. Dr. Vinny Sharma ma'am is a founding member of both the Forensics Agora Society and the Forensic Cyber Dose Cell at Galgotia's University. Currently, ma'am is actively engaged in the integration of artificial intelligence with various branches of forensic science. Her areas of specialization include fingerprint analysis, question documents, handwriting and signature examination, instrumentation and forensic photography, fingerprint digitization, e-documents and online character recognition, Python programming, machine learning, and an artificial intelligence. MAM holds more than 10 patents, many of which are in the field of artificial intelligence. Dr. Vinny Sharma ma'am has published over 100 research papers in reputed journals. Ma'am's excellence has been recognized with numerous awards, including honorary membership of the Criminological Research and Development Organization, Best Researcher Faculty Award, Udham Acharya Award, and among many others, as ma'am regularly trains law enforcement agencies in forensic application and techniques. Ma'am is also deeply committed to social causes. Ma'am works as a counselor for survivors of sexual assault, especially teenagers. Moreover, ma'am is a vocal activist against cyberbullying and continues to make significant contributions in this area. Now, I would like to call Dr. Vinay Sharma ma'am upon the stage to give her insightful views on her topic, Forensic Science in AI Era, where we are, where we can. We are eager to learn from you, ma'am. Over to you. A huge round of applause for her, please. So thank you so much, Gauri, for such kind words, and thank you, everyone. Now, before I move on to the presentation, I request the IT team to please, if you can, go back to the slide of my introduction. I would like to say some words over there. As you can see on the top, on the slide, you'll find that I am part of two forensic science societies in Calcutta University. One is Forensics Agora, and the other is Forensic Cyber Dose Cell. Now, what is that cyber dose cell that we are talking about? How many of you have social media accounts with the raise of your hands, please? Be honest. Social media includes WhatsApp and YouTube also. Okay. And how many of you call people? फोन पे कॉल करते हैं? फोन पे कॉल नहीं करते कभी किसी को? हाथ उठाओ. Yeah. And how many of you have heard that caller tune? Cybercrime, fraud from government try. Okay. And how many of you have ever trolled anybody on social media? WhatsApp. Okay. How many of you have shared memes? Memes. And how many of you have used those WhatsApp stickers? GIFs. So let me tell everybody who's sitting over here and who have raised their hands, you all are cyber bully. You're not bully, but you are bullies. Okay. That's the beauty of cyber world. That's the beauty of cyberbullying. We do it, but we don't know we are doing it. That is why we have established this cyber dose cell. Those friends. So we are your friends. So whenever you encounter any kind of, this is specifically for students and academicians, that is why I am taking 5 minutes from my presentation to share. We have developed this cell specifically for academicians and students. Reason being, अभी किसी बिजनेसमैन या किसी सब्जी वाले का या फिर कोई मॉल में काम करने वाले के साथ साइबर फ्रॉड होगा, कोई उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं पूछता है. Nobody asks. But if same happens with an academician,
the immediate reaction is, आप तो इतने पढ़े लिखे हो, आप तो बच्चों को पढ़ाते हो, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया. We encounter this. बेटा आप तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया. मतलब पढ़ते नहीं हो तुम. We listen to this, right? That is why this is a safe cell that we have developed specifically for students and academicians who may or are the victims, or again, I'm sorry, the survivors of these cyber crimes. So whenever you need help, you can text me, you'll get my email address at the end. You can send me an email also. And I would request Mr. Lalit to share my cell phone number with all of you so that you can text me also. And I'm available 24/7. And as you can see in the bottom, I train police officers. So don't worry, I can get the help from there also. Thank you for that. Can we switch to the presentation? Now during the presentation, there will be a very frequent flip-flop of the slides, of the screens also. Okay, not just slide. Because I want it to be a more interactive session. If I can have the hand mic, please, I would like to roam around. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. So am I audible? Are you able to hear me? Okay. When I can hear you, you can hear me. So it has to be a two-way communication. Okay? You have your cell phones with you? इंटरनेट चल रहा है? उसमें स्कैनर है, गूगल लेंस होता है? Very good. Take it out. Take out your cell phones. Please, come on. Cell phones out? Very good. Can we flip it? Okay. Now, please let's go to the question slide. You've read the topic, you've heard the topic. AI. Your dean spoke about AI. Rashmi now spoke about AI. When you travel anywhere, you listen about AI. Every time a person is talking about AI. Okay? What is this AI? So now, the first question, if you can click on display, please. Yeah. Please click on it. Please click on the QR code. Yeah. Can you please scan this, everyone, using your cell phone? Scan the QR code, okay? And the question for you all to answer is kuch hota hai movie mein, and in the majority of Karan Johar pictures, there is this game. Whatever comes first in your mind, when you hear the word, you have to say. So similarly, whatever came to your mind first when you heard the topic, AI forensic, what did came into your mind? So you simply have to type it and click on post. It's very easy. And don't worry, this is anonymous. So आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखेंगे, किसी को नहीं पता चलने वाला. This is anonymous. Okay? Can you go to the answers, please? Can you cross it? Okay. So cyber threats, investigations, cyber crime, misuse. Okay. Any more? We have more people here. Come on, be fast. Texting इसीलिए क्योंकि सब participate करें. Okay? Now, can we go back to my presentation? Dangers. Okay. When we are talking about AI, the first thing that comes to our mind, even as a faculty, is AI is going to replace us. As a student, AI is going to replace us. Why are we studying? When we can simply click, we can put in a question and we'll get the answer. Then why are we actually learning? Okay. And we move on, please. How are we investigating AI? How are we investigating cyber crimes? Or let's keep it as normal crimes. How many of you are from forensics or law domain? Okay, फिर तो बहुत सारे. हम लोग कैसे investigate करते हैं? Traditional approach word जब आप सोचते हो, okay? Don't worry. Again, not going to be putting you on the stand. Please put the question number 2.
Not going to be putting you on the stand, so don't worry. This is going to be a blind approach, okay? When we say traditional crime approaches, what comes to your mind? Please click on the QR code. Thank you. Scan again and type in. Simply type. Enjoying this? Very good. So that's how we teach also, ma'am. हम लोग क्लास में भी यही करते हैं. Okay, so scan it, please. I hope it's visible. Up. Okay. Cross. Slow. Very good. Anyone else? Messy. Good. Investigation methodologies. बहुत 7-8 steps हैं. ललित सर ने पढ़ाए होंगे. First crime scene. Not organized. Very nice. Okay. Now, if you switch back to my presentation and you move on to the third slide, you will find that here I have listed down some of the approaches that we are using in the forensic science, in the court of law also, and with the investigators also. हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं, देखिए फोरेंसिक का काम सिर्फ क्राइम सीन पे नहीं है. फोरेंसिक का काम कोर्ट रूम तक है. एंड इनफैक्ट कोर्ट रूम के बाद जेल में भी है, क्योंकि जेल में भी लड़ाई होती है. प्रोजेक्ट इनोसेंस चल रहा है इंडिया के अंदर भी. वी हैव प्रोजेक्ट 51 which is running on the lines of project innocence. So are those actually the criminals or not? Yes and no. It's a flip of a coin. Signatures matter. Your sign on a report will decide whether a person, Mr. A or Mr. B, should spend 20 years in jail or he or she should walk free. Your signatures matters. So ऐसे कहीं पे भी साइन मत कर दिया करो. बहुत वैल्यू है सिग्नेचर की. Okay? So when we are talking about traditional approaches, we are moving on with the datas. रिपोर्ट सबमिट कर दी, जैसे मैम ने बोला कि ग्रीन टी पीने से आपको फायदा होगा. बट इफ यू रिकॉल एट एवरी फोटोग्राफ मैम ने नीचे एक रेफरेंस डाला हुआ था कि ये डाटा यहां से लिया. व्हेन मैम स्पोक अबाउट द यूजेज ऑफ अरोमास, मैम ब्रॉट आउट द डाटा so that you guys feel confident कि हाँ मैम कुछ तो सच बता रही हैं. That numbers matter, statistics matter. That goes around when you are representing your opinion in the court of law. अगर आपने सिर्फ ये बोल दिया कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मार दिया, जज साहब बोलेंगे कैसे मारा, कितना मारा, कितने सेंटीमीटर का घाव था, कहाँ था, कौन से ऑर्गन पे था. And that's how you have to give it. The data is important. Okay? Next, please. Do we remember this person? नहीं जानते होगे, क्योंकि केस क्या डेट देखो 2008. I think you guys must be in school at that point of time. Primary school शायद, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में थी. नहीं, 2008. Yeah, I was in third year, graduation. अच्छा, जॉन इब्राहिम को कौन कौन जानता है? रेज ऑफ योर हैंड. जॉन इब्राहिम को कौन जानता है? ओके. जॉन इब्राहिम की एक पिक्चर आई थी बाटला हाउस. देखिए, हाथ खड़ा करो किस किसने देखी है. ओके. और उस पिक्चर में एक हमारे एमपी भी एक्ट कर रहे थे, पुलिस वाले बने थे. बहुत फेमस है वो, रवि किशन जी. रवि किशन जी को कौन कौन जानता है? एमपी है बिहार से. डोंट बी शाय, मैं भी जानती हूँ, ऐसी बात नहीं है. रवि किशन जी जिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे थे वो यही इंस्पेक्टर है. ओके. लेट श्री एमसी शर्मा. ही वाज पार्ट ऑफ दिल्ली पुलिस and he was part of Delhi Police ATS cell, a very respected officer and an encounter specialist in Delhi Police. Unfortunately, during that Batla House encounter, he died.
Unfortunately, he died. Okay. पुलिस ने क्लेम किया कि क्रॉस फायरिंग में हम भी मार रहे थे, स्लीपर सेल वाले टेररिस्ट भी गोली चला रहे थे, तो क्रॉस फायरिंग के अंदर एमसी शर्मा जी को सामने से 2 गोलियां लगी, जिसके कारण उनकी एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ हो गई। ओके, नाउ मीडिया में क्या फोटो आती है? ये वाली, ये जो नीचे आप देख रहे हो ना न्यूज़पेपर, ये फोटो आती है मीडिया में। अब मीडिया वाले क्या कहते हैं? आप लोगों ने देखा था आज हुआ दिल्ली में एनकाउंटर, मारे गए कुछ छात्र, ऐसे बोलते हैं ना मीडिया वाले। पुलिस वाले मिले वहां, अपने ही साथी को ला रहे थे, कहते हैं कि गोली टेररिस्ट ने मारी जो कि छात्र थे। अगर गोली मारी सामने से छात्रों ने, तो खून आगे क्यों नहीं था? शर्ट पे खून आगे क्यों नहीं है? खून तो पीछे है। नाउ टू अ forensic scientist, it's a stupid remark. Because we all know as a forensic scientist that blood oozes out from the exit wound. हमेशा एंट्री वूंड छोटा होता है, एग्जिट वूंड बड़ा होता है, और एग्जिट वूंड से खून निकलता है। लेकिन जर्नलिस्ट ने क्या बोला? साथ में क्या चलाया? अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी की पिक्चरों के क्लिप्स, जिसमें उन्हें गोलियां लग रही हैं, और जहां गोली लगती है वहीं से खून निकल रहा है। तो जब हमारा फिल्म इंडस्ट्री इतनी एजुकेटेड है कि वो वहीं पे गोली लगती है, वहीं खून निकलता है दिखाती है, तो क्या दिल्ली पुलिस जनता को बेवकूफ समझती है? उन्होंने अपने ही पुलिस वाले को गोली मारी, एक फेक एनकाउंटर किया, और इसी वजह से वहां पे आदमी मर गया। Now this media cycle ran for the entire day. पूरा दिन ये मीडिया साइकिल चला। यही मीडिया साइकिल 2008 में, इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन न्यूज़पेपर था। हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आपको नहीं पता है, एक होता है लंबा सा होता है, मैम ने भी बोला था न्यूज़पेपर खींचो फट जाता है, होता है बड़ा होता है, ये 6 इंच से बड़ा आता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है वो, और उसको इतना लंबा होता है, कभी देखना म्यूजियम में दिखेगा, ठीक है। तो ये जो न्यूज़पेपर था उसमें भी आया, सबने पढ़ा, everybody was reading it, and that resulted into next day morning protest started happening in the बाटला हाउस एरिया, ओखला के अंदर पड़ता है ये इलाका दिल्ली में, और उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेंट्स थे स्टूडेंट्स, कि आपने हमारे साथियों को फेक एनकाउंटर में मार दिया, और रीजन था ये मीडिया साइकिल कि खून नहीं आया। Now at that point of time, Dr. T.D. Dogra, who was the principal scientist at AIIMS, who conducted this, who headed this post-mortem, he went to Sri Lanka to learn what is called as forensic animation, to explain the then court कि why खून आगे से नहीं निकला, पीछे से निकला। इंजरी एक्सप्लेन करने के लिए he went and he learned that. He came back, he created an animation, and that was the first time कि इंडियन कोर्ट के अंदर किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट ने एनिमेशन का यूज करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट को समझाई थी 2008 में। एआई नहीं था, जॉब नहीं गई, आज भी है। फॉरेंसिक मेडिसिन आज भी एग्जिस्ट करता है, जॉब नहीं गई। सो प्लीज ड्रॉप दिस कि जॉब चली जाएगी, नहीं जाएगी, डोंट वरी। मूविंग ऑन, शायद ऑन नहीं है। Why I am talking about animation? Because prior to that, keep on clicking please.
we used to explain injuries like this. The sketch you are seeing at the top is actually a post-mortem sketch which highlights the injuries, which tells कि injury कहाँ है. Now, we have students and the faculty members who are not from forensics. अगर आप लोगों को जज की कुर्सी पे बिठाया जाए और आपको ये बोला जाए कि जी ये इंजरी थी और इंजरी नंबर 12 की वजह से 13 एंट्री हुई और 14 में जाके गोली टकराई और 17 में जाके आदमी की मौत हो गई, कितना समझ में आएगा? I'm saying this because judges are also not trained in forensics, unfortunately. They are not trained how to read these reports. And that's how we show it to them in the court of law. Next, please. Can you, anybody sitting here, tell me, please go back one slide. Anybody can tell me how to read the scan? Can you tell me where is the blood? Where is the damaged organ? And we expect our judges, we expect our layman janta to understand this when it runs in the media cycle. And then create opinion, जिसको हम कहते हैं so-called media trial. आरिशी तलवार का खून उसके माँ बाप ने किया, मीडिया ट्रायल ने बोल दिया, कोर्ट जाए भाड़ में, एविडेंस हो ना हो. ऐसा नहीं है कि मीडिया ट्रायल गलत होता है. वी हैव प्रियदर्शनी मट्टू, वी हैव जैसिका लाल केसेस, गुड मीडिया ट्रायल्स हैपनिंग that resulted into reopening of those cases, necessary, needed. But then again, media trial is wrong. As ma'am said, अति हर चीज की गलत है, opinion नहीं होना चाहिए. If it would have been a cyber lecture, you would have seen an image here. If it is on WhatsApp, it's true. क्योंकि WhatsApp पे मैसेज आया है तो सच है. No matter what Renu ma'am is saying in the class, no matter, but WhatsApp ने बोल दिया कि पानी 80 डिग्री पे उबलेगा. रेनू मैम लेक्चर हॉल में चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि बेटा 100 पे उबलता है. नहीं, आंसर शीट में 80 ही आएगा क्योंकि WhatsApp के मेटा एआई ने बोला था. यही सच है ना? That's why there is WhatsApp University also. Okay. Can we go to the questions, please? Now, when we say certain words, okay, we don't understand them what we are actually talking about. Okay, अभी भी सबके दिमाग में चल रहा है कि क्यों घुमा रही हैं, क्यों घुमा रही हैं. Okay, आपके डीन सर ने भी बोला एआई का यूज करना है, चैट जीपीटी यूज करते हैं. ओके, तो चैट जीपीटी इस आंसर में नहीं आएगा. Again, please take out your cell phones and scan the code. The question for you is, how do you use AI? You all are young generation. Social media terms mein you all are Gen Zs. So how do Gen Z use AI? Let's see. Please scan. Just simply put it. Again, I'm saying it is anonymous, so don't worry. Okay? आपके टीचर्स को नहीं पता चलने वाला है. It's anonymous. Don't worry. Okay? Can we go to the answers, please? Thank you. Everything. Hacking. Okay? To study one night before exam. The most honest person who is sitting in this room is that student who has written this. सबसे सच्चा बच्चा है वो. Okay? Loan ideas. Okay? Generating image. Research. Calculation, editing, to make assignments. Now, मैम अगर आप देखोगे, ललित सर आप भी देख लीजिए कि पहले ट्रेडिशनल वाले में आंसर नहीं थे, एआई के यूज में आंसर है. ओके, टू मेक इमेजेस, एनिमेशंस घर के लिए यूज करते हैं. वेरी गुड. नाउ विद द शो ऑफ हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू डू ऑनलाइन शॉपिंग? How many of you scroll reels? Instagram पे reel.
How many of you watch YouTube shorts? Short video on YouTube. Okay? तो आप सभी लोग AI यूज करते हैं, ये किसी ने नहीं लिखा. Now do this. This is an exercise और कल रेणु मैम आपसे ये पूछेंगी क्लास में. Okay? Abhi, right now, take out your cell phone and search something of shopping, okay, or an upcoming sale or earbuds ka price or something like that on either Amazon, Flipkart or Instamart or Swiggy or wherever, Swiggy Mart or wherever you shop, whether it is Blinkit or anything. Just search. You know how I installed this app which is called as Meesho? I installed it because it used to come on my reels. I never wanted to install Meesho because my students gave me a very bad feedback कि मैम इसका product अच्छा नहीं होता है. They told me कि for phone cover it is okay, but for electronics it's bad. It's not worthy to buy from there. सस्ता है लेकिन अच्छा नहीं है. So now when you're doing that, once you turn it on again after 2 or 3 hours on your Instagram and you're scrolling your wall, you will find advertisements from Amazon, you will find advertisements from Blinkit, you will find advertisements from Zepto, you will find advertisements from Flipkart selling you those products. And not only just those products. For example, you have searched for earbuds, so they will sell you speaker also. They will sell you Walkman also. Vintage Walkmans. How is this happening? It's all AI. The entire algorithm of your social media, your Google searches, your purchase power, आपको लगता है कि आपको आज कॉटन के कपड़े खरीदने हैं क्योंकि मैम ने बोला. But if you will ask your female faculties, when they are looking for buying a sari, they will get advertisements everywhere on social media. यहाँ तक कि if you have logged into your Google Chrome handle with your email ID, the advertisements on Google that you will be receiving at every search will also include an advertisement of cotton. So don't think that ki I have turned off that microphone, so now nobody is listening. Everybody is listening. The moment you have your heart broken, सबके स्टेटस में सेंटी शायरी आती है, स्टोरीज में वो सेंटी शायरी आने लग जाती है. अगर क्रश किसी और का हो गया तो वो कुछ कुछ होता है कि रानी मुखर्जी और काजोल और शाहरुख खान की फोटो आ जाती है. हार्डकोर रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया लाइफ. ओके, बट देन यू वांट टू कम आउट ऑफ इट. योर फ्रेंड्स आर आस्किंग यू, छोड़ना, इश्क का आमिर खान का डायलॉग याद करो. Being a female, I have replaced one word as लड़का बस ट्रेन. एक आता है दूसरा जाता है, कोई बात नहीं, बहुत है, नो प्रॉब्लम. वैसे भी फीमेल पॉपुलेशन कम है, मेल ज्यादा है, डोंट वरी. बट योर सोशल मीडिया इज नॉट अलाउिंग यू टू कम आउट ऑफ इट. व्हाई? बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्टेड सर्चिंग दो सेंटी रील्स, दो सेंटी थॉट्स ऑफ द डे, वो सेंटी शायरी, सेकेंड डे 10 of them will pop up, next day 20, next day 50, the suggestions, and you will keep on clicking not interested, not interested, not interested. But still it will be piling on. Because your algorithm saw that in your cell phone you are searching this. So your state of mind is that. That's why this is very harmful, because it doesn't allow you to come out of that particular state. You are into, now, okay, we have some salaried employees here, okay? आज फर्स्ट है, प्लीज अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स खोलिएगा. आज से लेके 7 तारीख तक
from 1st to 7th, you will receive increase in the advertisement of purchasing websites. And the advertisement will include bag, travel bag, lunch boxes, water bottle, कपड़े. और अगर आपने गलती से कभी गाड़ी सर्च कर ली तो गाड़ी की एक्सेसरीज. That's how AI dictate your life. You think that no, we are boss of ourselves. No. Even your purchasing style is copied and dictated by AI. So why not let AI dictate how we do analysis? That's why I asked you, how do you think you use AI? मैंने एक भी एग्जाम्पल आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं दिया. It's all your morning till late night routine. And everything, every step is dictated by AI. Can we please go back? Thank you. Yeah. Now what I am talking about? I am talking about this. Next slide, please. AI. By definition, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन है. बट द इजीएस्ट डेफिनेशन इज टू मेक मशीन इंटेलिजेंट with the help of computer programs. And as you can see, whatever I have kept here is all what you are using every day. You use these social media handles. You use Amazon. Let's change it to Dream 11 from FIFA. Okay? That's Siri, Google, and that is the famous news anchor from Japan. Who reads news now? Okay? Please, next. अरे काम नहीं कर रहा है. Thank you. The advantage of AI. Some of you said that the process is slow. Some of you said that the process is long. Okay? That is what AI is going to present you with. AI gives you speedy results. किसी ने लिखा था ना कि एक रात पहले एग्जाम से पढ़ने के लिए हम AI का यूज करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि किताब खोलने में, फिर इंडेक्स में ढूंढना, फिर पेज पे जाना और ढूंढना कि वो कहाँ लिखा है टॉपिक जो मैम बता रही थी आज. That is requiring patience. I was sitting with ma'am and Upasana ma'am today, and we were discussing कि हमारे टाइम पे इंटरनेट नहीं था, हम लाइब्रेरी जाते थे, किताबें यूज करते थे. And that is, they've given us some patience. Okay? If we remember correctly, पेंसिल से हम कैसेट को रिवाइंड भी किए हैं. It used to take us half an hour to actually set up an internet connection. Imagine, half hour. आधा घंटा लगता था इंटरनेट ऑन करने के लिए, और गलती से अगर उसमें किसी का फोन आ गया तो फिर गया. तो टेलीफोन लाइन से इंटरनेट कनेक्ट होते थे. Okay, so you are living in a very glorious generation. Okay, but all these processes have given us that patience, that level, and the concept of rechecking what we are doing. But again, this patience is good also, but bad also. Okay. Justice delayed is justice denied, unfortunately. We cannot expect a person who has lost their loved one to be patience rakho, justice hoga. If we can turn off the recording for a minute, please. Yeah. Is the recording off? Hello, sir. Just for a minute. I'll tell you to turn it on. Just turn it off. Thank you. So this is a personal experience that I'm sharing. Unfortunately, one of my maternal aunt was killed by burning. Her in-laws killed her. Okay. The result came after 25 years in the year of 2000.
Many of the time when we are collecting the data, we have encountered that some of the evidences are missed. Even if we collect the data, we collect every single thing, the person who is sitting on the bench as a prosecutor is not able to explain the report. The person who has to give the judgment is not able to understand what you're trying to say as a forensic expert. आप आए, आपने फिंगरप्रिंट साइंस पढ़ लिया, फिंगरप्रिंट्स पढ़ लिया ना, हाँ, तो अब आप वहां पे ये बता रहे हो कि ये जो लूप है, ये लूप क्यों है, और इसके अंदर हमने जो 12 माइन्यूशिया आइडेंटिफाई किए हैं वो कौन से रिज नंबर पे हैं. तो जज या तो जो पीछे बैठे हैं उनकी तरह डोज ऑफ हो जाएगा, या फिर जो ये सेकंड रो में बैठ के फोन चला रही है इसकी तरह हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसे समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज. When we say artificial intelligence, since all of you are coming from science background, I can use the word artificial intelligence is an ecosystem. It's not an algorithm. It's an ecosystem. I have encountered many police officers who come to me and say कि मैम हमें ना AI में ट्रेनिंग करनी है, हमें AI एक्सपर्ट बनना है, कैसे बने? My question to them is always that have you ever learned a computer language? And they say, मैम लैंग्वेज से क्या सीखना है? AI तो सीखना है, हमें तो AI सीखना है. But how does AI works? The basics. Until and unless you know how to code, you will not be able to go to the top of the ecosystem. And why I am saying that it is an ecosystem, not atmosphere, not biosphere, not lithosphere. It's an ecosystem because ecosystem involves everything working together. That's how your AI works. Your AI works basically on 3 things. 1, deep learning, then machine learning, and lastly the AI. This deep learning involves what we refer to as data science. आजकल बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं ना सोशल मीडिया पे, डाटा साइंटिस्ट बनो, डाटा साइंटिस्ट बनो. So that data scientist is basically the first floor of reaching onto the Ambani's floor of his 50th floor building of uska ghar. That's data science, first floor. The foundation is laid by the language. Hindi, English nahi, computer wali language. Then you come to the data. Because if you don't have data, you cannot create or train a machine. That's why I emphasized on ma'am's presentation that she came up with data. Now, because we know that there is a data, we know that itne sare plants hai. Now we can go ahead कि इस plant में ये chemicals हैं. Okay. Now you put in that data into the machine. Now your machine start training. अब जैसे आप कर रहे हैं, आपकी training चल रही है. You all are learning, but then you will become a professional. So you are learning. You are machine learning stage, getting trained. Because we are giving you data, we are also telling you what's right, what's wrong. We are giving you answers also. And then at the end of the year or at the end of the semester, we gives you question. जिसके आंसर हम नहीं बताते हैं, आपको खुद लेना है. That is another model, which is the second stage of machine learning. To check कि whether the machine is learning correctly or not. कुछ हमने known plants दे दिए, उसमें से बता दिया known chemicals ये हैं. फिर हमने उसे unknown plant दिया, हमने बोला कि ये unknown plant है, ये इसका chemical structure है. अब बताओ इसमें कौन-कौन से हमें chemicals और alkaloids मिल सकते हैं. अगर उसने सही बताया तो आपका मशीन सही है. अगर उसने नहीं बताया तो आपको मशीन को और डाटा देना है. That's machine learning. Then comes your artificial intelligence. Now you are not telling the thing, not you are telling the plant. Now we are not telling the student that what you are supposed to do in your professional life.
We have thrown you out, we have given you a degree. Now you go ahead, fight for yourself in the professional world, which you will do because you were trained. You have experience. You have trained on model known, you have trained on model unknown. So when you are in the professional world, solving the cases by yourself, you are at the stage of artificial intelligence. वो अपने आप मशीन आइडेंटिफाई कर रही है कि ये पेड़ है, पौधा है, श्रब है, ग्रास है, हर्ब है. अपने आप उसके बाद उसके केमिकल प्रिडिक्ट कर रही है, अपने आप फिर बता रही है कौन सा अल्कलॉइड है. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ओके, नेक्स्ट प्लीज. Summarizing what I've just said. Okay, data science, you move on to the data science. From you go to the computer, from computer you go to machine learning, from machine learning you go to, अब ये नया वर्ड ले आए मैम, नेचुरल प्रोसेसिंग. ये क्या बीमारी है, अभी तो खत्म हुआ था. Now what is this NLP? This NLP is actually a mode of communication. आपने एक रोबोट तो बना दिया, आपने एक मशीन बना दी अब जो खुद से सीख रही है. अब वो टर्मिनेटर तो नहीं बनने वाली है. अब टर्मिनेटर मूवी तुम्हें पता नहीं होगी, आई एम सो सॉरी. हमारे टाइम पे आई थी, हमें पता है, ठीक है ना. मैम से पूछना बाद में कि टर्मिनेटर क्या था, वरना यूट्यूब पे यूज कर लेना. ओके, सो व्हाट इज दैट? रोबोट अपराइजिंग हो जाएगा. अब उसको रोबोट अपराइजिंग करने के लिए उसे रोकना भी तो है, तो उसे समझाएंगे कैसे? बात तो हमें करनी है ना. और डॉक्टर हैज टू कम्युनिकेट with the robot to give the medicine to the patient. Doctor is not going to sit there and do the coding. Doctor is going to use what we call it as, जो आपने बोला था थोड़ी देर पहले, question. चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं, तो वो चैट जीपीटी कैसे सीखेगा? आपको पता है, चैट जीपीटी से प्यार से बात करोगे, थैंक यू, ग्रेसफुली, यू विश इट गुड मॉर्निंग, ओके, तो पोलाइट आंसर्स भी आते हैं. We have heard this Twitter पे this Elon Musk has introduced, कौन सा था वो? Very good. उसका क्या फेमस हुआ था अभी? क्या किया था उसने? रूडनेस. रूडनेस नहीं, देसी भाषा में बताओ, वेस्टर्न यूपी में हो, दिल्ली की राज्य भाषा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना. इट्स एन AI टूल डेवलप्ड बाय पीपल इन US, but it is abusing in Hindi. It's doing that. How is it doing? Is because of NLP. Chat GPT, imagine करो तुमने क्वेश्चन पूछा उससे कि अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, वो आपको रिप्लाई दे रहा है 01010011231145 FGAHK. कितनी बार उसे यूज करोगे? नहीं करोगे. That's what NLP does. NLP is actually making ChatGPT or your any other algorithm or AI tool to talk. User interface. The thing is that why does your Internet Explorer closed? Why not Google Chrome? Microsoft Edge क्यों आया? बिंग क्यों नहीं हम यूज करते हैं? गूगल सर्च क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ द यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस गिव्स यू आइडिया. यूजर इंटरफेस इज कितना स्ट्रांगली आप उसको एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द टूल्स दे गो अवे. दे आर नॉट effectively able to survive in the consumer market. Okay, next please. नहीं, वापस जाओ, गड़बड़ हो गई. क्वेश्चन. अब एक मूवी तो मैंने बता दी, टर्मिनेटर. अब वो आंसर नहीं आना चाहिए. ओके, टेक आउट योर सेल फोन्स अगेन.
You have to give me examples of AI in movies or considering Gen Z, the OTT platforms. Scanned? Okay, please go back to the answers, please. देखो जल्दी जल्दी देखो AI का यूज OTT पे या फिर मूवीज में. नहीं आ रहा ना यार, नेट नहीं आ रहा. अच्छा ऐसे बता दो, वो तो मैंने दिखा दिया था. हाँ, चीटिंग नहीं करना. हाँ, रावण वेरी गुड, रोबोट, टर्मिनेटर और काल्की वेरी नाइस. और अरे वो शिवजी उठाए थे, कौन सी पिक्चर थी वो शिवलिंग वाली? बाहुबली. और टार्जन द वंडर कार वेरी नाइस. और वेरी गुड, राम सेतु. See, why I am giving you all these examples? Can we go back to my slides, please? Why I asked you this? I asked you this because if you will go back and you will see these movies, in these movies, the people who are working on or using AI are not computer programmers. They are all professionals in their own world. Okay? Now there is this web series available on, I really don't know, either on Hotstar, Netflix or Prime. मैं ये तीनों ही देखती हूँ, तो इन तीनों में से किसी पे होगा. Okay, it's under the name of FBI. मैं अभी अपने सिस्टम में से आपको दिखा दूंगी. Okay, and if you will see that web series, what they are doing is they have taken you to 2035, and then they are predicting crime. They have developed an algorithm. They are showcasing this, that in year 2035, there will be an algorithm which will predict crime. How it is predicting crime? It is taking up data from the traffic cameras and the other CCTV cameras which are available. It is getting it loaded. Data उनके पास पहले से है, कहाँ पे crime किस तरह का होता है. And then that particular software is actually analyzing not just that, but also the habits of the people, and then it is predicting that this person is trying to commit crime or may commit crime. We are using this right now also in identifying sleeper cells by the intelligence, which we call it as social engineering. We do that. We monitor social media handles and we do the analysis and we find out the sleeper cells. We find out the targeted websites which are selling or giving you the courses. Next, please. AI has got used. मैम ने आपको बताया कि AI का यूज होता है केमिस्ट्री में, AI का यूज एग्रीकल्चर में भी है. This particular application is called as Kisan Help. It is available to all our farmers. Government app है. उनको क्या करना है? They have to click the photograph of their crop. If they are finding कि यार मेरा जो पेड़ है जो मैं उगा रहा हूँ उसमें कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, लेकिन क्या दवाई दूँ क्या ना दूँ. So they have to click the photograph, upload it. रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका खेत कितना बड़ा है, ये वो डाटा वो पहले ले लेता है एप्लीकेशन. When that photograph is uploaded, within a fraction of seconds, the farmer gets to know कि which nutrient is required, how much it is required, कौन से ब्रांड का लेना है, कहाँ से लेना है, शॉप्स तक बताता है. और अगर उसमें कोई कीड़ा लग गया है तो उसका कैसे इलाज करना है, अगर वो क्रॉप सरवाइव करेगा या नहीं by the end of the season. Should the farmer terminate the growth of the crop at that stage or not? Whether this will survive or not. That much information is being given by this application. Next, please.
This is which was done using traffic cameras during COVID to test and check for the social distancing. Using traffic camera image processing, it was tested whether the people are following the laws that were laid down, the rules that were laid down or not. जहां जहां पे गलत है, it was creating a black red line, which was okay, it was showing green. For others, it was actually detecting whether the person is wearing a mask or not. And in the middle, it was used to give medication to those who were in the isolations. Next, please. Forensic में हम कहाँ जाएं? इसमें एक लेजर पॉइंटर है. Civil engineers use laser to calculate distance. We have right now in application laser cameras. What does these laser cameras do? You will see. We have I've already told you, we have 3D animations. 2008, it was there. We have what we call it as the concept of virtual reality. How many of you play games? Oh, video game, online game, phone में game. Games कितने लोग खेलते हैं? Outdoor gaming की जो बात ही नहीं कर सकते हैं तुमसे. फोन में बैठ के जो गेम खेलते हो, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, ये सब, ठीक है? These games are actually the results of virtual reality. Next is your augmented reality. How many of you have seen that Iron Man movie? Robert Downey Jr. के लिए मैंने देखी थी, आपने पता नहीं किस लिए देखी थी. I'm not a big fan of Avengers, I'm sorry. Okay. Just because I watch Iron Man because of Robert Downey Jr. Only reason. Now, if you remember, Iron Man has got a very transparent, big computer screen. Okay? In the initial movies, he used to have a joystick to move around on that big transparent screen. That is your augmented reality. In recent movies, he is able to pick it up with his hands wearing those censored gloves, and he is doing digitally. He's moving the objects on the screen digitally with that gloved hand. That is called as synthetic reality. And it's all there, it exists. Okay, next please. Now when we're talking about laser camera, चल नहीं रहा है. Okay, next please. This is what I'm talking about. If you enter in a crime scene and if the expert who is sitting in the forensic lab is able to see the position of the body hanging, is able to see the path that was followed, the judge is able to see where the body was, isn't a good thing? As a forensic expert also, you will be able to identify that what all possible trace elements could have been there. Next, please. What is 3D animation? If you can click once. Now, this is a case that happened in US. It was a case of an assault. This young girl was assaulted, okay, but her injuries were not explaining the fact that why these many injuries or how these injuries. So what the expert did is that on the basis of whatever information they received during the interrogation, they came forward with it to the expert. Expert, after reading out those interrogations and analyzing the injuries, the spread of evidences, recreated the crime scene using animation. Another click, please, for this railway accident. How many times you have heard trains have derailed?
आज उस ट्रेन की बोगी पलट गई। कभी किसी के दिमाग में ये आया है कि बोगियां तो इतनी सारी होती हैं, ये 2 और 3 ही क्यों पलटती हैं, सारी क्यों नहीं पलटती? कभी सोचा है? That's how we do accidental reconstructions. You check the path, you put in the entire material which is there, and then you explain how the derailing happens. Next, please. Next slide, next slide. Thank you. Next slide, please. This is a software which is available, which is basically working to explain how fractures happen. How fractures happen in automobile accidents. Okay, and this particular software is so efficient that it just not only explains that how the fracturing of the vehicle is happening, but also it explains what happened to the person sitting inside the aeroplane, how those injuries happened. Recently, a diplomat vehicle was hit. Unfortunately, the diplomat didn't survive, but his driver survived. Diplomat had fatal injuries irrespective of the fact that he was using the seat belt, whereas the driver escaped with minor injuries. Now the question arises कि हेड इंजरी हुआ है, इतना ज्यादा टकराया है डिप्लोमेट, कैसे हुआ होगा? How does these injuries happen? The person was having the seat belt. Postmortem report read कि the brain was actually hitting the skull membrane again and again, resulting into multiple brain hemorrhages and hematomas. How is it possible? Then there was a question raised whether or not the diplomat was wearing a seat belt. But the postmortem report indicated the bruising along the line of the seat belt. Then तो ब्रेन अंदर कैसे कूदी मार रहा था? कैसे गाड़ी के पलटने पर वो इतनी सारी इंजरीज हुई? ड्राइवर को क्यों नहीं हुई, उसी को क्यों हुई? नेक्स्ट प्लीज. If you can, okay, this is a digital representation of that particular accident. Okay, and if you will see multiple representations from multiple angles to explain the spread of evidences. Next, please. Next. Back. This one has to be played. Okay, multiple representations of the accidents, multiple angles. If I am sitting inside the vehicle, how I was seeing it as a driver. If I am crossing the street, how the accident would have appeared. If I was, say, 100 meters away, what I would have seen. If I would have been 300 meters away, what I would have seen. अगर मैं एक आई विटनेस हूं और मैं एम गिविंग द स्टेटमेंट दैट आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई दैट इट वाजंट ललित सर हु वाज कमिटिंग अ क्राइम, इट वाज कैन सम बॉय टेल मी हिज नेम? व्हाट्स योर गुड नेम? It was Aman who committed the crime. So was I at that particular distance? Am I actually looking at? So it is not just helping you in reconstructing the injuries that are being caused, it is helping you in actually verifying the clues. Accidents होते हैं, we all have traveled from expressway, peripheral expressway. There is a huge spread of evidence, road accident, because the cars are running at a speed of more than 120 kilometers per hour. 120 लिमिट है, हम इंडियंस हमें लिमिट से आगे चलने की आदत है. 120 किलोमीटर की स्पीड से कोई गाड़ी टकराएगी तो स्प्रेड ऑफ एविडेंस
is still kilometers away. Okay. Now, how do you search कि कितने किलोमीटर जाना है? Bomb blast is happening. What is the spread of the evidences? You can see the crater, you can see the center of the explosion site, but till where the explosions go? You know, people from the 9/11 attack has died after 45 days of the 9/11, not because they were in hospital, not because they were in the tower and they were rescued and they were the survivors because of the debris they died and all the dust particles they died. No, they were merely walking down the street. The shrapnels have entered their body. Slow and slow bleeding is happening. They have reached their home. They have lived their life. They went to their offices. They have grieved for the dead. But then when they die suddenly, when their postmortems were conducted, at that point of time, those shrapnels were found. Those debris particles were found. So the spread of evidence is kilometers away. Next, please. So when we are talking about virtual reality, as I said, you are using games. Okay. Now, imagine that you want to see the crime scene as it was. जज साहब को अब हमें दिखाना है कि एमसी शर्मा कहाँ खड़े थे, कहाँ स्लीपर सेल था और कहाँ था. तो अब हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम कोर्ट रूम में बोले कि प्रोसिक्यूशन का वकील एमसी शर्मा है, जो उनके 2 असिस्टेंट हैं वो ये वाले पुलिस वाले हैं, वो जो 2 असिस्टेंट हैं वो दीवार है, वो है, पुलिस वाले जो हैं वो गन है, और फिर हम उन्हें समझाएं. और जज साहब को क्या दिखेगा? 8-10 ह्यूमन फिगर्स. और what we can do is we can call our film entertainment industry and ask them कि ये पूरा स्टोरी है, इसको फिर से बनाओ और जरा दिखाना है हमें जज साहब को, जरा इसको स्टेज पे इसको दिखाओ. पर उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है क्योंकि डायरेक्टर की क्रिएटिविटी भी तो आएगी. So how we can do that? You all wear those goggles when you play those games of virtual reality. Okay. Please, can you click the next slide? This is a tool that has been that's been widely available. It's called New Scientist. You are simply looking at it by wearing the gloves. You can looking at what is the trajectory of the weapon, where all the evidences were there. You are looking at the people who are sitting, how they were sitting, and how all this can be viewed. And this is available in the market. It's a tool. Next, please. Next slide, next slide. Thank you. Augmented reality. As I said, augmented reality is an upper hand or one more hand above the virtual reality. Augmentation कर रहे हैं हम यहाँ पे, कुछ बना रहे हैं. So in augmented reality, what we do is that we train the model. Please click on the next slide. We train the model. Herein what this person has done is, the model has been trained into blood pattern analysis. Blood pattern analysis पढ़ा होगा आप लोगों ने, okay? उसके ऊपर the model has been trained. So this is forensic scientist. He have reached at a scene of crime. There is a dead body. The black one is the dead body, and you can say the gear he is wearing is your PPE kit, and the headgear which he is wearing is an augmented reality camera. Now what this camera is doing right now, it is recording कि injury यहाँ पर है, and at from what all places the expert is picking up the evidences. Now if you will see in the later half of the video, it's reflecting with a green arrow to the expert that where all the blood droplets are. So swab here. Since the person is wearing black, the dried blood is also cherry red color, black color. You're not able to see it properly. So
from where all you have to swab it is being pointed out with this aid. So the data of blood spatter with different injuries has been fed into the system, and then the system showcases to the expert कि कहाँ कहाँ पे blood है जहाँ जहाँ से आपको इसे collect करना है. Okay, that's how augmented reality works. As you can see, with the green arrow it is pointing. Okay. Now, let me tell you that all these softwares are already available. Okay. And in the beginning, the certain images that I have shown you, the certain animations that I have shown you are done by my PhD scholars. I'm releasing it out on the platform because they're about to submit their thesis. So now they're soon going to be the public knowledge. So this is somebody who has done it just a few years elder to you. Next slide, please. Next slide. Next slide, next slide. Next. Now, before we move on to questions, a very simple thing that I would like to share with you all. By the end of this month, we will be submitting to the government, BPRD, 12 Made in India tools or under the Make in India project related to cyber. And all of those tools are being made basing on artificial intelligence by postgraduate students of forensic sciences. Just like you all, they also didn't have the knowledge of coding, but during their masters, they studied it, and then they have developed tools relying on artificial intelligence. So it is not tough to do AI. It requires dedication. I learned during the COVID period. When I was at home, when it was lockdown, I learned it during COVID. So if at age more than 30 years I can learn, तो आपका तो अभी आराम से सीख सकते हो. Okay? So now the stage is all yours. I'm open to questions. If we can get that quiz, please. Last one. Yeah. Now, since ये conference है, and I said earlier also it is going to be a two-way street, I have shared some knowledge with you. Okay? I would request you all to please give me your feedback, your suggestions, so that if needed in future, I can use that for future works also. So I would be very glad if I can get those feedbacks. Thank you so much. And do we have any questions? So please, the stage is all yours. Okay. जब क्वेश्चन नहीं होते ना तो दो ही चीजें होती है, या तो सब समझ में आ गया या सब हाईवे हो गया. Yeah, please. First of all, it was a nice presentation. Thank you. Very clean topic you demonstrated here. Basically, मैं यहाँ पर forensic science instruments भी है और pure chemistry science भी है. Sure. जब हमारा जो resource person है, हमारे condition यहाँ पर present है. That's why I want to ask कि forensic में pure chemistry students दे देगा इसको. Okay. Now, ma'am, this is a very debatable topic, frankly speaking. Okay. अब अगर मैं बोलूँगी तो ये लोग बोलोगे कि हमारा साथ नहीं दे रही है. But it's okay. See, ma'am, when it comes to forensic science by definition is application of science and technology. So whatever science you are studying or whatever technology you are learning, we are using it for the purposes of justice. We are using it to solve crimes. We are using it to solve disputes of civil nature also. Okay. Now, when it comes to the chemistry students. Now, since they have got very strong basics in the chemistry field,
they have got strong basics in the instrumentation. So when it comes to forensic chemistry, there are actually three branches of forensic science that deals with the chemistry directly. One is toxicology, one is forensic chemistry, and lastly, it is explosives. So these are the three branches in which a student who has done chemistry can directly come into. Apart from that, a student who has done chemistry, because of the strong knowledge of the instrumentation, the working of spectroscopy, the working of the chromatography techniques, and SEM, TEM, and other higher instruments also, whether we call it as double MS or the single MS also. So because of the learning of the good interpretation, because whatever we are teaching, whatever I'm saying, I've picked it up from internet. Everybody knows. The criminals are also learning from internet. Okay, there are three cases noteworthy which has happened recently in Delhi. All of those three cases, on all those three cases, the criminals have said openly that we have searched the internet how to dispose of body. One of the ladies said, I learned how to kill my husband by watching that criminal some Hindi serial, Crime Patrol. Okay, and one of the criminals said that I learned how to which acid to use to destroy the body. Okay, so they are learning it from internet. So we need and they're also learning what are the ways, the search that was made in that chopped body case in Delhi, unfortunately, on the internet search that the boy has done was which knife to use to chop the body. Which knife to use. मतलब कौन सा चाकू इस्तेमाल करना चाहिए. Another search that we did was how to avoid forensic evidence. The person used the word forensic, that how I should evade forensic evidence. So the people are learning. People search what type of poisons are not detected by the forensic labs. So they are coming up with synthetic poisons. The unfortunate death of the late actress Devi. It was a result of the synergistic effect of the drugs that she was taking, the medicines she was taking, and then the alcohol. But when the analysis happened, analysis doesn't say the synergistic effect. Analysis doesn't say. So the interpretation has to be done. How does those new synthetic chemicals which are coming up are being used to kill people? So that interpretation, that new things, that can be done by a chemist. He or she has got good scope in forensic sciences, provided there is a envision of looking into things differently. Not just the positive, but the negatives also. And as we normally say, that a person who has got common sense and presence of mind can and will be a good forensic expert. Thank you. Do we have another question or should I wrap up? Okay. Okay. See, AI intelligence and human intelligence. See, AI in itself is, as I said, it's a language of 0 and 1. It lacks empathy. It lacks sympathy. अगर मैंने आपको ये बोला कि आप AI से प्यार से बात करोगे, आप उसको थैंक यू बोलोगे, तो वो भी आपको प्यार से थैंक यू बोल के बात करेगा. But the AI will not read into the emotional intelligence of a person. When we are talking about human intelligence, there are 8 different types of intelligences that we are talking about. Normally हम लोग इंटेलिजेंस को रेट करते हैं डिग्री से, मार्क्स से. वो इंटेलिजेंस नहीं है, वो नॉलेज है. Intelligence is how you survive in a society. What is your emotional quotient? What is your behavioral intelligence? What is your cognitive intelligence? Okay, how artistic you are, your cultural intelligence, your social intelligence. Okay, so there are 8 different types of intelligence which are there, which is completely absent in AI. AI works on knowledge. So it is much more lower when it comes to intelligence.
That is why there is a debate going on that it should not be called artificial intelligence, it should be called artificial knowledge system. Because you are giving knowledge, you are not giving intelligence. I hope I am able to answer your question. So I think that's all from my side. Okay. So I'm really happy to be here, specifically because Subharti is very close to my heart from past few months, couple of months, because as you can see on the top, Lalit sir is there, your faculty, and I'm very proud to say with that as Modi ji says ki 56 inch ka seena wala. So that's how I am feeling today, because I'm standing in front of my grand students, because Dr. Lalit, who is standing at the back, is one of my students, and I'm very proud of him. Thank you so much for making me feel so proud today. Thank you. And you all are his students, so you are my grand students. Okay, so thank you so much. Thank you, Renu ma'am. Thank you, Subharti, for giving me this opportunity to be filled with pride and honor in front of my students. Thank you. Now, as a mark of our gratitude and respect, we would like to present a token of appreciation and certificate of honor to our esteemed resource person, Dr. Vinny Sharma ma'am, in recognition of a valuable contribution and insightful session. And for that, I would like to call Ms. Pragati Jain ma'am and Dr. Ankita Agarwal ma'am to present the same. A warm round of applause, please. Thank you so much, ma'am. Your words have enlightened us and added great value to this conference. The next resource person I would like to introduce is Dr. Vishnu Chaudhary, sir, an associate professor and head in Department of Chemistry, DNPG College, Meerut. He holds a postgraduate degree from IIT Roorkee and a PhD from CCS University, Meerut. He brings with himself 20 plus years of teaching experience at the UG and PG level. Sir focuses on research on computational chemistry and spectroscopy, especially density functional theories applied to aniline derivatives. Sir has authored 15 plus research papers, 7 books, and 5 book chapters in reputed journals and with national publishers. Sir also actively participates in national and international conferences as a speaker and a delegate. Sir has been a life and fellow member of several professional chemical science societies, served key roles in NCC officer, NSS program officer, SVEEP coordinator, and IGNO assistant coordinator. Sir is currently associated as a paper setter, examiner, guest faculty, and approved counselor for universities including IGNO, CCSU, Subharti, and IIMT. Now, I would like to invite Sir up on stage for his insights on the topic density function theory, the basis of the most modern calculation. A huge round of applause for it. Thank you, Ms. Gauri. Respected dignitaries and dear students, good noon.
मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं हमारे काफ़ी थके थके से लग रहे हैं, क्योंकि 2 सेशन काफ़ी लंबे लंबे हुए हैं। देखिए, आप लोगों के लिए सेमिनार है, जैसे सेमिनार का कॉन्फ्रेंस का आपका टॉपिक्स है रिसेंट एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस। तो क्या क्या एडवांसमेंट हो सकते हैं वो आपके सामने डिफरेंट स्पीकर्स ने रखे। मैं आपको एक नए टॉपिक से परिचित कराना चाहता हूँ, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। इसका एक छोटा सा पार्ट है डेंसिटी फंक्शन थ्योरी। एक्चुअली आपने सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कोई भी कंपाउंड जो है ग्राउंड स्टेट्स में स्टेबल होता है, यानी कि एनर्जी मिनिमाइज होती है। वही एनर्जी हमें कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज निकालने के लिए काम आती है। नेक्स्ट ये मेरे प्रेजेंटेशंस के कुछ पॉइंट्स हैं, हिस्ट्री। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, अभी दोनों स्पीकर्स ने बताया कि कोविड में सारा कुछ पैरालाइज था, बंद था सब, तो वहाँ पे कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का रोल काफ़ी बड़ा। तो हिस्ट्री है डेंसिटी फंक्शन थ्योरी की 1920s से स्टार्ट होके, और सबसे बड़ा अचीवमेंट्स नोबेल प्राइज 1998 जो डीएफटी के डेवलपमेंट्स में से दिया गया। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, डेंसिटी फंक्शन थ्योरी का बेसिस क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपने क्वांटम केमिस्ट्री, टॉपिक टफ है, क्वांटम्स का सबसे टफ टॉपिक है केमिस्ट्री में। स्टूडेंट जो एमएससी के बीएससी के हैं वो जानते होंगे। तो क्वांटम केमिस्ट्री में आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ी हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस उसका डेंसिटी फंक्शन थ्योरी का बेस पॉइंट है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में आपने क्या हुआ, वन पार्टिकल्स या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए सॉल्व किया है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम्स में देखते हैं, जब मॉलिक्यूल्स आप देखते हैं, एक सिंपल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल का ही ले लें, तो आप में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स और 3 न्यूक्लियस उसमें होंगे, 2 H के और 1 ऑक्सीजन का। तो यानी कि मैनी बॉडी और मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स बन जाता है। जबकि हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या है, वो सिंपल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए सॉल्यूशन देती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया कि जो आइगन फंक्शन था श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का, वो हमने डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज कर दिया। इट मींस फंक्शन मींस फंक्शन ऑफ फंक्शंस। तो यानी कि हमने क्या किया, उस फंक्शंस को हम लेते गए, हर इलेक्ट्रॉन्स का, हर एक सिस्टम्स का फंक्शन बनाते गए, तो उसका फंक्शंस बनता चले गए। नेक्स्ट, थैंक यू। This is the many electron systems working object. As मैंने पहले बताया आपको, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए हमारे पास एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन होता है। बोन ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशंस यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स लाइट पार्टिकल है और न्यूक्लियस हैवी है, तो वहां पे आप दोनों को सेपरेट अलग कर सकते हैं। Cohen-Kohn theorems also important role. अब सिस्टम्स हमारे, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स तो सिंपल है, लेकिन हम जब
मॉलिक्यूल्स पे आते हैं, जैसे हमारे ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, तो वहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और बॉडी सिस्टम्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने डेंसिटी फंक्शन थ्योरी का यूज किया। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर टू पार्ट्स में मेनली डिवाइड होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स का तो हमें मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन जो है वो नहीं मिल पाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन अवेलेबल हैं, एलडीए है, जीडीए है, लोकल डेंसिटी अप्रोक्सीमेशन, जनरलाइज्ड डेंसिटी अप्रोक्सीमेशन। डेंसिटी फंक्शन थ्योरी वेव फंक्शन टू डेंसिटी फंक्शंस पे आ गए। तो हम हर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं अप्रोक्सीमेशन के। दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम। कंप्यूटर्स कहाँ है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स के बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे इसमें हमने यूज किया डेंसिटी फंक्शन थ्योरी में गॉसियन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हमने इसको कैलकुलेट किया। This theorem also play a very important role in calculating the density function theory energy. The external potential of the ground states energy is a unique function of electron density. Electron density function is a function of function. आवाज आ रही है? Electron density that minimizes the energy of the overall function is true ground state electron density. This is the energy function. Two electrons not only interacts via their electronic charge, also via their spin and natural repulsion and attraction. This is the exchange correlation function. Unknown is the exchange correlation function. इस unknown को हमें कैलकुलेट करना होता है, जो हम डिफरेंट Gaussian theorem से या Gaussian software से हम कैलकुलेट करते हैं। This is the common term scheme. Also use the density function. This is the practical methods जो हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। तो हमारे पास ये मेथड्स हैं जो हम बार-बार से करके हमारे एनर्जी। मैं छोटा सा प्रैक्टिकली एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, जो मेरे रिसर्च का पार्ट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ कि हमने कैसे से गॉसियन सॉफ्टवेयर से हमने इसको कैलकुलेट किया। दैट इज 7-chloro-4 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन एक कंपाउंड हमने सेलेक्ट किया और उस पे हमने डेंसिटी फंक्शन थ्योरी अप्लाई किया और गॉसियन सॉफ्टवेयर हमने यूज किया और उसकी एनर्जी और उसकी प्रॉपर्टीज हमने निकाली। ये सिंपल है कि क्यों मैंने इस कंपाउंड को सेलेक्ट किया था। ये दिस इज द यूजेस ऑफ दिस कंपाउंड। एक्सपेरिमेंटल हमने क्या किया, जनरली इस कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट का ऐसा कोई रोल नहीं है। सारा कुछ सॉफ्टवेयर पे काम होता है, तो आप एक लैपटॉप से अपने लैपटॉप पे भी ये काम कर सकते हैं। ये इसकी खूबी है, कुछ ही कह लीजिए, स्पेसिफिकेशन कह लीजिए। अदरवाइज लैब्स का काम नहीं है इतना, लेकिन ये छोटा सा काम लैब्स में हमें कराना पड़ता है, या फिर ये डाटा हमें कहीं से मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, इस थ्योरी को हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि जो प्रैक्टिकल डाटा अवेलेबल होता है। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि थ्योरी गाइड बट प्रैक्टिकल डिसाइड, प्रैक्टिकल इज फाइनल। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने इसका थोड़ा सा जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स हैं कि IR कहाँ से कराए, रमन कहाँ से कराए, UV कहाँ से कराए, ये कराए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे कराए। ये कंप्यूटेशनल डिजाइन जो सॉफ्टवेयर करता है HF DFT। और ये बेसिस पॉइंट्स क्या है, देखिए आपके जो आपने कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स लिया उसमें क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं।
वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वो उनका अरेंजमेंट ही क्या है, बेसिस सेट्स कहलाता है। तो जितना बेटर अरेंजमेंट कर पाएंगे उतना ही हायर बेसिस सेट्स कहलाएंगे और वो बेटर रिजल्ट्स देगा। That is the basis sets, mathematical representation of the molecular orbits within a molecule. This is the structure. आप इस सॉफ्टवेयर से क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन क्योंकि हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं गॉसियन को, तो गॉसियन व्यू में एक स्ट्रक्चर बन जाता है। आप स्ट्रक्चर्स में अपने तरीके से आप बना लेंगे। आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट चेंज करना हो, सब्स्टिट्यूएंट चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री मॉलिक्यूल्स की CS है, जिसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं होता, कोई सिमेट्री नहीं। एटम्स 18 है इसमें। वाइब्रेशनल मोड्स 3n-6 से आप निकालते हैं तो 48 है। प्लेनर और नॉन प्लेनर 33 प्लेनर है। प्लेनर मॉलिक्यूल्स जो एक प्लेन में आपके वाइब्रेशन मोड्स में आपके अवेलेबल होंगे। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर्स इसका देखा, तो बॉन्ड लेंथ आपने आपके सॉफ्टवेयर ने, आपके गॉसियन ने ये बॉन्ड लेंथ निकाल के दे दी। देखिए बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का एक ही टेबल है। बॉन्ड लेंथ मैंने दो बेसिस पॉइंट और दो अलग अलग टॉप थ्योरी पे निकाले, HF एंड B3LYP। HF 34, B3LYP अनदर लिंग योर और पॉर, ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे एक अलग फंक्शन दिया उनके नाम पे। तो देखिए जो ये कंपाउंड निकल गया है, तो इसमें हमें ये भी कंपैरिजन करना था कि कौन सा बेटर रिजल्ट देता है, HF और LYP। तो इसमें ये कंपैरिजन निकल गया कि LYP ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है हायर बेसिस सेट से। बोर्ड एंगल्स में भी वही है कि दोनों के साथ कंपैरिजन किया, निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे आपके अगर मैं पीछे की स्लाइड में चलूँ, ये देखिए एंगल्स अगर इसका देखें हम, मेरे पास ये रहा, अब देखिए एंगल, अगर हम इस कंपाउंड्स को देखें, इस कंपाउंड को देखें क्विनिनोल को, तो हमारे पास कार्बन के बीच में जो एक हेक्सागोनल का एंगल होता है वो क्या होता है 120। तो हमारे ये सी के बीच में अगर हम देखें, ये C5 C6 से 7 119.2 के करीब आ रहा है। तो ये काफी एडजस्ट करता है कि हमारी थ्योरी कितनी रेलिवेंट है रिजल्ट्स के। बॉन्ड एंगल्स, डिफरेंट बॉन्ड एंगल जो मैंने मार्क किए हुए हैं, यहाँ इस टेबल में सारे उनकी वैल्यू निकल के आई है, वो दिखाई है सब। वाइब्रेशनल एनालिसिस, देखिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने सभी ने पढ़ी, उसमें वाइब्रेशनल एनालिसिस, वाइब्रेशन मोड्स होते हैं। तो जो वाइब्रेशनल मोड्स जो अवेलेबल होंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स में, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, वैगिंग, टॉर्सन, रॉकिंग, सीजरिंग, ये अवेलेबल्स हैं। इसमें सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक सारे हैं। अभी थोड़ा सा आपको और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एंटी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ये सब आपने पढ़ा होगा BSc में, MSc में, सब जगह पर। ये रिप्रेजेंटेशन आप अपने कंप्यूटर्स में डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो चाहे आप MSc लेवल तक लगाएं, फिर BSc में, PhD में या हायर स्टडीज में, जो भी सॉफ्टवेयर में आप जिसमें भी काम करना चाहें करें। तो थोड़ा सा अगर इससे फैमिलियर हो जाएंगे तो ये चीजें आपके काम आएंगी। और जब लैब्स अगर अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे लैब्स नहीं है या आप लैब्स में काम नहीं कर सकते, तो आप अपने सिंपल आप अपने सिस्टम पे आपको एक सिर्फ लैपटॉप चाहिए, तो आप एक छोटा सा काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपका स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द FTIR स्पेक्ट्रम। A1 इज द एक्सपेरिमेंटल, मैंने कहा ना एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हमें उससे जो हमारे थ्योरी से आए डाटा HF से और DFT से, उससे मैच कराना है कि देखिए
कि यहाँ पे हमने जो काम किया है वो एक्सपेरिमेंटल से आ रहा है। तो ये डाटा आपको दिख रहा है कि करीब करीब सेम पीक्स आपको मिल रही है। दिस इज अ रमन स्पेक्ट्रम। रमन स्पेक्ट्रम में भी आप देख सकते हैं कि ये पीक्स जो है करीब करीब सेम मिल रही है। दिस इज अ टेबल। हमारा कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप में अगर आप देखें उसकी आईआर फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है, 300 3600 के आसपास। वो आपके पास एसिमेट्रिक सबसे ऊपर वाला जो आ रहा है वहां पे आ रहा है। ऐसे ही अगर हम एरोमेटिक्स कंपाउंड्स जो हमारे होते हैं उसमें बेंजीन रिंग की जो फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है 1500-1600 के आसपास, वो वहां पे भी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। लास्ट में इसकी पीडी है, पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने मैंने आपको वाइब्रेशन मोड बताए थे अभी, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, बेंडिंग, सीजिंग, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपका मॉलिक्यूल्स जो है आपका किस किस वाइब्रेशन मोड्स में एनर्जी कितना दे रहा है वो आपका शो हो रहा है। और ग्रेटर देन 10% हमने इसको लिया है, अगर उससे 10% से कम था उस वाइब्रेशन मोड्स का हमने छोड़ दिया है, यहाँ पे आपको शो नहीं किया। ये सारा सॉफ्टवेयर जो गॉसियन सॉफ्टवेयर आपको बताएगा, आपको इंटरप्रेट करना है। स्केलिंग क्या है? स्केलिंग मैंने इसमें किया है, ये स्केलिंग एचएफ फैक्टर्स के साथ और डीएफटी के B3LYP के साथ ये स्केलिंग यूज। स्केलिंग मींस आप एक स्केलिंग लगा दें कि जिससे आपका जो फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत बाहर है वो आपका एक साथ, लेकिन सभी पे ऑपरेट एक साथ होगी। ये अब डिस्कशन OH ग्रुप की स्ट्रेचिंग, इन प्लेन बेंडिंग, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, क्लोरो ग्रुप की स्ट्रेचिंग है, इन प्लेन बेंडिंग, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, ये आपको मैंने अभी बताया था। बेंजीन रिंग के जो आते हैं आईआर और रमन के 1600, 5, 1500, 1600 और 1500 के पास बेंजीन रिंग के वाइब्रेशन हमेशा आईआर में मिलेंगे आप। कार्बन कार्बन इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन से आपको दिख रहा है। ये सारे सॉफ्टवेयर में आपको, सॉफ्टवेयर में ये सब आपको करे हुए मिलेंगे और ऐसे ही आपको मार्किंग करके आपको पीडी शोज आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, सीएच वाइब्रेशंस, सीएच के दिखाएं से आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस में OH स्ट्रेचिंग। OH जब आपने अगर MSc के या BSc फाइनल के भी स्टूडेंट्स हैं, अगर BSc में आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है तो OH की जो वाइब्रेशन आती है, देखिए मैंने बताया 360-100 के आसपास वहां पे आती है। वहां पे हमारी स्केल हमने 3839 पे स्केल करके हमने फिर इसको क्या पीडी शोज 91% एनर्जी OH आउट ऑफ प्लेन। अब CCl क्योंकि इसमें क्लोरो है, 7 क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो उसकी स्ट्रेचिंग आपको दिखाई देगी। दिस वन इज अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन द HF कैलकुलेटेड वेव नंबर, एक्सपेरिमेंटल और HF जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट किया। दूसरे वाला प्लॉट है B3LYP और एक्सपेरिमेंटल। तो देखिए HF से बेटर वाला ग्राफ है B3LYP में, यहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन की तरफ है। तो दिस वन इज द बेटर रिजल्ट्स। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी जो कंपाउंड्स है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है इसका UV। A1 ये इसके ट्रांजिशंस हैं N to pi star, pi to pi star, जो आपके UV में ट्रांजिशंस होते हैं आपके। दिस इज मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, मॉलिक्यूल्स थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स आप उस मॉलिक्यूल्स के सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। मैंने निकाले आपको इसमें एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, रोटेशनल कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट।
अब ये सॉफ्टवेयर से निकले हुए हैं, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड है, प्रैक्टिकली आपके पास जो रिपोर्टेड है वो अलग है। तो जो इसमें मैंने स्टडी की है उसमें B3LYP 6311GDP पे आपके बेटर रिजल्ट शो विद टेम्परेचर्स के साथ ये ग्राफ है, डिफरेंट थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज के टेम्परेचर के साथ ग्राफ है। The results presented indicate that these theoretical calculations are reliable for the prediction of both infrared and Raman spectra for the medium-sized organic compounds. जब रिजल्ट्स की बात आई तो रिजल्ट्स में ये कंक्लूड निकल के आया कि ये जो कैलकुलेशंस की तो ये बेटर है, आप इनको यूज कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your insightful session. Now, as a mark of our gratitude and respect towards him, we would like to present a token of appreciation and certificate of honor. And for that, I would like to call Mr. Lalit Pawar, sir, and Dr. Abida ma'am to present the same. A warm round of applause, please. Thank you so much, sir. Now, the next person I would like to introduce you all is Dr. Upasana Devi ma'am, who is currently working as an assistant professor in the Department of Chemistry at Raghunath Girls Postgraduate College, Meerut. Ma'am brings with her 16 years of teaching experience in undergrad and postgraduate courses. Ma'am has also completed her MSc in Organic Chemistry from Meerut College in 2005. Ma'am has qualified UGC NET examination in 2007 and GATE examination in 2012. Dr. Upasana ma'am earned her PhD from Meerut College and ma'am has published many research papers in peer-reviewed and UGC care listed journals. Ma'am has actively participated in various workshops, seminars, and conferences. Ma'am has also presented research papers at 10 national and international conferences and seminars. Ma'am has contributed 5 chapters in the edited academic works, and her research interests include the synthesis of docking studies and antimicrobial activities of flavonoids. Dr. Upasana ma'am has guided many undergraduate student projects and ma'am is currently serving as a convener of the Innovation Council at her college. Ma'am has been an active member of the organizing committee for various orientation, refresher, and FDP programs conducted in collaboration with the UGC HRDC centers. Ma'am has also contributed to the publication of 2 patents. Now, I would like to call upon stage Upasana ma'am to enlighten us with her lecture, and the topic of her lecture is Computational Docking in Drug Design, Emerging Trends and Advancement. Please join me in welcoming ma'am. Thank you so much. First of all, thank you, Gauri ma'am, for such a warm welcome. Our students, आप थक गए होंगे बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस देखकर, तो स्लाइड्स तो मेरी भी बहुत ज़्यादा हैं, बट मैंने सारा कुछ देखते हुए थोड़ा उनको कमी कर दूंगी और कम टाइम में हम उसको फिनिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द फॉर्मल wish, good afternoon, everyone. It is a great honor to me to come over here for a one-day national conference on recent advancement in the field of science and technology.
Before start my presentation, I would like to begin by extending my heartfelt thanks to the Honorable Vice Chancellor of the Subharti University, Executive Officer Salya Raj Ma'am, Dean, Faculty of Science, Dr. Ravindra Jain, Vice Principal Dr. Shashikant Tewatia, and convener of the program, Professor Renu Mavi. I also wish to acknowledge the presence of our dignitaries and entire chemistry department who put their efforts to organize such a wonderful conference. And at the last but not the least, I also wish to acknowledge the presence of students and participants here today. I will appreciate your patience to listen many presentation one by one, back to back, and आपको एक दो और शायद क्लियर करनी पड़ेगी. Your enthusiasm and curiosity are the true spirit of this gathering. So today I am here to present my views, to express my views on the topic computational doping in drug design. It is one of the emerging trend and advancement. Before start my presentation, I would like to press the topic recent advancement in the field of science and technology. अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा उल्टा पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले साइंस की बात करते हैं, साइंस के बाद टेक्नोलॉजी, देन एडवांसमेंट एंड देन रीसेंट एडवांसमेंट. अगर हम 50-60 साल पहले की बात करें तो हम साइंस पढ़ रहे थे, साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, केमिकल कंपोजिशन पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, प्लांट केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे जो हमें 99% अपनी थ्रू आउट लाइफ में दिखते हैं. क्या क्या? लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, न्यूटन्स लॉ और बहुत सारे लॉज इस तरह के. जैसे जैसे टाइम बीता 1960s के बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई जस्ट टू मेक द साइंस इजी, जस्ट टू मेक द रिसर्च इजी. और उसमें से एक तो एग्जाम्पल मैं दूंगी, एग्जाम्पल मेरे वही होंगे जो आपने सुने होंगे. अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी was the great I would like to say achievement in the field of science. अगर बायोलॉजी की बात करें तो जेनेटिक biology was emerging that time. So as we entered in the 21st century and after the millennium, some advancement came here along with the already existing science and technology. These advancements are basically, we can say, AI की बात हम सब कर रहे हैं. तो AI इमर्ज हो रहा था, रोबोटिक्स इमर्ज हो रहा था अगर हम मिलेनियम के बाद बात करते हैं. अब ये सब कुछ हम जान चुके हैं, आ चुका है हमारे पास, और जो ऑर्डिनरी साइंस, ऑर्डिनरी रिसर्च मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स हम यूज कर रहे थे उनको हमने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और एनहांस किया. बट एक नया टर्म जुड़ जाता है, रीसेंट एडवांसमेंट. अभी रीसेंट क्या है? एडवांसमेंट हम सब सुन रहे हैं. रीसेंट मीन्स जो अभी विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 ईयर, विद इन अ 5 ईयर, या हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं लास्ट 1 डेकेड की अगर हम बात करें. तो जो भी टेक्नोलॉजी और बेसिकली AI सब में यूज हो रहा है, हम यूज कर रहे हैं, तो उनको हम रीसेंट एडवांसमेंट का नाम दे देते हैं. तो ऐसे ही एक टूल पर मैंने आज अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है. थोड़ा सा बेसिक है क्योंकि स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए मैंने इसको रेडी किया है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Are we having any operator for this? These are the contents of my presentation. I would not like to read out all these. We will take it one by one. First of all, drug design. Everybody knows drug design. ये word सबने सुना है. Drug design जानते हैं? Drug design की अगर बात करें तो drug का यहाँ पर मतलब दवाई, मेडिकेशन से है. समझ गया? ड्रग को हम दूसरी तरह भी सोच लेते हैं. ड्रग यहाँ पर क्या है? प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जिसको
ऑथेंटिकली या कहीं साइंटिफिक लैंग्वेज में ड्रग ही बोलते हैं। ड्रग डिजाइन क्या होती है? लिखा है द इन्वेंटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू मेडिकेशन बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ अ बायोलॉजिकल टारगेट। जब भी हम कोई ड्रग डिजाइन करते हैं तो हमें उसकी एप्लीकेशन के बारे में पहले सोचना पड़ता है कि टारगेट क्या है, ड्रग क्या है। सीधी सीधी बात कहें, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, केमिकल कंपाउंड ड्रग है और टारगेट क्या है जिससे उसको काम करना है। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि टारगेट की नेचर क्या होती है? कंपाउंड्स होते हैं ना, बहुत तरह के कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, नेचुरल कंपाउंड्स भी होते हैं। तो टारगेट की नेचर क्या है? टारगेट किस तरह के होते हैं? दे आर प्रोटीनस इन नेचर। कैसे होते हैं? प्रोटीनस। अगर हम फंगस की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, I would like to do it on your dupatta. Okay. Can you speak? अगर हम बात करते हैं माइक तो Mic ना also. ओके जस्ट फॉर रिकॉर्ड। अगर यस टेक्स टाइम ना Yeah. It is not working. कोई बात नहीं, आप इसको वर्किंग करिए। अगर हम बात करते हैं टारगेट की, तो टारगेट में कोई फंगल स्ट्रेन हो सकता है। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल आपको बताऊंगी। कोई बैक्टीरियल स्ट्रेन हो सकता है। बहुत सारे हम एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल दवाइयां यूज करते हैं, सुनते हैं, कलेक्टिवली इट इज नोन एज एंटी माइक्रोबियल। हम एंजाइम पे काम करते हैं। ऑल आर प्रोटीनस इन नेचर एंड प्रोटीन्स शो 3 types of structure, as you all know. We will talk here about the quaternary structure of protein. किसी भी प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 4 चेन्स होती हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, तक पढ़ के आए हैं, एंजाइम एनालिसिस, प्रोटीन सब पढ़ा है आप लोगों ने। तो ड्रग डिजाइन जो है उसका टारगेट है कि एक मेडिकेशन हमें बनाना है जो कि हमारे डिजायर टारगेट के लिए सुटेबल हो। ओके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे ड्रग डिजाइन के? किसी भी ड्रग को हम क्यों डिजाइन कर रहे हैं, क्या पर्पस है? थेरेपेटिक टारगेट आइडेंटिफिकेशन। भाई जो हमारा टारगेट है उसको वो इजीली सर्च कर पाए, क्योंकि ड्रग को सर्च करना होता है बॉडी में जाकर या उस टारगेट पे जाकर। एडवर्स इफेक्ट्स, जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम से कम हो। टॉक्सिकोलॉजी से अगर स्टडी करें तो ड्रग में टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। ड्रग रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, ड्रग का जो टाइमिंग होता है टारगेट के साथ रिएक्ट करते हुए, तो वो रेजिस्टेंस फार ऑथेंटिक होनी चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स पे वो फिट हो जाए ड्रग। उसकी जो एफिकेसी है और सेफ्टी असेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अगर हम कोई भी ऐसी ड्रग बनाते हैं जो डिसइंटीग्रेट हो सकती है विद द टाइम, तो वो यूजफुल नहीं होगी हमारे लिए। रीडिंग द स्टेप इन्वॉल्व इन द रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाए ड्रग को, वो बहुत जरूरी है। और जब सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरेगी तभी अप्रूवल मिलेगा। तो दीज ऑल आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ड्रग। लास्ट वन, स्टडी ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ड्रग जो बना रहे हैं, हम नया कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हर बार। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपाउंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करके, मॉडिफिकेशन करके, या फिर हाइब्रिड केमिस्ट्री के थ्रू 2 तरह के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके, उनके फीचर्स को स्टडी करके हम एक नई ड्रग डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ड्रग डिजाइन। बेसिकली ड्रग जो डिजाइन होती है उसमें 2 चीजें होती हैं, लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन और स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन। क्या मतलब है इनका? लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन कब होती है? देखिए हमारे पास 2 चीजें हैं, बार बार मैं बात करूंगी। एक तो टारगेट है और एक आपके पास लिगेंड है। लिगेंड यहाँ किसको कह रहे हैं? किसी भी केमिकल कंपाउंड को जो कि मेडिकली ड्रग की तरह ट्रीट हो रहा है। और टारगेट किसको कह रहे हैं? जिसपे उसको काम करना है, दैट इज डिजीज। 2 बातें समझ में आ रही है, टारगेट एंड लिगेंड। टारगेट को रिसेप्टर भी कहेंगे, तो ये टर्म मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। तो एक तो होता है लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमें टारगेट का स्ट्रक्चर पता नहीं होता, जैसे कि कोविड की बात करें, हमें टारगेट का स्ट्रक्चर फाइंड नहीं हो पा रहा था ना? कौन सा स्ट्रेन है,
बाबा म्यूटेशन हो रहा है, तो उसके स्ट्रक्चर पर हम नहीं जा पा रहे थे। तो ऐसे केस में जो ड्रग हमने बनानी है, जो कंपाउंड सिंथेसाइज करना है या डिजाइन करना है, जिसको हम लिगेंड कह रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन एंड द सेकंड वन इज स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन। सेकंड केस में हमें टारगेट का स्ट्रक्चर पता होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता होता है, और उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लिगेंड डिजाइन करते हैं, ड्रग डिजाइन करते हैं। क्लियर टू ऑल? नाउ द ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिजाइनिंग के बाद एक टर्म आती है ड्रग डिस्कवरी। दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? जानते हैं आप? ड्रग डिजाइन एक वर्ड है, साउंड कर रहा है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमारी प्लानिंग में है, हम पहले से प्लान करके बैठे हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। बट ड्रग डिस्कवरी इज नॉट ऑलवेज done by the planned method. It can be done by random screening, non-random screening, drug metabolism studies, and clinical observation. During these processes, if we find any of the compound can be work as a drug, जो कि हमने उस पर्पज से उसको चेक नहीं किया था, but accidentally it behaving like a drug, so it is called drug discovery, जो मोस्टली एक्सीडेंटल होती है। हम किसी और प्रॉपर्टीज के लिए उसको डिजाइन कर रहे थे, बट वो कोई और प्रॉपर्टीज हमें शो कर रही है। दैट इज कॉल्ड ड्रग डिस्कवरी। दीज आर द स्टेप्स ऑफ ड्रग starting synthesis to approval. Drug discovery, clinical testing and approval of production. It takes many time. Can you tell me how many years it takes? कोई भी ड्रग को बनने में और अप्रूवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगता होगा? कोई भी मिनिमम टाइम आप बताना चाहेंगे? यस, 5 years, 3 years? It takes 15 years to complete entire process. From designing to post-approval, it takes 15 years. It is a time-cumbersome process, consume a lot of time, lot of money and resources and manpower. So here are the steps in flowchart from target identification to post-approval drugs. लिमिटेशंस ऑफ ड्रग डिजाइन। जब भी हम कोई ड्रग डिजाइनिंग की बात करते हैं तो क्या लिमिटेशंस हैं वहां पर? इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ डिजीज मैकेनिज्म। जिस डिजीज को हम सोचकर ड्रग डिजाइन कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म हमें प्रॉपर वे में पता होना चाहिए, और जब तक वो मैकेनिज्म हम जानते हैं और वो ड्रग बनकर आती है, वो मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। लिमिटेड टारगेट ड्रग एबिलिटी, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अनप्रिडिक्टेबल क्लिनिकल आउटकम्स। क्लिनिकल आउटकम्स मैन हैंडलिंग है, और जहां हैंडलिंग की बात आती है वहां पे गलतियां हो सकती हैं। तो ये जो ट्रायल्स हैं ये अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। डाइवर्सिटी इन पेशेंट पॉपुलेशन। 15 साल में जिस पेशेंट पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ड्रग डिजाइन करने का सोचा था, वो 15 साल बाद तो चेंज हो जाएगा ना। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। जो बायोलॉजिकल सिस्टम है दैट शोज म्यूटेशंस, और स्पेसिफिकली प्रोटीनस नेचर में जितने भी हमारे एंजाइम की बात करें, फंगल स्ट्रेन, बैक्टीरियल स्ट्रेन, ऑल शो म्यूटेशंस इन इट्स बायोलॉजिकल सिस्टम। सो वो स्टेबल ही नहीं है। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स विल बी फेस इन ड्रग डिजाइनिंग। Now the QSAR, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अभी तक जो मैंने बेसिक बातें आपको बताई, ड्रग क्या होता है, ड्रग डिजाइनिंग क्या है, ड्रग डेवलपमेंट क्या है, सब जानते हैं आप, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। एक लेमन भी बता सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का टाइम है, तो सब दवाइयों और ड्रग के बारे में और रिसेंटली क्या चल रहा है सभी जान रहे होते हैं। अब ये QSAR क्या है? QSAR इज डेवलप्ड बाय द हैंस, कॉर्विन हैंस। इट इज ही वाज अ केमिस्ट
developed QSAR in 1969. It is basically computational or mathematical modeling methods. It is used computers by using mathematical equations to reveal the relationship between ligands, that is drug, and target, that is protein. QSAR is a computational modeling techniques और इसके बहुत सारे फील्ड हम पढ़ते हैं. जब भी QSAR की बात करते हैं तो बेसिकली दो कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी. मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर लिगेंड की बात करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी टारगेट की बात करती है. आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है. जब भी हम लिगेंड की बात करेंगे जिसको हम सिंथेसाइज करेंगे, मोस्टली लिगेंड सिंथेसाइज होता है और उसको स्टडी करेंगे कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में, तो हमें क्या फीचर्स उसके पता होना चाहिए. अभी मुझसे पहले विश्रुत सर डीएफटी पे आपको कुछ समझा कर गए थे. तो डीएफटी इज वन ऑफ द टूल दैट इज यूज्ड इन मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर. क्योंकि डीएफटी क्या बताता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, टोपोलॉजी क्या है, कैरेक्टराइजेशन, स्पेक्ट्रल कैरेक्टराइजेशन, आईआर, एनएमआर क्या बता रहा है उसके बारे में. इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टर दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्या रोल है उसका, शेप किस तरह की है, ओरिएंटेशन क्या है, अगर हम उसको डिफरेंट डायरेक्शन में 3D स्ट्रक्चर में कंसीडर करते हैं तो. बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इट इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ QSAR. बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करेंगे तो प्रोटीन की बात करेंगे, टारगेट की बात करेंगे. टारगेट पे जब काम होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विल अटैक टू द टारगेट, तो वहां पर कुछ टर्म्स स्टडी करनी होती है, कुछ टर्म कंसीडर करनी होती हैं. दैट दीज आर इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, लीथल डोज, इफेक्टिव डोज, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, इनहिबिशन कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ. ये सारी चीजें हमें लीगेंड के रेस्पेक्ट में पता होनी चाहिए कि कितनी अमाउंट लीथल डोज में जाएगी, कितनी अमाउंट इनहिबिट करेगी ग्रोथ को, चाहे वो फंगल ग्रोथ है चाहे बैक्टीरियल ग्रोथ है, और कितनी अमाउंट आपकी हाफ लाइफ अगर उसकी निकालें तो वो भी निकाल सकते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ computer-aided drug designing, all of you know. Basically, computer-aided drug designing covers 2D, 3D modeling of the ligand molecule as well as the target molecule. Accuracy, efficiency, collaboration, simulation and analysis. जब ligand और target बन गए, रेडी हो गए, स्टडी कर लिया, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लिया, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पहले से रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमने देख लिया, तो हम उन दोनों की क्या कराएंगे, मॉडलिंग कराएंगे, उनको रिएक्ट कराएंगे वर्चुअली, जिसमें ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काफी एक्यूरेट है, एफिशिएंटली काम करती हैं, कोलैबोरेशन मींस बहुत सारे टूल्स काम करते हैं, और फाइनली जो रिजल्ट है उसको हम सिमुलेशन की फॉर्म में एनालाइज करते हैं. एप्लीकेशंस क्या हैं सब जानते हैं, ड्रग फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, केमिकल स्ट्रक्चर एनालिसिस, pharmaceutical packaging design, lab equipment design, quality control and validation. Now after the drug designing, क्योंकि हम डॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक टर्म आती है फार्माकोफोर. व्हाट इज दिस फार्माकोफोर? आप किसी भी कंपाउंड का कोई स्ट्रक्चर लेते हैं, कोई भी कंपाउंड, आप कोई कंपाउंड इमेजिन कीजिए, बहुत इजीली मैं दे रही हूँ आपको. आप बीटा नेप्थोल ले लीजिए, बीटा नेप्थोल में 2 बेंजीन रिंग दिखती हैं फ्यूज्ड, और सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, OH ग्रुप होता है. बीटा नेप्थोल आपको समझ आ गया. अब बीटा नेप्थोल की किसी भी पोजीशन पे आप फर्दर सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, कोई किसी भी पोजीशन पे जो भी हो सकता है पॉसिबल, मैं लेमन की तरफ से यहाँ पर बात कर रही हूँ, किसी भी पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा लीजिए, फर्दर फिनाइल ग्रुप के अंदर सब्स्टिट्यूशन करा लीजिए, बहुत सारी चीजें आप करा सकते हैं, और इस तरह बहुत सारे डेरिवेटिव उसके बना सकते हैं. तो फार्माकोफोर बेसिकली क्या होता है? फार्माकोफोर होता है कि नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स में से आप एक पर्टिकुलर पार्ट चूज कर रहे हैं. उस पर्टिकुलर पार्ट में कुछ एटम्स होंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, कुछ हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स होंगे, उसके अंदर आपके हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स होंगे,
तो इनका कॉम्बिनेशन देखकर हम एक मॉडल तैयार कर लेते हैं एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड का, दैट इज कॉल्ड फार्मेकोफोर। ये एक सिंगल कंपाउंड के लिए भी हो सकता है और जो सीरीज ऑफ डेरिवेटिव्स है उसके लिए भी हो सकता है। तो फार्मेकोफोर ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़े से स्ट्रक्चर में से एक छोटा सा पार्ट आपने डिसाइड कर लिया कि जो सबको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट है ना सबको रिप्रेजेंट कर देता है, उसके बेस पे हम चल देते हैं कि इतना इतना डिफरेंस होगा एटॉमिक नंबर में। तो लाइक दिस फार्मेकोफोर चूजन इज एन इम्पॉर्टेंट टूल, इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द ड्रग डिस्कवरी। It is the example of a pharmacophore benzodiazepine that is showing docking with GABA receptor, that is a proteinous in nature, target specifically. Here I have shown some examples. All are flavonoids. अभी मैम ने फर्स्ट लेक्चर में आपको flavonoids बताए थे. These are secondary metabolites extracted from the plants. So ये क्लासिफिकेशन है फ्लेवोनॉइड का ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द पायराइन रिंग। पायराइन रिंग समझ रहे हैं, शुरू के मॉलिक्यूल में एक बेंजीन रिंग के साथ एक रिंग है जिसमें ऑक्सीजन है 2, ये पायराइन रिंग है। इस पर सब्स्टिट्यूशन लगाने से हम इसको क्लासिफाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेंजीन और पायराइन रिंग है उसके साथ फिनाइल लगा है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इस पूरी सीरीज के लिए फार्मेकोफोर का काम करेगा। गॉट इट? फार्मेकोफोर क्या होता है मुझे लगता है समझ आ गया होगा। तो फार्मेकोफोर मतलब सिलेक्शन अ पार्ट विथ पर्टिकुलर एटम्स, फंक्शनल ग्रुप्स, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स, हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स, जो कि हमें यूज करना है फर्दर स्टडीज में। नाउ द डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब होता है 2 चीजों को डॉक कराना। आपने लॉक एंड की मैकेनिज्म पढ़ा होगा एंजाइम्स में, पढ़ा है सबने? कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा लॉक एंड की एंजाइम्स। क्या होता है इसमें? 2 चीजें हैं, सबस्ट्रेट है, रिसेप्टर है, ठीक है, और आपका कोई भी कंपाउंड है। दोनों की जो एक्टिव साइट है उस पर इस तरह के ग्रूव्स हैं। अगर ताले चाबी की बात करें तो ग्रूव्स हैं। ताला क्या हो गया, लॉक क्या हो गया, आपका प्रोटीन टारगेट, और की क्या हो गई, लीगेंड। जा रही है ना अंदर, फिट हो गई है ना, क्योंकि बाइंडिंग साइट्स मिल गई हैं उसको। बट इट इज वन डायमेंशनल डॉकिंग। वन डायमेंशनल अगर चाबी की बैक साइड से ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो डॉकिंग क्या है? लॉकिंग ऑफ 2 थिंग्स जो फिट हो जाए एक दूसरे में। तो इन केमिस्ट्री डॉकिंग, मॉलिक्यूलर डॉकिंग इज अ कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज्ड इन द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर बायोलॉजी एंड ड्रग डिस्कवरी। तो यहाँ पर एक फिगर बनी है जिसमें ये टारगेट है ब्लू कलर में, और जो एक लीगेंड बना है उसका वो 2D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है बेसिकली, और दोनों को डॉक करते हुए दिखाया जा रहा है। डॉकिंग के लिए बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं बेसिकली। ये जो लीगेंड आपने बनाया है, जो टारगेट आपने सेलेक्ट किया है, ये ऐसे ही यूज नहीं होते हैं, इनके भी स्टेप्स होते हैं। उसके बाद जो दोनों को डॉक कराते हैं उसके भी टूल्स होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ डॉकिंग। बेसिकली 3 तरह की डॉकिंग होती है। एक जो होता है आपका लीगेंड, केमिकल कंपाउंड, अगर मैं सीधे बोलूं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट ज्यादा है तो लीगेंड होता है, और इधर भी अगर लीगेंड है यानी कि लीगेंड लीगेंड डॉकिंग। दैट मीन्स हम कोई केमिकल रिएक्शन डिजाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग वन केमिकल कंपाउंड एंड अनदर केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई ना, तो हम कोई केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। बहुत एक्यूरेटली यूज नहीं हो रही है, बहुत अभी इसके ऊपर एप्लीकेशंस नहीं है, बट ये हो सकती है। थोड़ा रिग्रेस है, लेस एक्यूरेट है, और इसके लिए अभी टूल्स अंडर द डेवलपमेंट है। नेक्स्ट होती है लीगेंड प्रोटीन, अभी जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। लीगेंड कोई भी केमिकल कंपाउंड, टारगेट कोई भी प्रोटीनस कंपाउंड। तो लीगेंड और प्रोटीन के बीच में डॉकिंग, जो कि बहुत कॉमन है और इस पर सबसे ज्यादा काम चल रहा है। बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं जो कि वैट लैब से मैच करते हैं। वैट लैब समझते हैं आप? जिस चीज को हम मॉडलिंग के थ्रू समझा रहे हैं वो हमारी लैब्स में होता है ना काम। जो हमें ज्यादा ऑथेंटिक लगता है ये हमें वर्चुअल लगता है, तो ऑथेंटिक काम हम वेट लैब को मानते हैं। तो वेट लैब से मैच करते हैं, यानी वेट लैब से जाने से पहले हमें अगर डॉकिंग करनी होगी
तो ये हेल्प करेगी। एंड द थर्ड वन इज प्रोटीन प्रोटीन डॉकिंग, दैट इज टारगेट टारगेट डॉकिंग। इस पर भी अभी बहुत ज्यादा वर्क नहीं है, तो सबसे ज्यादा वर्क जो है लिगेंड प्रोटीन दैट इज रिसेप्टर टारगेट डॉकिंग पर ही चल रहा है। और ये डॉकिंग को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल डॉकिंग। व्हाट इज रिजिड डॉकिंग? अगर मॉलिक्यूल वन डायमेंशनली स्ट्राइक करता है दूसरे से तो ये रिजिड डॉकिंग होती है। और अगर मॉलिक्यूल के अंदर ओरिएंटेशन करा सकते हैं, आप समझ रहे हैं, ओरिएंटेशन करा सकते हैं बाय यूजिंग द टूल, मॉलिक्यूल को रोटेट करा सकते हैं, प्रोटीन टारगेट उसको रोटेट करा सकते हैं, उसको ग्रिड उसका ग्रिड चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द XYZ डायरेक्शन। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ डॉकिंग कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोज हमें मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल डॉकिंग। मेथडोलॉजी ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग, क्योंकि हम कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं तो कंसेप्ट क्या है और क्या एप्लीकेशंस होती है इसकी बात कर रहे हैं। अगर इसको वर्कशॉप की तरह देखा जाए तो हम इसमें सारे टूल्स और स्टडीज बताते हैं, बट हियर वी आर हियर फॉर टू नो अबाउट द मॉलिक्यूलर डॉकिंग। तो इसमें दो स्टेप होते हैं, एक लीगेंड के पर काम करना होता है और दूसरा प्रोटीन पे काम करना होता है। लीगेंड मतलब केमिकल कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें केमिकल कंपाउंड का 2D स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आप लोगों ने कोई केमिकल स्केच टूल्स सुने होंगे, कैमड्रॉ सुना होगा, मार्विन स्केच टूल आप देख रहे होंगे, बहुत सारे टूल्स होते हैं, कई बार सिंपल असाइनमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं उनको। तो वहां से हम मॉलिक्यूल का, अपने लीगेंड का, अपने केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके साथ ही उसको कुछ फैब्रिकेशन भी करते हैं। फैब्रिकेशन मीन्स उसमें से कुछ चीजें डिलीट करनी होती हैं, वो हमें लिटरेचर और रिव्यू से पता चलेगा हम किस लीगेंड पे काम कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या डिजायर्ड क्वालिटीज चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो उस बेस पे उसको क्लीनिंग करते हैं बाय द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, उसके स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करते हैं, चार्ज उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो प्रोटीन के लिए हो गया। और लीगेंड के लिए उसका 3D स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं और एनर्जी मिनिमाइजेशन, ये सब सॉफ्टवेयर्स और टूल्स की हेल्प से हमें डेटा मिल जाता है। नाउ द टाइम इज डॉकिंग। लीगेंड और प्रोटीन जब डॉक करते हैं तो उसके बाद बाइंडिंग साइट आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे की रास्ता ढूंढेगी लॉक में फिट होने के लिए। लाइक जो लीगेंड है वो साइट ढूंढेगा, एक्टिव साइट्स जिसपे जाके वो फिट हो सके। नहीं मिल रही है, रोटेट करिए प्रोटीन को, नहीं मिल रही है, रोटेट करिए लीगेंड को। बाय द डिफरेंट ओरिएंटेशन, रोटेशन एंड बाय चेंजिंग द पोज यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट्स। देन उसके बाद रिजल्ट दो तरह से इसका हम स्टडी करते हैं। एक तो स्कोरिंग बोलते हैं इसको, इसमें जो बाइंडिंग एफिनिटी है, एक टेबल मिलती है जिसमें बाइंडिंग एफिनिटी हमें पता चल जाती है और उसका एक स्केल होता है, वो मैं यहाँ नहीं बता रही। और पोस्ट डॉकिंग एनालिसिस में सिमुलेशन या एमडी सिमुलेशन की तरफ हम चले जाते हैं। ये कंपाउंड है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है आपको दिखाने के लिए। इट इज द फ्लो चार्ट ऑफ डॉकिंग। ये प्रोटीन है, आप प्रोटीन की सिंगल स्ट्रेन पे काम कर सकते हैं, सिंगल चेन पे काम कर सकते हैं, 2 चेन पे काम कर सकते हैं, 3 पे या 4 पे। 4 चेन्स होती हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। राइट हैंड साइड पे लीगेंड का स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद प्रोटोनेशन किया जाता है दोनों का, पार्शियल चार्ज सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर बाइंडिंग साइट सर्च होती है और एक टूल के थ्रू दोनों को डॉक कर दिया जाता है। डॉकिंग के रिजल्ट्स आप एल्गोरिदम की टर्म में देख सकते हैं या डिफरेंट पोजेस पर आप उनको कैप्चर कर सकते हैं। These are the results of my students. They did molecular docking on 7 compounds. These all are these compounds reported in my thesis, and they used these compounds and done with molecular docking studies by using Autodoc Vina, that is the tool used for molecular docking. Docking analysis. After the docking results, it is important how to analyze the docking. तो डॉकिंग को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट पोजेस को हम कैप्चर कर लेते हैं, इसके साथ ही फिजिकल डेटा हम वहाँ पर कलेक्ट करते हैं टेबल की फॉर्म में, बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में, और इसके लिए भी बहुत सारे टूल होते हैं। पाइमोल इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर दिस पर्पस एंड आई हैव मेंशन हियर।
नेक्स्ट इज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ड्रग डिजाइन की बात कर रहे हैं, डॉकिंग उसमें हेल्प कर रहा है, तो एक कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री बहुत इन है। दैट मीन्स कि वी नो द प्रिकर्सर कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग एनी flavonoid, flavone, isoflavonoid, chromone, and second time we have studied about the thiazole. Now we have studied the biological properties of flavonoid as well as the biological properties of thiazole. Now we decided to synthesize a hybrid by using flavonoid moiety and thiazole. This is called combinatorial chemistry, कि हम दो चीजों को कंबाइन करके एक हाइब्रिड बना रहे हैं for the betterment, for the improvement of the properties, for the improvement of the biological activity. Uses of docking in pharmacy. स्टार्टिंग से बात करें तो रश्मि मैम ने एक बात की थी कि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स एज अ पूल की तरह हमारे पास प्रेजेंट हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, आइसोलेट करने हैं। उसके बाद तो उन कंपाउंड्स का हम डॉकिंग स्टडी कर सकते हैं। बिफोर गोइंग ऑन द वैट लैब, इफ वी डू द मॉलिक्यूलर डॉकिंग, वी विल गिव द राइट डायरेक्शन दैट विल हेल्प टू लेस आवर टाइम, टू लेस आवर कॉस्ट, एंड इट विल सेव द मैन पावर। वैट लैब का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। बट बिफोर गोइंग टू द वैट लैब, आप अगर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के थ्रू वेट लैब में जाते हैं तो आई थिंक इससे हेल्प मिलेगी। अभी विनी शर्मा मैम ने एक एग्जाम्पल दिया था और उनसे मेरी बात भी हुई कि श्रीदेवी मर्डर केस में जो कंपाउंड आइडेंटिफाई हुआ कि ऑलरेडी उसने कोई ड्रग ली थी दैन एनी बिवरेजेस शी टुक एट दैट टाइम, मैं नहीं बताऊंगी क्या था, तो उन दोनों की क्या केमिकल रिएक्शन हुई, इसमें डॉकिंग की हेल्प ली गई। तो अगर आपको वेट लैब के थ्रू रिजल्ट तक पहुंचना है, इट विल टेक टाइम। उससे पहले अगर आप डॉकिंग कर लेते हैं, आई थिंक इट विल हेल्प टू रीच द रिजल्ट। वेट लैब पे फिर भी जाना पड़ेगा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन। वर्चुअल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बाइंडिंग मैकेनिज्म। जब हम वेट लैब करते हैं तो हम मैकेनिज्म नहीं जानते। एक लीगेंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक प्रोटीन है, आपने कोई भी मेथड यूज किया, इंजेक्ट किया, इनहिबिटरी एक्शन देखा, आपको मैकेनिज्म नहीं पता। मैकेनिज्म इन टर्म ऑफ ओरिएंटेशन, मैकेनिज्म इन टर्म ऑफ एक्टिव साइट्स, तो वो मैकेनिज्म हमें किससे क्लियर होगा? डॉकिंग से। लीड ऑप्टिमाइजेशन, जब भी कोई ड्रग डिजाइन होती है तो हमें लीड ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। लीड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? हमें जो डिजायर्ड चीजें जो रिक्वायर्ड है वही मिले, एक्स्ट्रा चीज हमें उसमें ना मिले। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम टॉक्सिक इफेक्ट से बचना चाहते हैं, हम साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, तो हमें ऑप्टिमाइज करना होगा कंपाउंड को, तो उसमें डॉकिंग विल हेल्प, नो डाउट। प्रोटीन लीगेंड इंटरेक्शन स्टडीज, वो तो हम बात कर ही रहे हैं इतनी देर से। वाई कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री सुपीरियर टू ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड्स? आई reported that there is no substitution of traditional method, wet lab, but computational chemistry will help to analyze the result before going on the wet lab. आपका टाइम बचेगा। अगर आपकी 10 ड्रग्स हैं, 10 डेरिवेटिव्स हैं, उनमें से मॉलिक्यूलर डॉकिंग में एक ही अप्रोप्रिएट आ रहा है तो आप एक पे काम करेंगे, 10 पर नहीं। ठीक है? तो इट विल save your time, money and manpower as well as career opportunities in molecular docking. सुनने में लगता है कि क्या कर रहे हैं हम, तो केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं, तो कुछ ऐसा ही ना करें, रिसर्च में लैब करें, करते हुए खड़े दिखें, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है या सिंथेसिस है, तो दिखना चाहिए। जब तक दिखेंगे नहीं तो लगेगा नहीं कि काम कर रहे हैं, क्योंकि घर में बैठ के अगर कंप्यूटर पे कुछ कर लिया तो कौन मानेगा आपने काम किया है। बट हम वेट लैब के थ्रू बहुत डेटा क्रिएट कर चुके हैं, इट इज द टाइम टू यूज दैट डेटा। तो इसमें इतना डेटा है लिटरेचर की फॉर्म में कि बहुत सारी पीएचडीज हो सकती हैं। अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, आपके पास प्रॉपर जॉब नहीं है, पैसे की दिक्कत है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं,
क्योंकि हायर स्टडीज में हायर वर्ड हायर लग रहा है, बट बच्चा एवरेज आता है, एवरेज फैमिली से आता है। एवरेज का मेरा मतलब सब्जेक्ट से नहीं है, बच्चा वो आता है जिसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती है। तो वो आता ही इसलिए है कि मुझे ठीक है और पढ़ाई करूंगा तो कुछ ऐसे रास्ते चुन लेता है जिसमें फीस ज़्यादा ना जाए, खर्चा ज़्यादा ना हो, घर ना छोड़ना पड़े। तो आप हायर स्टडीज़ की तरफ जा रहे हैं तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इन पीएचडी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप। कंप्यूटेशनल केमिस्ट की तरह आप काम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडलर की तरह काम कर सकते हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं आजकल, ये भी तो डेटा एनालिस्ट ही है एक तरह का। फार्मा में आप काम कर सकते हैं, एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी, केम इन्फॉर्मेटिक्स, और इसको आप स्किल कोर्स की तरह लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप अपने आप को स्किल कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग, सिमुलेशन, एमडी, डीएफटी जिसके बारे में विश्व सर ने अभी पहले बताया, जो थियोरेटिकल कंसेप्ट पे काम करती है, अगर ये सारी टेक्निक्स को आप सीख लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ टूल्स टेक्निक्स कुछ सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल हैं, अगर आप उनकी हेल्प से इनको सीखते हैं तो आप रिसर्चर्स को असिस्ट कर पाएंगे, आप उसका पेमेंट ले पाएंगे, आपको जॉब प्रोवाइड करेगा। जाकर देखिए, बहुत अच्छा है। थैंक यू। एनी क्वेरीज फ्रॉम ऑडियंस साइड? थैंक यू। यस, ऑफ कोर्स। Congratulations, wonderful presentation. Thank you, ma'am. And really thankful to you that you have educated to the students about this new fit. It's really wonderful fit, what ma'am has told. So I hope everybody will get advantage of it. There is no question at all. Just want to appreciate your presentation. Yes, ma'am. Actually, I would like to mention here, it is my first presentation as a resource person ever. Wonderful. I think you should clap for that. और मैंने इसके लिए मैम काफी वेट किया। It's very nice. थैंक यू मैम। So informative. Thank you. मैम मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ 5 यूजी स्टूडेंट्स ने इस पे डॉकिंग पे प्रोजेक्ट वर्क किया। यूजी में प्रोजेक्ट वर्क आ गया है हमारी यूनिवर्सिटी में और बहुत अच्छा काम किया है, वो पेपर भी उस पर तैयार कर रहे हैं और इट टुक 7 days हार्डली टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे आज आए हैं, उन्होंने लैब में काम किया है, दे टुक 2 months टू कंप्लीट देयर वर्क। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस। उन्होंने भी अच्छा काम किया है, बट कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री प्रोवाइड अ टूल। ये एक कॉन्फ्रेंस नहीं है खाली, ऐसा नहीं है कि हम रिसोर्स पर्सन आए आपको लेक्चर दिया और हम चले गए। इज अ कनेक्शन कि आप लोग ये जान पाए कि आपके ये मेरठ शहर में कितने लोग ऐसे हैं जिनसे आप एडवांटेज ले सकते हैं और किस तरीके से न्यू फील्ड में आप एंटर कर सकते हैं और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि एक लेक्चर 40 मिनट्स का है, ये आपको इतना ज़्यादा नहीं बताया जा सकता जितना शायद अभी इसमें बहुत कुछ है। तो ये इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न, तो आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइए। एंड थैंक्स टू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for your insightful session. And now, to show our gratitude and love towards you, we would love to give you a token of honor and certificate of appreciation. And for that, I would like to call Dr. Preeti Singh ma'am and Dr. Ankita Sharma ma'am to be upon stage to present the same. A huge round of applause, please. थैंक यू मैम। हाँ जी मैम। थैंक यू। ऐसे हो जाती हूँ। थैंक यू।
Thank you so much, ma'am. And now it is the time for group photo, and for that, I would like to request all our resource persons and our faculty members present here to be upon the stage for the same. Organizing committee members also, our faculty teachers. She is actually downstairs. ऊपर ही रहना है ना, मैं रुक गई हूँ इसलिए। Yeah, where is Verma? You all are requested to come up on the stage, please. Ma'am, stage, every one of you. जी सर। आपने बीएससी वालों को कराया? हाँ जी सर, प्रोजेक्ट में कराया। सर रुक जाती हैं। यस, Thank you. थैंक यू। अंकित सर को इधर गौरी और बच्चे आ जाओ सारे जल्दी से आजियन जी आ बेटा आप दोनों सारे बच्चे पीछे से आ जाओ अब बेटा इधर आती है बहुत मेहनत कर पाते हैं
चल 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 हो गया हो गया अरे Yes. पहली बार ये जब से आई हूँ मेरठ पहले देहरादून की मेरठ में पहले कॉलेज ही जाना Thank you so much for a lovely group photo session. And now please join me in welcoming Dr. Rohit Kanodia sir, who is currently serving as an assistant professor in forensic chemistry and toxicology at the Department of Forensic Sciences, NFSU Delhi campus. And to felicitate him, I would like to call Mr. Lalit sir and Ms. Esther Lorenzo ma'am to do the same. A warm round of applause, please, everyone. Thank you so much, sir and ma'am.
Now, I would like you all to be introduced to Dr. Rohit Kanodia, sir, who is currently serving as an assistant professor in forensic chemistry and toxicology at the Department of Forensic Sciences, NFSU Delhi campus. Dr. Kanodia, sir, completed his graduation in chemistry honors from Kirori College, University of Delhi. Sir also pursued his post-graduation in forensic science from the Department of Anthropology, University of Delhi. Dr. Kanodia sir has qualified UGC NET 4 times in forensic science and is a recipient of the UGC NFSC Fellowship. Sir also completed his PhD in forensic chemistry and toxicology from a collaborative program between the Department of Chemistry, University of Delhi, and the Department of Forensic Medicine and Toxicology, AIMS, New Delhi. Sir joined as the NFSU Delhi campus as a faculty in July 2024. Sir also served as a guest lecturer at the Department of Anthropology, University of Delhi from May to June 2024. Sir has authored more than 12 research papers and has delivered talks and presented posters at numerous national and international conferences and journals. Sir is a life member of several prestigious chemistry and toxicology associations. He was the winner of Forensic Hackathon in the Chemical Sciences category at AIFSS 2025, organized by the NFSU at Vivekanand Bhavan and was awarded by the Honorable Home Minister Shri Amit Shahji, along with a seed grant of Rs 2 lakh. Now, I would like to call Sir to take upon the stage and guide us through his insightful session. Please welcome him with a huge round of applause. So thank you so much for a wonderful and lovely introduction of mine. So here I am to present my talk on the topic of advancement of chemical analysis in forensic toxicology. Is it working? So ये भी ले लें जी भी ठीक है नहीं अच्छा उसके लिए वो ऑडियो अच्छा ओके ओके hello just a second next slide please अच्छा ठीक है So here I am to present on the topic of advancements of chemical analysis in forensic toxicology. I guess it's the thing which you want to know and you should also discuss, of course. And in the end, I always welcome question answers, so please be prepared with that. जो भी questions किसी को पूछने हो regarding forensic toxicology, scopes and everything, so you are free to ask. So as we all know, forensic science is the application of scientific methods and techniques to matters under investigation by a court of law. Basically, it is the sciences which is comparative to law. Chemistry, we know, is a discipline that examines the composition, structure, characteristics, and transformation of matter. Toxicology is the study of toxic compounds in the human body or any kind of biological matrices. So by combining all these three, we come to a discipline that is forensic chemistry and toxicology. Basically, it focuses on detection, identification, and analysis of toxic substances in context of legal investigation. So there are few aims and objectives which we have concluded of forensic chemistry and toxicology. Those are detection of toxic substances, assist in legal determination, contribute to public health and safety, develop toxicological guidelines, detection of poisons and drugs, drug impairment and driving under the influence cases, postmortem toxicology, toxic studies, and ultimately the legal support. So these are the key areas of forensic chemical analysis: toxicology, drug analysis, arson explosive analysis, trace evidences, chemical profiling, and last but not the least, the firearms and GSR analysis. So if you are coming to toxicology, the main purpose of it to detect and identify the drugs, alcohol, poisons, and other toxic substances in biological samples, basically urine, blood, and hair, and also the vitreous humor and the vista samples. The significance of it is like to identify the drug poisoning in the cases like क्या क्या drug से किस किस की मतलब मौत हुई है या किसी को कोई injury हुई है, anything else.
Secondly, the one of the main important thing, the driving under the influence cases. So in this case, we determine the concentration of alcohol in blood, because as per the Motor Vehicle Act, so 30 mg per 100 ml is the basic limit. अगर उससे ऊपर होता है तो उनके ऊपर then कानून कार्रवाई कर सकता है if the person is found to be driving. Secondly, drug analysis. The main purpose of it is to identify and quantify the illicit drug, prescription medicine, and controlled substances. Because under the NDPS Act, there are various schedules under which सबके सब जितने भी हमारे मेडिसिन हम यूज करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, सो वो बहुत ज़्यादा क्लासीफाई हो रखे हैं, शेड्यूल एच, शेड्यूल आई एंड बहुत सारे शेड्यूल्स में. उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाती है, उनका खरीदना बेचना रोका जाता है. इसका कंटेक्स्ट जो लीगल में हम देखते हैं, दैट इज द इन द एक्ट ओनली, illegal drugs and controlled substances act, the identification of illegal drugs, that is the cocaine, heroin, or the prescription drugs, that could be opioid, is essential for prosecuting the offenses, trafficking, or illegal distribution of it. The second part of it is the legal defenses. Drug analysis can be used to confirm or disprove a suspect's defense that they unknowingly ingested a substance or not. Suppose if it is a case of homicide or suicide, किसी को पेस्टिसाइड दिया जा रहा है या उसने खुद लिया है, तो वो प्रूफ हमारा ड्रग एनालिसिस के बाद ही हो पाएगा. हम पहले उसको एनालिसिस करेंगे कि क्या है, कितना अमाउंट में प्रेजेंट था, एंड देन ओनली वी कैन कम टू अ कंक्लूजन. द थर्ड वन इज द आर्सन एंड एक्सप्लोजिव एनालिसिस. तो द पर्पस ऑफ it is mainly to detect the accelerant, explosive, and residues from incendiary or explosive devices. It means कि arson is the deliberately caused fire. किसी ने आग जानबूझ के लगाई, but it was an arson or it was an like accidental fire. तो उसका डिफरेंस के लिए हम हमेशा चेक करते हैं एक्सीलेरेंट्स क्या आता है, बाकी सब आसपास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, where there was any fuel or not anything else. Same significance as I told, arson investigation and explosive devices. कि जो हमारे पास सपोज हमें किसी रूम में आग लगी है एंड हमें वहाँ पर RDX मिलता है, HMX मिलता है, सो वी कैन इजीली से दैट ये तो मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव्स हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई मिलिट्री करेक्शन रहा होगा, उसके बाद ही वो वहाँ पर प्रेजेंट है, और एल्स उनका प्रेजेंट होना बहुत मुश्किल है. तो दैट मे बी कि जानबूझ के किसी ने रखे हो, तो वी कैन से दैट इट वाज एन आर्सन और इट वाज एन एक्सीडेंटल. After that, the trace evidence analysis, it is the detection of small, often microscopic evidence such as hair, fiber, glass, paint, gunshot residues, GSRs, and soils. हम इनके एनालिसिस करते हैं इस केस में. तो it is also coming under the forensic chemical toxicity analysis. It helps in linking suspect to the crime scene, कि कोई person किसी crime scene में present था या नहीं था. By usually हम लोग क्या करते हैं कि हम soil analysis करते हैं from the shoes itself. कि किसी क्राइम सीन पे सॉइल मिली है एंड किसी के शूज में सॉइल लगी है, तो वी कैन चेक द डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ दैट कि कितनी डेंसिटी आ रही है, एंड वी कैन एस्टैब्लिश अ रिजल्ट कि वो सॉइल वहीं की होगी, एंड द पर्सन कैन बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड ऑफ द क्राइम सीन. देन द सेकंड पार्ट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू इट, एलिमिनेशन ऑफ सस्पेक्ट्स. द नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रोफाइलिंग. The main purpose of it is to identify the chemical composition of substances to link them in specific sources. It means suspects, clothes, or a crime scene. इसका मेन कंटेक्स्ट रहता है कि to identify unique fingerprint of the chemical. Suppose कोई person है, a person is doing any kind of substance abuse. Huffing सुना आप लोगों ने किसी ने? जो साइकिल चलाते हो, सारे साइकिल चलाई होगी किसी ने, बच्चों ने साइकिल चलाई है, आप कभी पंचर लगवाने गए होंगे, तो उनके पास एक ट्यूब होती है स्पेसिफिक. तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो रैक पिकर्स वगैरह होते हैं, उससे ना मतलब अब्यूज करते हैं उसको डेलिबरेटली हैंकी में भर के सूंघते हैं एक्सेट्रा. तो उसके अंदर टॉलुइन प्रेजेंट होता है, जो केमिकल कंपाउंड होता है. तो ये रहता है कि जैसे हमारे पास कोई केस आया, हमने कोई केस एनालिसिस करना स्टार्ट किया, हम उसमें टॉलुइन मिला है, तो हम वी कैन से दैट कि वो पर्सन टॉलुइन अब्यूज करता होगा, या उसके क्लोथ्स मिले हैं, तो हम उसे एक टॉलुइन के स्मेल से हम बता सकते हैं कि या तो एक्सीडेंटली इसके पास टॉलुइन गिरा है, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ये अब्यूज करता होगा. तो उस केस में केमिकल प्रोफाइलिंग बहुत मैटर करती है कि हम क्या केमिकल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं कंपाउंड्स की. द लास्ट वन इज द फायरआर्म एंड GSR एनालिसिस. डिटेक्शन ऑफ रेजिड्यूज फ्रॉम द डिस्चार्ज्ड फायरआर्म्स. इट इज मेनली लेड, बेरियम और एंटीमनी ट्रेसेस टू लिंक द सस्पेक्ट टू अ शूटिंग इवेंट और नॉट. सपोज किसी ने गोली चलाई है, अब आपको पता है कि रिकॉल जब हम फायर करते हैं तो रिकॉल एक्शन होता है, तो जितनी गोली स्पीड से आगे जा रही है उससे थोड़ा बहुत तो पीछे स्पैटर करेगा ही करेगा. उस केस में हमारे पास हाथ पे एंड कपड़ों पे GSR पार्टिकल्स आते हैं. सो बाय चेकिंग दैट कि उसमें लेड, बेरियम या क्या अमाउंट प्रेजेंट है, वी कैन से दैट द पर्सन हैज फायर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पिस्टल और नॉट. So after that, coming to the different type of samples obtained and method of analysis. तो
हमने 3 उसमें कैटेगराइज किया है इसको, बायोलॉजिकल सैंपल, ट्रेस एविडेंसेस एंड मेनली द केमिकल सैंपल्स। तो बायोलॉजिकल सैंपल्स आर मेनली ब्लड, सलाइवा, सीमेन, टिश्यू, बोन एंड यूरिन सैंपल्स। इनकी हम एनालिसिस यूजुअली करते हैं PCR, STR, RFLP से, and after that microscopic examination is done of hairs to identify that the hair belongs to a human or an animal. And after that अगर हमें जैसे ब्लड में एंड हमारे यूरिन के केसेस में हमें ड्रग एनालिसिस करनी है, so we go to complex instrument like GC, LCMS, SSS, ICP, etc. Second, coming to the trace evidence sample, that is hair, fibers and the GSR. Similarly हम इस इनको एनालिसिस के लिए FTIR यूज करते हैं या तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं to get chemical composition of that. After that, if you want to go for heavy metals, we go for ICP, MS or AAS. And the last, the chemical samples for which we want to test for the poisons, drugs and everything. So we have blood, the crude poison जो हमें crime scene से मिला है या तो हमारे पास like deposit कराया गया है. And the last is drugs. Drugs in this case I meant that जो seize करा हुआ drug होता है. Suppose किसी crime scene पे कोई आया गया है, वहाँ पर उन्हें like they have उन्हें बोरियां मिली हैं बहुत सारी. अब they don't know that white powder उसके अंदर मिला है वो क्या हो सकता है. That could be cocaine, that could be salt, that could be sodium bicarbonate, etc. So उस cases में वो standard हमारे पास आते हैं in the lab and after that we proceed. So इनका methods वही again GCMS, LCMS, AAS and etc. सारे हम mainly ही 3 techniques होती हैं, chromatographic techniques, spectroscopic techniques और ultimately the heavy metal detection techniques. उन्हीं पे हम लोग work करते हैं, वो हम आगे discuss करते हैं इस बारे में. So sample specific अगर हम आते हैं तो if we talk about the pesticide, drugs and heavy metals. So coming to pesticide, अगर हमें किसी भी biological sample या फिर non biological sample से pest check करना है, we follow this flow chart basically. The collection and preservation of sample, that is one of the most important step. Secondly, sample preparation. Third, the detection and quantification. Fourth, confirmatory testing whether that pesticide is that particular pesticide which you are looking for or it is a family characteristics of that. And at the last, data interpretation and reporting. So this is the very classic method, that is LLE, liquid extraction. Chemistry वाले बच्चे भी करते हैं usually, but इसका थोड़ा modified form हम लोग forensics में भी करते हैं. So इस केस में हमारे पास 4 type of pesticide होते हैं: organochlorpesticide, organophosphorus, carbamates and pyrethroids. And usually pesticide हमें homicide या suicide cases में मिलते हैं, and especially in rural areas. जैसे मेरठ के कुछ एरियाज है जो रूरल एरियाज है, जहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पर इजीली मिल सकता है पेस्टिसाइड, तो वहाँ पर लोगों ने घर में रखे होते हैं पेस्टिसाइड. अब किसी के आपस में लड़ाई हो गई, किसी कपल की लड़ाई हो गई, गुस्से में किसी ने खा लिया, तो दैट विल बी अ केस ऑफ सुसाइड. एंड किसी ने किसको जबरदस्ती खिला दिया किसी में मिला के, तो दैट विल बी द केस ऑफ होमिसाइड. सो व्हाट डू पीपल थिंक, किस केस में सबसे ज़्यादा मिलता है पेस्टिसाइड, कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, होमिसाइड और सुसाइड? एनीवन? सारे बच्चे ब्लैंक बैठे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं सारे खाना खाने के बाद. सुसाइड में ज़्यादा पेस्ट मिलता है या होमिसाइड में? अगर स्टार्ट्स देखे, ऐसा क्यों? पहला इजी अवेलेबल, राइट. सेकंड, और कोई और पॉइंट्स भी होंगे? यस, एग्जैक्टली. द मेन पॉइंट इज दैट कि उसका जो मतलब काइंड ऑफ अ डेथ विंडो हम अगर टर्म करें तो वो बहुत स्लो, मतलब बहुत फास्ट है, मतलब तुरंत खाते ही डेथ हो जाती है. इट मीन्स कि उसकी जो डोसेज है, टॉक्सिक डोसेज है, वो काफ़ी लो है, काफ़ी लो वोट में, एंड वो बॉडी को हार्म कर सकता है. इसलिए तो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास विसरा सैंपल्स भी आते हैं, तो वी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. बेसिकली 4 पार्ट्स हमारे पास आते हैं. फर्स्ट जार में होता है हमारा स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड में लिवर, स्प्लीन, किडनी, थर्ड में ब्लड एंड फोर्थ में सॉल्ट सोल्यूशन होता है जो हमारे पास आता है. तो हम स्टमक इंटेस्टाइन वाले जार के अंदर पेस्टिसाइड चेक करना पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत कम टाइम फ्रेम विंडो होता है एक्सेप्ट, एंड वहाँ पर अनडिटेक्टेड पेस्टिसाइड मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं. Because we do not check for metabolites, we check for the leftover residue of pest and drugs. कभी हम अगर चेक भी करते हैं तो इसीलिए. So फिर in that case हम क्या करते हैं कि उस जार को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट होता है पेस्टिसाइड चेक करने वाला पार्ट, उसमें हम लोग एक सोल्यूशन बनाते हैं 8:2 हेक्सेनेस्टोन का. अब why are we preferably taking हेक्सेनेस्टोन? Because mainly पेस्ट न्यूट्रल होते हैं. पता होगा ड्रग की एफिनिटीज होती हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तो पेस्ट मेनली कम इनटू न्यूट्रल कैटेगरीज एंड वो इसमें बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं. तो हम अपने एलएलई प्रोसीजर से उसको उसके अंदर निकाल लेते हैं. सो फॉर मतलब 1/5, सपोज हमारे पास 100 ml ऑफ विस्टा है तो 20 ml हम 8:2 हेक्सेनेस्टोन उसमें डालेंगे. एंड आफ्टर दैट इट विल बी शेकन फॉर 10 to 12 minutes, बहुत विगरसली शेकिंग.
एंड देन केप्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ 8 आवर्स और ओवरनाइट। फिर नेक्स्ट डे हम उसको डिकैंट करते हैं, जो ऊपर हमारी लेयर थी हेक्सिनेस्टोन वाली, उसे बोल में कलेक्ट करते हैं, उसको हम इवेपोरेट करते हैं। जब 1 या 2 ml मैक्सिमम उसमें बच जाता है, उसे हम टीएलसी लगाते हैं। अच्छा, टीएलसी इज अ टीएलसी ने टीएलसी करी होगी, इट इज अ कंफर्मेटरी और प्रीलिम टेक्निक। बताओ, कंफर्मेटरी होती है, प्रीलिम होती है? बताओ एनीवन? एक बार दोबारा सर्च करना कि वो कंफर्मेटरी होती है, प्रीलिम होती है, you'll get the answer of that. वैसे वो कंफर्मेटरी होती है बिकॉज यू आर अप्लाइंग अ स्टैंडर्ड इन दैट, आप स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उसे कंपेयर करते हो, ठीक है। बट और भी काफी रीजंस होते हैं कि हम उसे कंफर्मेटरी मानते हैं, एक बार सारा चेक करना। तो ये था हमारा एलएलई मेथड, इसमें हम बहुत कन्वेंशनल मेथड है, बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। हमने इसको डेवलप करके बनाया है स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड, दैट इज SVLE मेथड। ये ड्यूरिंग माई PhD आई वर्कड ऑन दिस मेथड, ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं बट कभी किसी ने पब्लिश नहीं किया। एंड इसको कभी किसी ने, मतलब होता है ना काइंड ऑफ कि प्रॉपर वर्ड नहीं आता रहा मुझे, ऐसे किसी ने होता है ना तराशा नहीं कभी ढंग से, लोगों को बस पता है, लोगों ने यूज़ करा, दैट्स इट। आपको कोई मेथड पब्लिश करने के लिए आपको उसे मल्टीपल चीज़ों पर यूज़ करना पड़ता है, मल्टीपल टाइप ऑफ सैंपल्स भी यूज़ करना पड़ता है। सो वी डिड दैट। इसमें क्या है कि हमें सपोज ब्लड मिला है, ब्लड सबको पता है कि बहुत कम अमाउंट ऑफ मिलता है हमें, हम मतलब किसी क्राइम सीन में हमें ब्लड मिला तो 1-2 ml हार्डली मिलता है, 0.5 ml मिलता है। इसमें क्या करेंगे, हमने टार्सन ट्यूब ली 15 ml की, हमने 1 ml ब्लड उसके अंदर लिया, हमने उसके अंदर बहुत थोड़ा सा सोल्यूशन बनाया हेक्सिनेस्टोन का। इन पुराना ओल्डर केसेस हम 20-30 ml बनाते हैं, इसमें सिर्फ 2 ml बनाया। उसके बाद हमने उसको वर्टेक्स किया हमारा शेकिंग पार्ट अवॉइड करने के लिए फॉर 3 to 5 minutes, एंड आफ्टर दैट वी हैव सेंट्रीफ्यूज्ड इट फॉर हाफ एन आवर। And again the superficial layer, that is the 2 ml of hexanesone, we have taken it in a bowl, इसे हमने थोड़ा और evaporate किया, जैसे ही वो 0.5 और 1 ml के आसपास बच गया, हमने उसकी TLC लगा दी and we got good results. उसके बाद coming to the drugs part, so we know drugs can be of 2 types, drug licit, and illicit means legal or illegal drugs. So it is a very short type of comparison between the both on the basis of legality, the examples, regulation purpose, health risk, and addiction potential. Illicit drugs are legal to use. Basically, everything that can alter or modify or harm anything in the human body when ingested is termed as drug. Okay, and that could be a medicine, but all the medicines cannot be drugs. Medicines means कि जो आपके बॉडी में अच्छा चेंजेस लाती हैं, आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल ज़्यादा हैं, साइड इफेक्ट बहुत मिनिमल है। साइड इफेक्ट हर चीज़ के होते हैं जो आप बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हो, मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं, दैट कुड बी टर्म्ड एज मेडिसिन। So legal drugs are legal drugs are legal to use, sell or possess, and illegal drugs are illegal to use, sell or possess. अच्छा, इसके कॉमन एग्जांपल हम जहाँ पर देख रहे हैं अल्कोहल, टोबैको, कैफीन, और इलीगल में केस में हमारा गया हेरोइन, कोकेन, मेथाम्फेटामिन, एक्सटेसी। सो टोबैको सबको पता है कि टोबैको कितना नुकसानदायक है, लोगों को कितना नुकसान करता है, ठीक है, बट स्टिल इट इज टर्म्ड एज अ लीगल ड्रग, इट इज सोल्ड इन द मार्केट। यूजली लेबल लगा होता है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को सेल ऑफ करना है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, सब बच्चे अब यूज कर रहे होते हैं सिगरेट्स एंड पान मसाला एंड एटसेट्रा। सो एंड खांसी की दवाई देखी आप लोगों ने, जो खांसी की दवाई होती है नॉर्मली जो आती है मार्केट में, कभी सुना है लोग उससे नशे करते हुए? मतलब पहले कोडीन हुआ करता था, कोडीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, ठीक है, तो उससे तो नशे कॉज हो सकते हैं फॉर श्योर, बट आजकल उसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन एंड अदर कंपाउंड्स होते हैं, उसको ज्यादा अमाउंट में लिया जाए या फिर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में लिया जाए तो दैट कैन कॉज हेलुसिनेशंस एज वेल। तो पीपल आर अब्यूजिंग दैट, मतलब लोगों को तो नशे करने ही है चाहे कुछ भी मिल जाए उनको, ठीक है। तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द यूसेज एज वेल, कि आप उसे किस वे में यूज कर रहे हो। ऑल्दो फेंटिनाइल सबने सुना होगा, फेंटिनाइल जब किसी का ऑपरेशन होता है या कुछ होता है तो फेंटिनाइल देता है एज एन एनेस्थेटिक, वो 200 टाइम्स मोर पोटेंट होता है मोरफिन से, बट उसको बहुत कम अमाउंट में दिया जाता है लोगों को। बट इफ कोई उसको डेलिबरेटली अब्यूज करता है तो दैट कुड बी मतलब इलीगल एज वेल। तो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन लीगैलिटी एंड इलीगैलिटी ऑफ ड्रग्स। So legal drugs are regulated by the authorities like FDA, EMA, and illegal drugs are only prohibited by law, not regulated as well. The purpose is for legal drugs is medical treatment, therapeutic and recreational use, and illicit drugs are used for abusing only. हेल्थ रिस्क तो सबको पता है कि बहुत कम हेल्थ रिस्क होते हैं लीगल ड्रग्स के, जैसे आप पैरासीटामोल खा रहे हो, सपोज कोई पैरासीटामोल खाता है, किसी तबीयत खराब है, आप उसे दिन की फ्रीक्वेंसी होती है डिपेंडिंग अपॉन द mg, कितने mg की आप PCM खा रहे हो। आप 650 mg ले रहे हो तो दिन में सुबह शाम लोगे, 400 वाली ले रहे हो तो दिन में 3 बार खाओगे। बट सपोज किसी को सुसाइड करना हो PCM से, तो कितनी गोली ली जाए? एनी आइडिया कितना?
15 से ऊपर ली जाए तो दैट इज मोर देन इनफ टू कॉज द डेथ। वैसे तो 8 से 10 गोली जाती हैं यूजुअली केसेस में, कि आपने किसी ने 8 से 10 गोलियां एक साथ खा ली तो द पर्सन कैन डाई। लिवर डिस्ट्रॉफी से लिवर कैन बी डिस्ट्रॉफी, लिवर पूरा फट जाता है इसलिए। सो इट डिपेंड्स कि आप लीगल ड्रग्स को भी कैसे यूज करते हो। बहुत केसेस देखे हैं, सब नहीं मतलब शायद सुने भी होंगे, छोटे बच्चे होते हैं गलती से कोई मेडिसिन खा लिया एंड दे डाई बिकॉज क्योंकि उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डोसेज होती हैं। Illicit drugs can cause and can lead to serious health issues, addiction, and overdoses. And ultimately, the main thing, addiction potential, which can determine the legality or illegality of drugs. Some illicit drugs, opioids, can be addictive, but generally prescribed under controlled conditions. And illicit drugs are highly addictive and dangerous because सबको उनका abuse potential बहुत high होता है. We all know that. So the various samples could be analyzed for drug detection. जो हमारे पास सैंपल जिसमें हम वर्क करते हैं यूजली वो होते हैं ब्लड, यूरिन, हेयर, सलाइवा, स्वेट, विट्रियस ह्यूमर एंड लिवर टिश्यू। मेनली हमारे पास जो सैंपल्स आते हैं वो आता है ब्लड, अगर लाइव केस है पर्सन जिंदा है तो ये ब्लड, यूरिन, हेयर, सलाइवा, बस ये 4 सैंपल्स मेनली आते हैं। बाकी हमारे पास जो पोस्टमार्टम टॉक्सी सैंपल्स आते हैं तो हमारे पास विस्रा सैंपल आता है एज आई टोल्ड यू, एंड कुछ स्पेसिफिक सैंपल्स आते हैं इन सम वेरी स्पेसिफिक केसेस। जैसे कोई न्यूरोटॉक्सिन से पॉइजनिंग हुई है तो ब्रेन का एक पार्ट भेजा जाएगा। सपोज कोई किसी रेस्पिरेटरी पॉइजन से पॉइजनिंग हुई है तो हमें दोनों लंग्स और पूरा ट्रैकिया भेजा जाता है इन जार पैक करके पूरा का पूरा। सो ब्लड इज बेस्ट फॉर करंट ड्रग लेवल्स। इट मीन्स बिकॉज कुछ भी बॉडी के अंदर इंजेस्ट होगा बाय ओरल इंजेक्शन और आईवी इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन, कुछ भी बॉडी में इंजेस्ट होता है तो अल्टीमेटली वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलता है। तो ब्लड इज द अल्टीमेट वेपन फॉर चेकिंग द अमाउंट ऑफ ड्रग्स और टेस्ट इन द करंट पर्सन्स बॉडी। इसका प्रोज है रिलायबल क्वांटिटेटिव डाटा एंड ड्रग कंसंट्रेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। इसका कौन सा कि हार्डर टू कलेक्ट इन सर्टेन केसेस एंड it is an invasive samples. We always prefer for non-invasive samples as compared to invasive samples, ताकि किसी पर्सन को हार्म ना हो। तो इन केसेस में अगर हमें ड्रग चेक करना है या फिर हमें हैवी मेटल चेक करना है, वी प्रेफर हेयर सैंपल एंड नेल सैंपल एज वेल। So coming to the next part, the urine, it can also give us the decent drug use, but mainly it gives us the amount of metabolites, क्योंकि बॉडी के अंदर ड्रग गया ADME उसका पूरा हुआ, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, वी आर लुकिंग इन द एक्सक्रीटेड पार्ट, ठीक है, तो वो मेटाबोलाइज फॉर्म में आएगा। एंड अगेन आई इसको फटाफट मेटाबोलाइज करना स्टार्ट करती है एंड कुछ ही आवर्स तक वो यूरिन में भी मिलेगा, उसके बाद वहां से भी हट जाएगा। तो मतलब इट इज लेफ्ट अनडिटेक्टेड देन। बट इफ अ पर्सन इज हैविंग मैरिजुआना, अगर कोई सपोज कैनबिस से मैरिजुआना यूज कर रहा है कंटिन्यूसली, बहुत टाइम से यूज कर रहा है, तो हाउ वुड बी नो कि वो कंटिन्यूस करता ही आ रहा है या फर्स्ट टाइम हैबिचुअल मतलब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है? एनीवन को बता सकते हैं ये चीज? सुन रहे हो, सो रहे हो सारे? बोरिंग है क्या? मुझे लगा। तो कोई बता सकता है कि मैरिजुआना से मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मैरिजुआना किसी ने फर्स्ट टाइम लिया है या बहुत टाइम से लेता आ रहा है? हाउ?
कैसे? टॉलरेंस डेवलप होता है, बट बाय लुकिंग एट द सैंपल वी कैन टेल इट अप, बिकॉज जो हैबिचुअल लेते आ रहे हैं काफी टाइम से, मैरिजुआना, द कैनबिस कंपाउंड्स, दोज आर लिपिड सॉल्युबल, तो आपकी बॉडी में वो स्टे करते हैं, वो बॉडी से बाहर तुरंत नहीं निकलते, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जब हम उन्हें चेक करना चाहते हैं कि हम उन्हें चेक कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होगा उसमें सपोज 1-2 दिन तक आएगा, बट जो हैबिचुअल ऑफेंडर होगा उसमें मंथ्स तक आएगा, 2 से 2.5 महीने तक आएगा। तभी कभी कॉर्पोरेट में जॉब लोग करने जाते हैं, उनका कहते हैं ना आपको ड्रग प्रोफाइलिंग टेस्ट करना है हमें, तो अपना हेयर एंड यूरिन सैंपल, नेल सैंपल दो, तो वो लोग यही चेक करते हैं। बट जब किसी को पता लगेगा कि आपका टेस्ट होने वाला है, तो पर्सन तो 1 हफ्ते पहले छोड़ देगा कि पकड़ में तो आएगा नहीं, हम समझदार हैं, वो भी समझदार है ना, इसलिए। बट जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं आफ्टर इवन अ मंथ। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, द हेयर, लॉन्ग टर्म ड्रग यूज होता है हमारा हेयर से। हेयर स्टैंड से हम लोग महीनों तक का ड्रग का डाटा निकाल सकते हैं कि उसने क्या मतलब अब्यूज करता रहा होगा, एंड ऑल्सो द न्यूट्रिशन विच यू इनटेक इन द बॉडी, वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। इट डिटेक्ट विद लॉन्ग टाइम हिस्ट्री, एंड द कॉन्स इज इट कैन नॉट डिटेक्ट द रीसेंट ड्रग यूज, इसे हम लॉन्ग टाइम में निकाल सकते हैं। After that, the saliva is also beneficial because to check the recent drug use, it is non-invasive and very easy to collect, but it has a very limited time window for most of the drugs. The sweat, vitreous humor, sweat का भी similar रहता है हमारा पूरा इसका saliva का तरह ही। Coming to the vitreous humor and the liver tissues, vitreous humor and liver tissue of course जब person मतलब मर चुका होगा उसके बाद हम लोग ले सकते हैं, तो इनका मेन प्रॉब्लम यही है कि हम लोग तभी ले सकते हैं जब कोई पर्सन मर चुका हो, हम लाइव सैंपल्स का नहीं ले सकते हैं। कहाँ गए? तो बट लिवर टिश्यू का मेन प्रोस हमारा या फिर हमारा जो मेन एडवांटेज है वो ये कि वी कैन हैव अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन वट एवर द ड्रग इज बीइंग एम्प्लॉयड इन इट, एंड बट इट इज ऑल्सो लिमिटेड टू द पोस्टमार्टम केसेस एज वेल। सुशांत सिंह राजपूत का जब केस हमारे पास एम्स में आया था तो हमने इसमें चेक किया था, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे थोड़ा सा स्टमक का पार्ट था, थोड़ा सा लिवर का पार्ट था, थोड़ी छोटी सी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ब्लड तो बिल्कुल ड्राइड अप मिला था हमें। तो हमने इन्हीं में जो बचा हुआ सैंपल था उन्हीं में सबको चेक किया। Around 43-44 drugs we have checked in those samples, and then we came to the conclusion कि इसमें कुछ भी नहीं था, वो प्लेन था बिल्कुल, मतलब बिल्कुल खाली जैसा था, खाली एज इन की कुछ था ही नहीं, बहुत होता ना कि आइडियल केस वैसे था। सो अल्टीमेटली मतलब ये हमारा फ्लो चार्ट है जो हम फॉलो करते हैं फॉर चेकिंग ऑफ द ड्रग्स इन द सैंपल्स। Firstly, sample is collected. Secondly, it is prepared by dissolving, crushing or homogenizing to ensure uniformity. Homogenizing, crushing, dissolving हम करते हैं in cases of blood and vitreous humor. No, sorry, not in vitreous humor, in viscera samples. After that, the screening is done. There is a preliminary test which is done just to identify the main compounds कि हमें क्या क्या चेक करना है, किस दिशा में हमें बढ़ना है उस एनालिसिस की, ताकि हम लोग एक बिल्कुल अंधेरे में तीर मारने की तरह सब कुछ चेक ना करें, बिकॉज हमारे पास कोई रैंडम मिसरा है, हमें उसको बस चेक करना है। तो देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ड्रग्स, हम कितने चेक करते रहेंगे? तो वी हैव एम्प्लॉयड अ मेथोडोलॉजी, पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी, हम उसी के थ्रू वर्क करते हैं। कोई स्पेसिफिक केस होता है, कोई स्पेसिफिक एनालिसिस है, तब हम जाके और भी चेक करना शुरू करते हैं, when it is very 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 time consuming. FSLs में सबको शायद हाल पता ही, FSLs का क्या चल रहा है अभी, वहाँ पर बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, 5-5 साल पुराने केसेस भी पेंडिंग चल रहे हैं, 10-10 हज़ार केस पेंडिंग चल रहे हैं आज की डेट में भी FSLs के अंदर। तो वहाँ तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों के चक्कर से, बिकॉज इट टेक्स टाइम, visceral analysis do really take time, इसलिए। After that, the confirmation which is usually done by techniques like GC or LCMS, and ultimately the interpretation of the results. So if we are getting, suppose that jar 2, अभी jar discuss कर रहा था मैं, jar 1 was small intestine and stomach, second होता है liver, spleen, kidney, उस केस में हम लोग ड्रग्स चेक करते हैं, बिकॉज बॉडी में अगर ड्रग जाएगा, कोई इंस्टेंटली तो ड्रग से नहीं मर सकता, एज वी ऑल नो, जैसे पेस्ट से मर सकते हैं बट ड्रग से नहीं मर सकते। तो क्या होता है कि बॉडी लिवर के थ्रू उसे मेटाबोलाइज करना स्टार्ट करेगी, एंड जैसे ही वो मेटाबोलाइज होना स्टार्ट होंगे, अल्टीमेटली बॉडी में एक्ट होगा, द पर्सन विल बी डेड, और मतलब कुछ भी उसको होता है, तो हमारे पास लिवर सैंपल आएगा, उसमें चेक करेंगे बेसिकली। सो फ्यू ग्राम ऑफ ammonium sulfate is added to the viscera sample. 2 to 3 ml of 5% acetic acid solution is also added. It is kept for a water bath for minimum of 5 hours. After that, बिल्कुल
एक होमोजेनाइज बिल्कुल एक मैशी सा लिक्विड हमारे पास तैयार हो जाता है। हम उसे हमारा एक फनल के ऊपर कॉटन लगा के उसको मतलब पास करते हैं एंड देन वी ऑब्टेन अ वेरी क्लियर लिक्विड। सो हमारे पास ये 3 एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स हैं विच वी फॉलो। ये हमारा वही कन्वेंशनल मेथड है LLE, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, विच वी यूज टू डू। सो एसिडिक ड्रग्स, बेसिक ड्रग्स एंड न्यूट्रल ड्रग्स, हम 3 एफिनिटीज के बेसिस पे तीनों को हमने एक्सट्रैक्ट करा हुआ है। न्यूट्रल हमारे पास केसेस बहुत कम आते हैं, तो हम वी प्रेफर ओनली फॉर एसिडिक एंड बेसिक ड्रग एक्सट्रैक्शन। सो इन द एसिडिक एक्सट्रैक्शन द फिल्ट्रेट जो हमने बनाया निकाला था अभी इन दैट लास्ट प्रोसेस, लास्ट में हमने जो फिल्ट्रेट कलेक्ट किया था उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे इन अ सेपरेटिंग फनल। After that, a solution of diethyl ether is added to it. It means कि अगर हमारा 1 part liver filtrate है, तो 3 parts should be diethyl ether. After that, it was shaken for 10 to 15 minutes. The ethereal layer is taken out and it is passed through sodium anhydrous sulfate. इससे हम पास करेंगे क्योंकि ताकि सारे droplets of water हो जितने भी उसके अंदर पास होने वाली होंगी वो उसमें ही रुक जाए, ताकि हमारे पास सीधा हमारा volatile liquid है, that is diethyl ether. And ultimately the liquid is collected, it is evaporated and spotted for acidic drugs. अब जो हमारे पास इसमें जो हमारे पास फिल्ट्रेट बचा हुआ था उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम दोबारा कलेक्ट करेंगे एंड दोबारा एक और सेपरेटिंग फनल में कलेक्ट करेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे NH4OH, दैट इज और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और हम बेसिकली अमोनिया सोल्यूशन ड्रॉप वाइज उसके अंदर डालेंगे। क्यों? ताकि हम उसको बेसिक साइड पे एक्सट्रैक्ट कर सकें। हमने इस वाले प्रोसेस में ऑलरेडी एसिटिक एसिड मिला हुआ था, तो सोल्यूशन वाज ऑलरेडी एसिडिक। सेकंड केस में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, वो बेसिक में कन्वर्ट हुई उसकी एफिनिटी, एंड आफ्टर दैट वी विल पोर अ मिक्सचर ऑफ डायथाइल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म टू इट। हम 1:1 इस सोल्यूशन बना के उसे 1:3 रेशियो में फिल्ट्रेट के साथ डालेंगे एंड अगेन द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द कंसिडर हमारे पास जो नीचे मतलब हम उसको बाहर निकालेंगे और उसे इवेपोरेट करेंगे एंड TLC स्पॉट कर देंगे एंड इट इज रिपीटेड 3 times फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। सो हमारे पास यहाँ तामझाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम हमें करना पड़ रहा है। तो अगेन वी वेंट फॉर अ सिंपल मेथोडोलॉजी, दैट इज द SVLE, स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथोडोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने ब्लड लिया इन अ बीकर, नहीं हमारे पास जो ये वाली मेथोडोलॉजी है, ये मेथोडोलॉजी हमारी ब्लड की है, सॉरी हमारी ब्लड की मेथोडोलॉजी है कि हम या इस केस में हमारे पास विस्पा सैंपल्स था, उसका फिल्ट्रेट था। इस केस में हमारे पास ब्लड है अप्रॉक्सीमेट 10 ml जो जार थीम हमें मिलता है, एंड उसमें हमने डाला है 0.2 ग्राम ऑफ सोडियम टंगस्टेट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4, हम इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं। अगर हम डाइल्यूट डालते हैं तो वी हैव टू हीट इट अप, अगर हम कंसनट्रेट डालेंगे तो हमें हीटिंग नहीं करनी पड़ती, बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ हीटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद अगेन हमने डाइल्यूट डाला तो हीटिंग करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट द ब्लड विल स्टार्ट सेपरेटिंग, हमारे पास पूरा क्लियर लिक्विड आ जाता है, उसे फिल्टर करेंगे एंड देन हम अगेन इन तीनों मेथड्स के अकॉर्डिंगली उसको पूरा प्रोसेस करेंगे। बट अगेन वही जैसे मैंने बताया था कि हमने एक स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड एक्सट्रैक्शन डेवलप किया इसके लिए भी। इसमें हमने क्या करा, हमारा ब्लड लिया हमने, इसमें हमने ब्लड हमारा लिया अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 ml ऑफ ब्लड इन अ 10 ml ट्यूब, एंड उसके अंदर में सोडियम टंगस्टेट बिल्कुल एक पिंच के बराबर डाला है हमने, उसमें से हार्डली 1 या 2 ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 के डाली है। उसके बाद हमने हल्का सा शेक करा है, उसी में हमने डायथाइल ईथर ऊपर से डाल दिया, डायरेक्टली डायथाइल ईथर डाल दिया, वो भी हार्डली 2 to 3 ml, ठीक है। हमारा टोटल मिक्सचर ही 4 to 5 ml से ऊपर नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट हमने उसका पूरा ड्रग एक्सट्रैक्शन जो मेथड था एसिडिक वाला वो मैंने पूरा फॉलो किया, एंड अगेन हमने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन निकाला है एंड उसकी TLC लगाई। सिमिलरली गोज फॉर द बेसिक पार्ट एंड अल्टीमेटली हमारे पास जो लास्ट में बचता है बिल्कुल एक फिल्टर्ड बचता है डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्रग, एसिडिक एंड बेसिक। हमने एसिडिक भी उस थर्ड स्टेप के बाद एसिडिक ड्रग्स निकाल ली हमने, फिफ्थ के बाद हमने बेसिक ड्रग का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया एंड वी कैन स्पॉट TLC ऑफ इट। After that, coming to the heavy metal part, heavy metal we all know are very harmful for humans. Metals हमें चाहिए होते हैं बॉडी में, जैसे आयरन हमें चाहिए बॉडी के अंदर, हमें कॉपर बॉडी के अंदर चाहिए, ठीक है, बट दैट इज इन अ वेरी ट्रेस अमाउंट। बट अल्टीमेटली अगर वो भी बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे तो बॉडी के अंदर नुकसान करेंगे वो भी। तो देयर आर फ्यू हेवी मेटल्स जो बॉडी के अंदर नुकसान करती हैं, दैट इज लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज। इनमें से हमारा जो कॉपर है, जिंक है और आयरन है हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एसेंशियल है बॉडी के लिए, बट कम अमाउंट में चाहिए होता है। एंड अल्टीमेटली अगर ये नहीं होंगे तो एनीमिया सुना हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तो वैसे ही जिंक और कॉपर की कमी से न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जल्दी होने का चांस रहता है। बट अल्टीमेटली ज़्यादा नहीं ले सकते सब चीज़ों को। सो इसके लिए क्या करते हैं, हम डाइजेस्ट करते हैं।
डाइजेशन इज अ सिंपल प्रोसेस, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना, दैट इज टर्म्ड एज डाइजेशन। हम क्या करेंगे, हमने जितने भी अभी तक दोनों पार्ट्स करे थे उनके सारी चीज़ों को लेकर हम या तो ड्राई डाइजेशन करेंगे या तो वेट डाइजेशन करेंगे। यूजली वी प्रेफर वेट डाइजेशन इन केसेस में, जो हम करना पसंद करते हैं। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज एमडीएस, माइक्रोवेव डाइजेशन सिस्टम। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेट डाइजेशन प्रोसेस से हम लोगों ने उसके अंदर हमारा सारा सैंपल डाले, वी poured some amount of HNO3, concentrated HNO3 and H2O2 in that to obtain a very clear liquid, okay, and after that the samples are run in that instrument। प्रेशर कुकर देखा सबने? कुकर सबने घर पे देखा होगा ना? कुकर काम कैसे करता है? हमने उसके अंदर हमारा जो भी हमें पकाना है उसे डाल दिया, हमने उसको प्रेशर क्लोज कर दिया, उसमें हमने वाटर डाला, कुछ भी डाला, उसको हमने हीट अप कर दिया, प्रेशर जब बिल्डअप होगा एंड अल्टीमेटली जो भी चीज़ होगी वो डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, गल जाएगी। स्पेसिफिकली अगर हम केस पे बात करें नॉन वेज के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे विस्टा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने क्या करा, हमने वाटर की जगह डाला हमारा HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3, एंड हमने डाला H2O2 सो दैट वो किसी भी तरह की इम्प्योरिटी को या कलर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा का पूरा। हमारे पास एक बहुत क्लियर लिक्विड सा ऑब्टेन हो जाता है, एंड देन उस क्लियर लिक्विड को हम AAS पे या तो हमारे जो भी टेक्निक्स ICP, MS, ICP, OES हम उसमें चलाते हैं टू चेक फॉर द हेवी मेटल। सो आई जस्ट वाइंड इट अप वेरी शॉर्ट वे, क्योंकि थोड़ी लंबी है। सो हमारे पास टेक्निक्स जो मैंने बताई, जैसे हमारे पास 3 मेन टेक्निक्स हैं, दैट इज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, दैट कुड बी GC और LC डिपेंडिंग अपॉन द मोबाइल फेज। मोबाइल फेज हमारा अगर गैस है तो GC, लिक्विड है तो LC। After that the MS techniques that identifies molecules based on their mass to charge ratio। सबको पता है कि MS is one of the gold standard technique in forensics and even in chemistry as well। After that we come to the elemental analysis techniques, the 2 main techniques which that are AAS and the second one is ICP, MS। So theory part मैं थोड़ा skip करूँगा because I have to wind up थोड़ा सा जल्दी। बेसिकली हम GC में वो कंपाउंड चलाते हैं, रन करते हैं जिनका हमारा बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ द कॉलम। जिसके अंदर कॉलम होता है उसकी लिमिटेशंस होती हैं। कॉलम कैन बी हीटेड अप टू लाइक 200 to 220 डिग्री सेल्सियस, तो हम उसी के कम वाला ही कंपाउंड इसमें चलाना पसंद करते हैं। बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ LC। LC वाले केस में हम लोग जितने भी हमारा हाई एटॉमिक मास वाले कंपाउंड्स हैं हम उसको चलाना पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं उसमें चलाना। अब पेस्टिसाइड्स हमने पेस्टिसाइड पता ही होंगे, तो वो हम GC में प्रेफर करेंगे LC में? एनीवन पढ़ा है GC LC के बारे में? नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। हम उसको GC में प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द वेरी लेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दोस्त। उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस तो कम ही होता है, इसलिए हम उसको GC में चलाना पसंद करते हैं। ऑल्दो वी कैन रन इट इन LC एज वेल। हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है दैट इज नोन एज निस्ट लाइब्रेरी, वो हमारे पास सिर्फ GC में अवेलेबल होती है, LC में हमारे पास वो अवेलेबल होती नहीं है, इसलिए भी। After that the GCHS, the headspace technique is an sampling advantage to the GC instrument। इसमें क्या रहता है कि हमें अगर हम GC में कोई सपोज करो हम कोई हमारे पास लेफ्ट साइड में GC है, राइट साइड में HS है हमारा, हम GC में कोई सैंपल रन करते हैं तो हमें बिल्कुल प्योर कंपाउंड से रन करना पड़ता है जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, मतलब उसके अंदर हमारी एक्वस इम्प्योरिटी भी ना हो, वाटर ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल कंपाउंड हो, बिकॉज ताकि वो कॉलम चोक ना करे। हमारे पास हमें ये दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज द कॉलम, ये बहुत ज़्यादा राउंडेड रहता है, बहुत ज़्यादा लेंथ रहती है इसकी, हमारा कॉलम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, HS में हमारा क्या रहता है, HS में हमारे पास ऐसी वाइल्स होती हैं, बड़ी वाइल्स होती हैं, हम इसके अंदर हमारा सपोज हमें ब्लड में इथेनॉल चेक करना है, हमें जैसे BAC लिमिट है 30 mg per 100 ml चेक करनी है, हम डायरेक्टली हमारा ब्लड लेंगे, उसको हम डायरेक्टली हमारा HS के अंदर रख देंगे, नीचे थर्मोस्टाट लगा होता है, वो उसको हीटअप करेगा, जैसे हीटअप करेगा एक क्लाउड बन जाएगा, वेपर क्लाउड बन जाएगा, वहाँ पर एक नीडल होती है, नीडल उसको ले जाके सीधा कॉलम में रन करेगी, उसके अंदर पोर करेगी, एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो भी क्रोमेटोग्राम आएगा, पीक्स आएंगे, हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या होगा उसके अंदर। बट इन द केस ऑफ सिंगल GC HS ना हो, हमें पहले उसको डिस्टिलेट करना पड़ेगा by either distillation process or steam distillation process, and उसके बाद जाके हम उसको आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे, तो हमारा वो थोड़ा काम बढ़ जाता है उसमें। तो GCHS is ideal for BAC concentration, blood alcohol concentration। फिर हम आते हैं हमारे MS पे। MS पे हमारे पास डिटेक्टर्स लगे होते हैं, हमारे पास जो भी हमारा कंपाउंड है उसको हीटअप होगा, कंपाउंड हमारा उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, उसमें डिटेक्टर्स लगे होते हैं, एंड देन वो उसको डिटेक्ट करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर मास टू चार्ज रेशियो दे गिव अस अ वैल्यू, बेसिकली हमें वैल्यू देते हैं वो लोग, वो
हमारे डिटेक्टर्स, एंड बाय कंपेयरिंग दैट टू द लाइब्रेरी, हमारा जो भी मतलब एटॉमिक मास उसका आया है, हम बता सकते हैं कि वो कंपाउंड कितना परसेंटेज उससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा. 95% probable match, 85% probable match, and then after that we have to interpret the results. मशीन हमें बहुत सारी चीजें बता देगा कि इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है. अल्टीमेटली इट इज ऑन द साइंटिस्ट और द टॉक्सिकोलॉजिस्ट हु इज वर्किंग कि उसमें क्या है एक्चुअली में एंड उसे क्या रिपोर्ट करना है. So coming to the last part, the elemental techniques, that is the AAS. सबको पता है कि मैटर हमारे पास जो एटम्स हैं उसके ऊपर ईएम वेव्स पड़ेंगी अगर सपोज, तो कुछ ना कुछ रिएक्ट हो, या तो एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिट करेगा, तो एमिट करेगा. जिस प्रॉपर्टी से वो एब्जॉर्ब करता है उसको हम यूज करके वी चेक इन द AAS. इसमें उसकी वाली प्रॉपर्टीज होती है. ICP-MS में क्या रहता है कि हमारे पास प्लाज्मा फॉर्म, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है हमारा, प्लाज्मा बनाया जाता है हमारे मेटल्स का, एंड देन इट इज रन ऑन द MS पार्ट, एंड देन वी डिटरमाइन कि हमारे पास क्या मेटल रहा होगा उसके अंदर. सो एक्सप्लेनेशन तो भी नहीं. So this is our AAS, atomic emission spectrophotometer. This is the vapor generator assembly that is add-on to this instrument, and these are the halo cathode lamp जो हमारा एक frequency पे light produce करते हैं. That is particular to the metal. उसके बाद this is the forensic significance of analytical instruments. हमारे पास GC, LC, MS, FTIR, UV visible, AAS, ICP-MS, XRD, इनकी हमारी क्या क्या एडवांटेजेस हमारे किस किस पार्ट ऑफ फॉरेंसिक केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी का. सो हमारे जो कुछ रीसेंट वर्क्स है, हमने जो हैकाथॉन जीता था उसके बारे में था. हमने एक काइंड ऑफ हमने एक स्प्रे डेवलप किया था, हम मतलब पूरी टीम ने हमारी एक स्प्रे डेवलप किया था जिसको हम पोर्टेबली क्राइम सीन पे ले जा सकते हैं. बाय द एक्शन ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन द स्प्रे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या रहा होगा. सपोज जैसे स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था कि 3-4 बोरियां पकड़ी गई हैं किसी क्राइम सीन से, सीज करी गई हैं. वी डोंट नो उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है, कोकेन है, या कॉमन सॉल्ट है उसके अंदर बोरियों के अंदर. एंड जो कोई पुलिस वाला वहाँ जा रहा है, आईओ जा रहा है वहाँ पर, उसको नॉलेज नहीं है. मान लो वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, साइंस बहुत टाइम पहले पढ़े, उसको नहीं पता कि क्या है. तो रादर देन सारी बोरियां भेजने के बजाय वो तीनों में वो स्प्रे करेगा एंड वो चेक करेगा कि उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. कलर चेंज होगा. वी हैव डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप एज वेल. हमने हम उसको स्कैन करेंगे, मोबाइल ऐप में लिखा आ जाएगा प्रोबेबली कोकेन है, प्रोबेबली क्या है उसके अंदर, एंड अल्टीमेटली जो काम की चीज़ है वो सही सीज करेगा. उससे काम बचेगा उसका भी और फॉरेंसिक साइंटिस्ट का भी. जो डिपेंडेंसीज है वो नहीं होंगी. उसके बाद दीज आर सम ऑफ आवर वर्क्स जो हमने मतलब मेरे स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया है, मेरे MSc डेजिग्नेशन स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया है, मेरे मास्टर्स के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया है. These are the few posters which the students have presented. So thank you so much. That's it. Okay, I know. So I welcome questions. कैसे कुछ पूछना हो तो you can ask in the field of forensic chemistry, toxicology, and everything. Yes. Sir, my question is, why is heart not sent to the lab for tests like in with other sister organs? क्या चीज? Heart was not sent to the because heart is only sent to the like FSLs in very particular cases. जैसे सपोज निकोटीन पॉइजनिंग है या कुछ ऐसी पॉइजनिंग है जिसका इफेक्ट हार्ट पे ही देखा जा सकता है, उसको भेजते हैं हम लोग यूजुअली. बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है. बिकॉज अगर मैं बताता हूँ क्या होता है पहले, मतलब विस्टा रिपोर्ट और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट, दिस आर नॉट अ होल एंड सोल स्टैंडर्ड रिपोर्ट. मतलब आप सिंगल इनकी रिपोर्ट देख के ना आप ये नहीं बोल सकते कि यही कॉज ऑफ डेथ होगा. सपोज कोई पर्सन मरा है, ठीक है, पहले उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दे डायसेक्ट द हार्ट. उसके हार्ट के डायसेक्शन होते हैं, डायसेक्शन पूरे प्रॉपर तरीके से करते हैं. वो चेक करते हैं कि उसमें हेमरेज है या क्या है, या थिकनिंग ऑफ वॉल्स है नहीं है, मतलब पहले से कोई डिजीज थी नहीं थी, या कुछ एक्ट करा नहीं करा. अगर इफ दे फाइंड समथिंग फिशी इन दैट या कोई पर्टिकुलर केस है, तब जाके वो हार्ट भेजते हैं क्योंकि वो पार्ट होता है उनका. बट इन द केस ऑफ लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एवरीथिंग, उस केस में क्या रहता है कि डॉक्टर्स कैन नॉट गो फॉर चेकिंग फॉर द पॉइजन और टॉक्सिन्स. उनका काम है उसको डायसेक्ट करना, उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करना. उसकी केमिकल एग्जामिनेशन वो लोग नहीं कर सकते जो एक MD होता है, जो सर्जरी मतलब जो पोस्टमार्टम करते हैं. तो इसलिए वो हमारे पास स्पेसिफिकली भेजा जाता है. बट इन स्पेसिफिक केसेस जैसे कोई हार्ट का पॉइजनिंग केस है, न्यूरोटॉक्सिक केस है, कोई रेस्पिरेटरी पॉइजनिंग केस है, तो उस केस में भिजवा जाते हैं सारे के सारे. तो साइनाइड केस में तो मैंने तो नहीं देखा कि हार्ट आता हो कभी किसी FSL में.
माइक साइनेट का फिर से सीधा उसी बात है ना, हार्ट ऐसा हार्ट पे नहीं है, उससे सेसेशन ऑफ ब्रेथ होती है, मतलब हार्ट सेन पॉइजनिंग के ना कुछ पर्टिकुलर चेंजेस रहते हैं, कुछ पीएम चेंजेस रहते हैं, पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं जो दिख जाते हैं बॉडी में। तो अगर पता ही है साइनेट पॉइजनिंग है, तो एक जो आपका पोस्टमार्टम जो पर्सन कर रहा है वही एस्टैब्लिश कर देगा कॉज ऑफ डेथ कि साइनाइड के चेंजेस मिले हैं तो साइनाइड ही कॉज ऑफ डेथ होगा। तो उसके बाद जो बाकी ऑर्गन्स भेजे जाते हैं उनमें ही चेक हो जाता है सारा, तो स्पेसिफिकली हार्ट उसमें नहीं भेजते, बट इन निकोटीन केसेस भेजते हैं। अब निकोटीन से इफ पीपल विल थिंक कि कोई सपोज कोई ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है एंड द पर्सन डाइज, दैट इज नॉट डाइंग ऑफ पर्टिकुलरली निकोटीन ओवरडोज, दैट इज डाइंग ऑफ सेकेंडरी कॉजेज दैट इज कॉज्ड बाय निकोटीन। मतलब टोबैको में निकोटीन होता है, टोबैको में हैवी मेटल्स होते हैं, उसको बर्न करते हैं एंड देन उससे एसोफेगल ट्रैकिया लाइनिंग पे इफेक्ट आता है, उससे कैंसर कॉज होता है, द पर्सन डाइड ऑफ कैंसर। बट अगर आप निकोटीन की पर्टिकुलर पॉइजनिंग देखोगे तो निकोटीन की जो डोज होती है वो काफ़ी हाई होती है, तो कोई निकोटीन पी के नहीं मर रहा, लोग उसके सेकेंडरी कॉज से मर रहे हैं, तो उस केस में डिफरेंट रहता है। सपोज कोई केस है किसी ने एक्सीडेंटली निकोटीन इंजेस्ट कर लिया, उस केस में हार्ट भेजा जाएगा पूरा पूरा, इसलिए तो इसलिए पर्टिकुलर पॉइजनिंग को पर्टिकुलर भेजता है। और कोई किसी को पूछना हो तो? So my question is, if a person is like addicted to any of the drugs, for example, anti-inflammatory drugs, तो for a period of time वो उसको काफी ज़्यादा over consume करेंगे, and then after a period of time जब वो थोड़ा उसको रोकने की कोशिश करेंगे, then body will start to withdrawal symptoms, and अगर वो उसको over consume करते हैं, ultimately that would also lead to their death। और अगर वो withdrawal symptoms की वजह से नहीं लेते हैं, तो क्या withdrawal symptoms की वजह से जो death होती है, तो वो कैसे detect हो पाती है? देखो एक ऑटोप्सी होती है, एक तो होती है हमारी पीएम ऑटोप्सी जो हम नॉर्मली करते हैं, मतलब देखिए हम हॉस्पिटल्स में। सेकंड होती है क्लिनिकल ऑटोप्सी, कभी सुना है पढ़ना इस बारे में? क्लिनिकल ऑटोप्सी उसमें क्या होता है कि जो आसपास के लोग होते हैं ना उनसे पूछा जाता है कि क्या लेता था पहले या क्या उसका था, तो अल्टीमेटली एज ए टोल्ड कि सब ये सब चीज़ें ना करोबोरेटिव एविडेंस है, हमें सब कुछ ही एक साथ मिला के ही पूरी पिक्चर समझ आती है कि क्या हुआ होगा एग्जैक्टली। तो इफ अ पर्सन इज सपोज एक्सपीरियंसिंग विड्रॉल सिम्टम्स, तो अल्टीमेटली रहता है कि उसके घर वालों को पता है और उसको रिहैब सेंटर में तो भेजा होगा फॉर श्योर, ठीक है, एंड वहाँ भी अगर उसका नहीं हो पा रहा है या नहीं उसको कोप अप कर पा रहा, एंड देन अल्टीमेटली द पर्सन इज टेकिंग, तो उनको पता रहता है, घर वालों को सब पता रहता है कि कौन किससे क्या है, कैसे मरा है, कैसे नहीं मरा। तो देख मैंने तो अब तक वैसे केस देखा नहीं ऑनेस्टली, कैसे है कोई सपोज कोई, मैंने जो केसेस देखे हैं दोज आर लाइक ओवरडोजिंग से लोग मर रहे हैं, या लोगों ने छोड़ दिए तो विड्रॉल सिम्टम्स है, तो लोग मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पर्सन आ जाए, ह्यूमन नेचर है, कोई किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो लोगों को बताएगा, कहीं ना कहीं जाएगा जरूर, या किसी से डिस्कस करेगा ही करेगा, एंड द पर्सन डाइज या कुछ भी होता है तो अल्टीमेटली पीपल कम अप एंड टेल कैसे था इसको या ऐसे इश्यूज थे एंड द पर्सन हैज डाइड ऑफ दीज थिंग्स, तो वो रहता है ये सीन। बट मैंने कोई अब तक केस देखा नहीं ऐसा, इसलिए। सो एनीवन एल्स? So I have question of overdosing. Like you have said कि अगर निकोटीन का डायरेक्ट इंजेक्शन होगा तो उसका किसका निकोटीन का? हाँ निकोटीन का तो उसका हार्ट पे इफेक्ट होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम ओवरडोज करते हैं तो दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो पर्सन ने अपने आप की गलती से ज्यादा ओवरडोज कर लिया, या किसी ने मतलब इंटेंट के साथ उसको फर्स्ट टाइम ओवरडोज दिया है, तो क्या वो सेकेंडरी कोर्स कंसिडर में आएगा या फिर प्राइमरी में? निकोटीन पहली बात तो ओवरडोज ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि यू विल नॉट गेट प्योर निकोटीन इन द मार्केट, मिलेगा ही नहीं प्योर निकोटीन मार्केट में। ओनली अ केमिस्ट और अ टॉक्सिकोलॉजिस्ट कैन एक्सेस दैट, और विद प्रॉपर परमिशन यू कैन एक्सेस दैट। अब कोई इतनी सिगरेट दिन में नहीं पी सकता कि उतना अमाउंट ऑफ निकोटीन उसकी बॉडी में आ जाए, ठीक है, तो अगर सपोज कोई इतनी सिगरेट या कोई भी ऐसा कंपाउंड जैसे निकोटीन बॉडी में आ रहा है वो लेता भी है, तभी वो उस लिमिट तक नहीं जा सकता, इतना आई नो, तो उस केस में तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली इफ अ पर्सन हैज इंजेस्टेड, मतलब अगर से मतलब थ्रू आईवी इंजेक्शन से लिया है, इंट्रावेनस इंजेक्शन से लिया है, उस केस में है कि उसने जानबूझ के लिए, वी ऑल नो जानबूझ के लिए, तभी तो उसको मिला है, उससे प्रिक्योर किया, तो उस केस में रहता है कि अगर डेथ हुई है तो फिर उसको पता था ना कॉन्सिक्वेंसेस क्या है क्या नहीं है, तो दैट कुड बी अ टर्म ऑफ सुसाइड और एक्सीडेंटल सुसाइड, कि उसने लिया तो नशे के लिए था बट हो मतलब डेथ की तो सुसाइड में आ जाएगा, एक्सीडेंटल सुसाइड में आ जाएगा इस केस में। So any other like you have said कि हार्ट डायरेक्ट इफेक्ट होता है तो वो फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है, तो ऐसा कोई रियल लाइफ केस है? मैंने तो देखा नहीं कोई निकोटीन से ऐसा मरा। एक केस मैंने सुना था कि किसी ने निकोटीन शायद पिया था तो उस केस से मर गया था, तो उसमें शायद हार्ट आया था, मुझे भी ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा था केस,
I've not done it. I have not seen it. इसलिए. Thank you so much, sir. Now, no. Okay, one more. बहुत question, इंटरेक्ट कर लेते please. हैं. हाँ, एक लास्ट कर लेते हैं क्वेश्चन. सर आपके अकॉर्डिंग क्रिमिनल माइंड ज्यादा परफेक्ट रहता है या फोरेंसिक टूल्स? किसमें क्रिमिनल? आपके अकॉर्डिंग क्रिमिनल माइंड ज्यादा परफेक्ट होता है या फोरेंसिक टूल्स? माइंड, क्रिमिनल माइंड फॉर श्योर. क्रिमिनल माइंड. इसका रीजन ये है कि फोरेंसिक इज इवॉल्विंग बेस्ड ऑन द क्राइम्स. जो क्राइम हम लोग देख रहे हैं, फोरेंसिक वाला देख रहे हैं, हम उसी से ही इवॉल्व हो रहा है अल्टीमेटली. जितने भी ड्रग्स, इलिसिट जो भी ड्रग्स आ रहे हैं, जो नए ड्रग्स, न्यू साइको एक्टिव सब्सटेंसेस आ रहे हैं, हमें कैसे पता है? लोगों ने उसे बनाया, लोगों ने उसे यूज करना स्टार्ट किया, उसके बाद हमें पता लग रहा है ना कि वो कैसे हैं. टेड बंडी केस पता होगा सबको, फोरेंसिक बाइट मार्क्स एनालिसिस जो पूरा डेवलप हुआ है. तो अल्टीमेटली क्या था कि उसने मतलब स्टार्ट की नई चीज करना, तो हम लोग उससे इवॉल्व है. तो इससे क्रिमिनल माइंड इज मोर परफेक्ट, आई फील सो. फोरेंसिक टूल्स जो है, फोरेंसिक साइंस उन्हीं से ही इवॉल्व हो रही है, उनको पकड़ने के लिए ही इवॉल्व हो रही है. तो पहले चोरी की जाएगी, उसके बाद तो फोरेंसिक्स लगाई जाएगी ना. तो और हर केस, मोस्टली केसेस अपने आप में यूनिक होते हैं. हर एक का जजमेंट ही अपने आप में यूनिक होता है, हर एक केस का. तो जब जजमेंट यूनिक है, सब कुछ यूनिक है, तो अल्टीमेटली क्रिमिनल माइंड ज़्यादा परफेक्ट हुआ. बस ठीक है. Thank you so much, sir, for your insightful session. Now, as a mark of our gratitude and respect, we would like to present a token of appreciation and certificate of honor to our esteemed resource person, Dr. Rohit Kanodia, sir. And I would like to call Dr. Pragati, Miss Pragati Jain ma'am and Dr. Ankita Agarwal ma'am to do the same. A warm round of applause, please, everyone. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. नहीं कोई दिक्कत नहीं. And now I would request everyone to please go to the conference hall of Keral Verma Subharti College of Science. All the students are expected to move there, and Dr. Rohit Kanodia, sir, and his students are expected to do lunch, please. Thank you so much. Let's meet you for the second session of our conference. और फोटो पक्का दे देना. फोटो प्रगति मैम. हाँ, मैं उनसे ले लूँगा. ठीक है. वहाँ जा रहे हैं ना.